ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್.
I request two teams captain, please go for toss immediately. The captain of NFC as well as the captain of Jolly, please go for toss immediately. Jolly ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ NFC ತಂಡದ ನಾಯಕ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಹನೀಫ್ ಹಾಗೆ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಸೀರ್ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇವರು ಕೂಡ 2 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂತಿಮ ದಿವಸದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ಟೀಮಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ NFC ಮರವೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜಿಮ್ಮೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. NFC ತಂಡದ ನಾಯಕ
ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So captain of Jolly friends won the toss, and after winning the toss, looks like they elected to field first. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದವರು ಮನ್ಸೂರ್ ಬಜಾಲ್, ಆಸಿಫ್ ಮೇಲ್ಮನೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತುಂಬೆ, ಪುತ್ತ ಬಜಾಲ್, ಅನೀಫ್ FI, ಇಲಿಯಾಸ್, ಸಲೀಂ ತೆಲ್ಲಿ, ಹರೀಶ್ KFC, ಅನ್ಸಾಫ್ ಬಜಾಲ್, ಅಜರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಇವರಿಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. And we would like to give special thanks to Mansoor Bajal, Asif Melmane, Ibrahim Tumbe, Putta Bajal, Hanif FI, Ilyas Salim, Iris KFC, Ansaf Bajal and Azhar Mallur. Those were contributed for this jersey launching ceremony heartily. So we are thankful and grateful to all the donors on behalf of Young Friends Azhar Bajal. Thanks to Azhar Bajal. So everything is ready here for the first match. It's a late start in the morning. Captain of Jolly Friends, after winning the toss, elected to field first in the morning. I request the opening batters of NFC, please go for bat immediately. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಜಾಲ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸಿಫ್ ಮೇಲ್ಮನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಜರ್ಸಿ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಬಜಾಲ್, ಆಸಿಫ್ ಮೇಲ್ಮನೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ತುಂಬೆ, ಪುತ್ತಾ ಬಜಾಲ್, ಹನೀಫ್ FI, ಇಲಿಯಾಸ್, ಸಲೀಂ ತಲ್ಲಿ, ಹಾರಿಸ್ KFC, ಅನ್ಸಾಫ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಜರ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ
Opening batter, the batsman NFC batting. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ 69 ತಂಡದ ನಾಯಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಆಟಗಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮದ್, ನಾಸೀರ್, ಇಮ್ರಾನ್, ಅಶ್ರಫ್, ನಜೀರ್, ಶಾಕೀರ್, ಕಿಶೋರ್ ಯಾನೆ ಮುನ್ನಾ, ರಫೀಕ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಗುಂಪನವಜಲು, ಜಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So everything is ready. Is umpire Anif signaling towards our scorer. Jalil is the scorer here in the final day of this cricket tournament, and here is the first ball. Right arm over the wicket. Bowls drives that one side to the hands of Cow Point, and the first wicket is back into pavilion. The first delivery of the day number final, and it's a disaster start here for the team NFC Manavuru. They lost their first wicket in the first ball itself, and the bowler Farooq produced a very important breakthrough for his team, and batsman quite unfortunately Siddiq couldn't manage to keep it down as he wanted to play that one over the top of that infield, but he's finding the fielder there at short extra cover. So first wicket is gone. It's 0 for 1. The new star has got a shackling start in the first ball itself. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪರ್ಲ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. Can you believe this? The 2 wickets in a row, in the 2 wickets in the 2 deliveries in Ben. Really the bad start, but a very good start here for Jolly Friends. And the catcher is Amin, who did a very good job in our commentary box in the last 2 days as a scorer, and he's a very good fielder as well, and he picked that catch beautifully straight to the hands of short mid-on, and the 2 wickets are back into pavilion as new star Bajal has got a new star Maravur has got a shackling start in the first over itself, and bowler Farooq is giving very important breakthrough for his team, and he's been outstanding, and he's on hat-trick, and so far there is only one hat-trick in this particular tournament, and I think Yajnesh again outside the line of leg stump and going for the drive, but ball is just missing his bat. Leg by call by umpire. The first run comes up here for new star, the hat-trick delivery which is bowled there by Farooq, but ball is a little bit going down the leg stump, and batsman tried to turn that on the onside edge, and he got a pad onto that, and first run comes up here for Maravuru. 1 for the loss of 2 wicket. So Saif will going to face Farooq. Oh, lovely delivery, excellent keeping behind the stump. Very good line here from Farooq, and Saif really not understand that the
pace and the line of the delivery. Missed it completely, and there is no chance at all for any run. Farooq again, right arm over the wicket, balls beautifully bowled. Again, that ball is almost targeting middle and leg stump. Little bit going down the leg stump, and batsman Saif tried to flick that one off his legs, missed it completely. And one more dotted delivery. So far it's so far it's a very good going here for Jolly Friends. In the first over itself, the Farooq is produced a very important breakthrough, 2 wickets in a row in the first 2 deliveries, then bowled a very quiet over, just a single run so far in that over. Tries bowler's back drive, powerful one, but protection has been given in the deep long off region, so that the long off fielder just run across this right and collects that one, then down at straight long on region, and excellent over which is completed by Farooq. Just a single run he considered in that over, one in the form of leg by. Altogether 2 runs in that particular over. Outstanding bowling figure here for Farooq. 1 over no maiden, 1 run, and 2 valuable wickets he picked in that over. So Jolly Friends won the toss, elected to field first, and they got a very good start in the first over itself. Welcome to the all cricket lovers for this final day of this cricket tournament. Once again, myself Satish Salyan and Mr. Gopi wishing everyone a very good morning, and especially for the viewers of Vedra Media who are watching live telecast of this prestigious Netravati Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shantinagar under the leadership of Mansoor. It's a final day, decided day of cricket, and once again we welcome all of you for this wonderful day of cricket. So in the field umpire Iqbal, and at square leg Anif Bajal, and along with them Nasir Bajal. Again slashes that one onto the block cover point region for an easy single by Saif. With that single, Shaif moves on to his second run, and total score of this his team is moves on to 3 for the loss of 2 wicket. Bowler is introduced. Harris will go into bowl next delivery. Very young, talented bowler. Right arm over wicket balls. Again, nicely placed it down to backward by Rajan. This time, looks like that ball is just missed the stumps. If it is a direct hit, I think it's all over for the batter, Shaif. Very lucky there. The wicketkeeper behind the stump, unable to gather the throw from that fielder. The very young, talented fielder down at backward point region. The fields the ball, returns the ball, but not really getting that much of result what he is looking for. So quick run, risky run taken by these two batters of NFC Maravur, and slowly these 2 batters try to get some partnership going after losing 2 wickets in the first over, the first 2 deliveries. And Saif and Nisar are the 2 batters out there in the middle. They need to play some good innings for their team if they wanted to get a good score. 4 on the board. 4 for the loss of 2 wicket. Bowler Harris with the jersey number 8. Right arm over the wicket passes umpire Iqbal. This time drives that nicely down to wide off shot extra cover region. Before that, cover point region to run across to extra cover region. Ample time for the batters to complete the single. So with that single, score numbers on to 5 on the board for the loss of 2 wicket. Very bright sunny morning, and fantastic weather condition today. Not really having that much of wind here, and probably yesterday we have witnessed some huge wind in the middle, but today little bit, not that much of huge wind in the middle. And again the bowler Harris bowls beautifully bowled, equally well kept up by wicketkeeper behind the stump. Very quick indeed behind the stump, and just in a fraction of a second he completes the job behind the stump, but batsman is safe there, and there is no chance at all for any run. So tidy bowling performance here from the young talented bowler Harris. So 5 overs match. Harris, right arm over the wicket balls down the leg stump, beautifully bowled. This time we had to see the umpire to asking him to go back. The deliberate padding in the negation, but for the deliberate padding there will be a run out, and that's very important. And opportunity there is the opportunity which is created in that deliberate padding for the run out, but umpire Iqbal straight away call the batsman to go back
this deliberate padding, no run conceded. One more dotted delivery. Harris again, right arm over the wicket. Bounce, tries that one, wide of that mid-on fielder. I mean, try to catch that one, but not really uh, able to field that one. But the deep mid-wicket fielder will go in to cut it off. And one run, one more good over after completion of over number 2. Searching for the right track, still struggling in the middle. NFC Maravuru, the managed to score 6 on the board at the rate of exactly 3 runs per over. And they lost 2 valuable wickets. Slowly and steadily, these 2 batters tried to get the partnership going, and they're really playing as for the condition required. They doesn't want to lose a wicket, and afterwards, and after losing 2 wickets in the 2 deliveries of the first over, and Saif and Nisar, the 2 experienced campaigner for the side, tried to get some partnership going. What a fantastic day yesterday! It's one of the best day of this Netravati Trophy 2022, where we're witnessing some nail-biting cricket matches of the top-seeded teams yesterday. And at the beginning itself, the first match, which is one of the best match of the day number 2, when Gori Young Boys and Team Elegant were taken that match into tie, and super over which is played, and at last a team of wickets. No change in bowling, and Farooq was a successful bowler for the side, continuing. Right arm over the wicket, bounce, tries that one officially, but quite safely down to deep extra coverage, and cover point fielder a little bit quick enough to complete the couple of runs, and the bowler almost collects a throw well in front of the stumps. The power is actually throw is not having that much of power. Little bit fumble from the fielder, so that both the batters grabbing the opportunity to come back for the couple of runs. With that couple of runs scored, Namozan to 9 on the board for the loss of 2 wicket. And Jolly Friends is a local team of Bajal, and got some youngsters in the side, very energetic youngsters. And NFC Maravur, they need to bat well in the remaining overs. This is over number 3 in progress, as again a bowler bowling from the committee box. And for the next match, once again I request Reliance Katipala as well as Young Friends MMR to report here. Beautifully driven down to deep backward square leg region for a single. With that single, scoreboard Namuzan to double figure 10 on the board. 10 for the loss of 2 wicket here in over number 3 in progress. So very good partnership is going on here. After that shackling start in the first over, they able to get the partnership again. That's good thinking. Nisar is just playing a very good acting role in the other end, and the rotation of strike is so important. He quickly realized that if you're not able to get the boundaries or sixes, need to rotate the strike, and both the batters are dealing with the singles rightly so in this particular over. Scoreboard is 11 on the board, 5 runs which is scored in 4 deliveries. It's good going in this second over of Farooq. Right arm over the wicket, bounce. The Saif drives that one again. Lack of placement, chance of run out there. The appeal for run out in the non-strikers, and it's a direct hit, and umpire asking for the third umpire.
It's a not out which is a signal because of course it's a direct hit, but Bales which is disappeared little bit late, and that's why it's a not out. The when the bails are off, I think that time batsman is managed to reach his home, and unfortunately, even the directed the batsman is very lucky in the negation. Saif is just survived from that run out. So again, last time in this over, Farooq will go into ball to Nisar. Experienced campaigner for the side of NFC Maravuru. Both the bats are really playing very well after that shackling start. They're getting the partnership, which is very important for them to get a good score here. I request the bowlers to make it fast. Last time in this over, right arm over the wicket ball to Nisa. Is batting on 5. Dries. Good off stop. Chance of run out. Direct it and is gone. And a lot of we can see that opportunity for Nisar to come back to his non-strikers, and after plays that one straight to the hands of that extra cover fielder, is looks like a little bit hesitated for the run, and that time the fielder is just completed the job by hitting the stumps. The wicket number 3. The partnership is just broken. The partnership of 12 runs is comes to an end after completion of over number 3. NFC Maravuru 12 for the loss of 3 wickets. ಅಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The new batsman. I request the 12th man of Maravuru please report here. New batsman will go into pace next ball. Nicely reverse sweeping that one down to deep cow point region for a single. The with that single score Namuzan to sorry, it's a Giant with the jersey number 10. It's a very experienced campaigner, fantastic performer as far as underarm cricket is concerned. And the bowler's back drive and off stop there by the bowler. The opportunity, tough opportunity, because that ball is went to him very quickly because of that powerful stroke which just came from the bat of Shaif. And one more single to the total. Scoreboard numbers on to 14 on the board. Again now, the bowler bowling right arm over the wicket, Kabir. Giant tried to fix it off his legs, and wicketkeeper behind the stump phase to collect the ball. It's going to be a bye. With that bye, scoreboard numbers on to 15 on the board for the loss of 2 wicket. Giant, who represented Sarvagni Urva, the cricket tournament which is played earlier in Urva cricket ground. And nicely driven, but there is a fumble from the fielder, the very talented fielder Harris has a fumble, but of course the good opportunity to complete the single. Again, now ball is in there and it's gone. Giant went for the reverse sweep, not really able to keep it down. Unfortunately, Giant is back into pavilion. Giant has a record of the slowest innings in a UCG cricket ground of the 50 overs format of games. 32 is scored in 128 balls is scored. The patience 32 runs. It's unbelievable patience, just like Sunil Gavaskar in the first World Cup. It's one of the slowest innings. He scored 36 unbeaten. 174 balls he faced. That was a 60 over format of the games. And that's only because big reason, Gopi. That time I think the first time that's a one day format which is implemented, and Sunil Gavaskar doesn't want to play in that
type of cricket, because test match, 5 matches, different format. One day means it's a fast cricket is going, and he is played that one quite deliberately, saying that I'm not interested to play in that kind of cricketing stroke. But once again, and the first ball, next ball, which is the batsman tried to play the reverse sweep, and he picked up a single in the form of bye. And with that, excess scoreboard numbers on to 17 on the board. 17 for the loss of 4 wickets. Of course, after that, so 1976 that the first World Cup. Five. That is 1975, the Prudential World Cup. We are talking about the history of international cricket, and afterwards, and that first World Cup, West Indies they become the champion. Second World Cup, which is held same in England at 1979, and again under the captaincy of Clive Lloyd, West Indies once again becomes the champion. And 1983, which is definitely changed the complexion of the view of cricket in India, because India went into that tournament as underdogs, and they goes on to win that tournament under the captaincy of Kapil Dev and Devils of Kapil Dev. The 11 the players, the Devils of Kapil Dev, won that World Cup in 1983, and that one was the India started to love the cricket. That after that, India's the cricket is becomes a religion, and that definitely Gopi that changed the scenario of all. And Gopi, and coming back to the 1983 we are talking about, and it's definitely the change in the complexion of the view what the Indian cricket lovers changed there onwards, and Devils of Kapil Dev we are talking about, and especially the Kapil Dev played one memorable innings against Zimbabwe, because India never thought that they will going to qualify for the semi-final, because the must-win match against Zimbabwe. But unfortunately, we are not having the record of that 175 runs which is scored against Zimbabwe, because of yes, BBC was having a live telecast of that tournament, and that time they are one day they made a strike, and because of there is no live telecast of that matches. But one of the best innings as far as international cricket is concerned, 175 which is scored by Kapil Dev, and when India lost 5 wickets for just 17 runs, that time I think Kapil Dev is bathing, and because he thought that never think that quickness that wicket will go into fell. And still remember, Krishnamacharya Srikanth is told that please get ready, man. Already 4 wickets back in the pavilion, and he's just in a hurry came into middle, and he's just talking about it. Sunil Gavaskar actually revealing that the behind
screen that the stories, and Kapil Dev went on in that situation, unbelievable 175 runs he scored, and Syed Kirmani that time is gave a lot of stand in other end. And what do you think? This is one of the best innings which is ever played in international cricket. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने कहा 1989 वर्ल्ड कप अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड कप फॉर इंडिया इन दैट लीग स्टेज मैचेस दे डिफीटेड फर्स्ट मैच वेस्ट इंडीज by 27 runs. इंडिया डिफीटेड फर्स्ट मैच by 27 runs. जहाँ तक सवाल है, उन दो वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज अनडिफीटेबल था और तीसरे वर्ल्ड कप के पहले लीग मैच में ही भारत ने 27 रनों से हराया था वेस्ट इंडीज को. कपिल देव को मैन ऑफ द मैच दिया गया था और उसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद जिम्बाब्वे को हराया और 17 रन 5 विकेट के नुकसान पर एट टर्नब्रिज वेल इन इंग्लैंड इन 1983 वर्ल्ड कप व्हेन इंडिया वाज 17 for 5 and they are because of 175 runs unbeaten knock of Kapil Dev. India finished with 266 for 8 in 60 overs. Well support came from Syed Kirmani and Madan Lal in the bottom of their order, and finally they are finished with 266 for 8 and finally they won the match by 30 plus runs. So that was an unforgettable memories. और निस्संदेह यहाँ पर वो वर्ल्ड कप भारत के लिए यादगार रहा. तो पहले दो वर्ल्ड कप में भारत कुछ खास असर नहीं कर पाता. पहला मैच विश्व कप इतिहास का प्रथम मैच में भारत के ओर से सुनील गावस्कर ने 36 रन बनाया था, जैसा कि आपने जिक्र किया. 335 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 335 इंडिया चेसिंग व्हेन डेनिस हेमी स्कोर्ड 137 इन दैट मैच, द इनॉग्रल मैच ऑफ वर्ल्ड कप हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कप. And India finished with 132 for 3 after 60 overs. Gavaskar opened the innings with Farooq Engineer at that match. And he remained unbeaten of 36 runs in 174 balls. और वो वर्ल्ड कप एकदम बेहतर था और वेस्ट इंडीज वो टाइम में दे आर द डोमिनेटेड टीम अंडर द ग्रेट कैप्टनसी ऑफ क्लाइव लॉयड. उसका उदाहरण दे सकते हैं वो वर्ल्ड कप फाइनल, तब 291 वेस्ट इंडीज स्कोर्ड and the sparkling knock came from I think so it's Clive Lloyd 102 not out when the West Indies was struggling 86 for 4 when Clive Lloyd and Rohan Kanai made the partnership and West Indies finished with 291. In reply Australia were bowled out for 274 and they lost the match by 71 runs. हालांकि अंतिम विकेट के लिए डेनिस लिली और जेफ थॉमसन ने 51 रन 51 रनों की साझेदारी जरूर निभाई थी, लेकिन 8 गेंदें बाकी रखते हुए 274 पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ढेर हो गई थी और 17 रनों से वो वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज. दूसरा वर्ल्ड कप भी ऐसे ही हुआ था, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा वर्ल्ड कप जिसमें वेस्ट इंडीज विजय रहा था. 286 for 8, विवियन रिचर्ड्स स्कोर अनबीट 138 and West England were all out for 170-80 plus and they lost the match by 70 runs. So that वो सब अब सुमधुर यादें हैं. और जहाँ तक सवाल है आज के दौर का क्रिकेट का, तो क्रिकेट आज बिल्कुल बदल चुका है सतीश. आज अगर 300 रन भी आप मारते हैं 50 ओवर में तो आप ये उम्मीद अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप मैच जीत सकते हैं. तो यहाँ भी अंडरआर्म क्रिकेट में भी काफी बदलाव आ चुका है, फास्ट क्रिकेट हो चुका है और इसका नतीजा हम यहाँ पर देख रहे हैं हर किसी श्रृंखला में, हर किसी अंडरआर्म श्रृंखला में. Absolutely, Gopi. Even T20, which is introduced for international cricket, at that time also a lot of opposition came from all over. Even India, BCCI also not ready to play that T20. So organizers and umpire decision going to be a final because cricket is a gentleman game, isn't it? And cricket is always telling that it's need to play with the true spirit of a game. Please don't enter again. Only captain can talk. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ, ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. Isn't it, Gopi? Cricket is all about the gentleman game. Why we are calling this gentleman game? Because the winning and losing is a part of cricket, but in shortcut you can't win the match, and there's no shortcut at all. You need to perform, and I think with the true spirit of cricket, true spirit in the sense, of course, what you need to respect the rules and regulation of the cricket, isn't it? Whenever you're going to the tournaments, you need to see what are the field playing condition of that particular tournament, and you need to respect that one. You need to respect the decision of the umpires. That's very important, the body language, and at the same time congratulating even
if you are in a losing side, you need to congratulate your opposition, and you need to appreciate the performance of their opposition as well. This is will going to lift the spirit of cricket. That's why the cricket is loved by the world's second uh, popular game after football. I think cricket is one of the popular game, the second popular game in international level. That's why we need to respect everything, isn't it? We need to play with the true spirit of the game, and that's what we want to see in this tournament. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾದವಾಗಿದೆ. ಸಹಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಜಯಂತ್ ಇವರು ಹಾಗೂ ಕಬೀರ್ ಇವರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜಯಂತ್ ಇವರು ಹೊಡೆದಂಥ ಒಂದು ರನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸ್ 16. Usually it's a 17, and one run which is deducted because of Jayant who scored that run, and I think it's right action actually, and from organizer. But still, Gopi, their little bit adjustment they made here from organizer is that, of course, they continue our game, but with the 9 players, and I request two teams were playing match. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಮಾರ್, ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್. Puneet is the new batsman just walking towards the middle. Shafiq is the new batter, new bowler. Last over. Please make it fast. Don't waste the time. Score is 16. One run which is minused. One run which is deducted, which is scored by
Shafiq will going to ball the last over. The left hand batter Punit will going to face. Shafiq bowls. Bowling right arm over the wicket to Punit. Drives that one, straight to the hands of the fielder. There, one more single is added to total. Harris is the fielder there in the short square leg region, fields the ball. One more addition. With the addition of that single, scoreboard moves on to 17. 17 for the loss of 4 wickets. In the over number last in progress, 5 deliveries remaining. Shaif. This time lofted and he ducked the distance. 6 number 1 of this the day number final. Tremendous blow there from Saif. Picked that one right from the middle of the bat and lofted that one down to deep long on boundary for a 6. What a shot. Right from the middle of the bat, and nothing wrong with the line of that delivery. But Saif, he just knows that he is dealing with the last and final over. And he got that one right from the middle of the bat towards a deep long on boundary for a maximum. So with that 6, scoreboard numbers on to 23 on the board. Last 4 deliveries remaining. Shafiq to Saif. Right arm over the wicket, balls. Oh, beautifully balled. Good comeback. This is a really good comeback here by the bowler. They cleaned him up by the beauty of the delivery. This is really a good one to see that youngster Shafiq in the negation as he bowls that beautiful incoming delivery for Saif. Saif, after hitting that 6, he wanted to repeat that stroke, but this time he's not really reads that turn of that delivery and missing it completely. Then you miss high hit what Shafiq is did in that previous delivery. The one more wicket is back into pavilion. It's a 23 on the board for the loss of 4 wickets in fact. It's a bright sunny morning out here is in this most beautiful cricket ground. It's time is exactly 11 now past 25, almost inching towards 11:30. Warm welcome to Nandan Kulshekar, one of the biggest supporter of Antram cricket. Wherever there is a match, his presence is always there, and needed that kind of supporters for cricket because they are the one responsible for the success of the tournament. Here again, a chance of run out. The bowler couldn't manage to gather the throw from the fielder because that ball came in half volley for bowler to collect that one. If it is in a full toss, it's easy for the bowler to collect the throw. But when you returns the ball in the off volley, one bounce, and always it's a difficult chance. But it was chance anyhow for the batter. So one more single. With that single, scoreboard moves on to 24 on the board. For the next match, again I request the teams, please don't waste the time. And Reliance Katipalla takes on Young Friends Amema. Last 2 deliveries remaining. It's a ball outside the line of off time, well within the reach of the batter. Batter just confused. He thought it might be a wide, but it's a very good one just inside the line. And there is no chance at all for any run. Final ball. Punit will go into face that final delivery. And bowler Shafiq will go into ball. This time lofted. There is a wind. And what a fantastic catch. What a fantastic catch there by the fielder. This is a commitment is really required in this situation. Once the fielder... The Farooq captain is thought that it's very difficult to take the catch. He just pulls that one and pulls that one inside the boundary line, and the fielder from the deep wideish long on is quickly came to that position to take the catch in the second attempt. It's outstanding catch. Just I want to see it in a replay again. The kind of stroke. Just look at that one. Ball is in there. Looks like it's going to be a 6 here. And look at the Farooq there in the deep. And he's seeing that ball going away from him, and he got a fantastic
commitment, pulls the ball inside the line, and the fielder from a short deep long, wide long on completes the catch. This is a coordination catch, and from these two fielders ended the innings of the opposition, and they managed to score 24 runs. NFC Maravur scored 24 runs and they set a target of 25 to win this match. And wait and see how well they managed to defend this total, and wait and see how well Jolly Friends will go and get these runs. To take a short break here, and Gopi, and after that short break, Gopi will go in to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much. రన్నింగ్ ఉందా జన బక ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೋದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು धन्यवाद सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जॉली फ्रेंड्स के लिए 25 रनों का लक्ष्य, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए पहली गेंद थी, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 25 रन इस वक्त बनाने हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पर एनएफसी मरवूर ने बनाए 24 रन अपने निर्धारित 5 ओवर में, और 25 रनों का लक्ष्य उन्होंने रखा है, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। दाईनाथ ओवर द विकेट, गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, बल्ले का बाहरी किनारा, और गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। रनों का सिलसिला 1 रन के साथ शुरू हो चुका है। ताजुद्दीन और आजीम इस वक्त आरंभिक बल्लेबाज के रूप में मौजूद, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त सिद्दीक का आगे बढ़ाते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाईनाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैडल स्वीप किया, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर रिलायंस काटी पड़ा तंಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ।
हस्ताक्षरक्काಗಿ ವೇದಿಕೆ संपर्किसಬೇಕಾಗಿ विनंती। इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन चुराने का प्रयास और भुगतान इस वक्त करना पड़ा बल्लेबाज को, इससे पहले कि वो स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे। सीधा थ्रो स्टंप्सों को भी कैर कर ले जाता हुआ और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। 2 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। जॉली फ्रेंड्स बजाल की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज आजिम 1 रन बनाकर पेविलियन वापस लौटते हुए। जैसा कि हम जानते हैं एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला नेत्रावती ट्रॉफी 2022 इस श्रृंखला का तीसरे दिन का पहला मैच यहाँ पर प्रगति पर और जॉली फ्रेंड्स नंतूर और एनएफसी मरवूर के बीच में इस वक्त मुकाबला जारी है। और जहां तक सवाल है अगले मैच का तो रिलायंस काटीपल्ला का सामना होगा एनएफसी मल्लूर के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीम के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क कर ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का तो इस वक्त अजहर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। और गेंदबाज इस वक्त सिद्दीक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए और बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। सुबह के 11:30 बज चुके, 11:33 और सूरज धीरे धीरे आसमान की बुलंदियों के यहाँ पर छूता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैला रहा है। और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई और यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सिद्दीक दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया, रिवर्स शॉट गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर नेट पर गेंद टकराती हुई 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना 3 रनों पर माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स शांतिनगर ने नेत्रावती ट्रॉफी 2022 के नाम पर। और एक बार फिर से गेंदबाज की ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर और वाइड का इशारा अंपायर इकबाल द्वारा और अंपायर के इशारे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज सिद्दीक तो अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई और काफी लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को रोकने में सफल। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्ले से लगता हुआ बल्लेबाज का, ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट गोज ऑन टू द फ्रंट फुट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली स्क्वायर ऑफ द विकेट बिटवीन कवर पॉइंट एंड नेक्स्ट कवर एंड ही फाइंड्स द गैप एज वेल। परफेक्ट स्ट्रोक केम फ्रॉम द बैट ऑफ ताजुद्दीन और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ। 8 for 1, 25 the target in 5 overs. They have to score and they made a pretty good start except they lost their 1 wicket. They managed to score 8 runs on the board and now the bowler is brought into the attack. Starts the proceedings from commentator box and और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए। और जहाँ तक सवाल है फील्डिंग के व्यू का तो 3-4 खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर तैनात और फील्डिंग के जमावट के बारे में कुछ बातचीत यहाँ पर चलती हुई कप्तान और टीम के अन्य फील्डर के बीच में। 17 रन चाहिए, 4 ओवर का खेल बाकी है। 17 रन मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 4 ओवर्स दैट मींस इन 24 डिलीवरीज। और एक बार फिर से नई ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन इस वक्त तैनात डीप बैकवर्ड स्क्वायर पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। सईफ इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 17 रन चाहिए 24 गेंदों पर। यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर रहा, गेंद को इस वक्त गेंद पर बल्ला अड़ाया नहीं देखना पड़ेगा। इस गॉट आउटसाइड एज ऑन दैट एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट in the over number 2 in progress. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट ये गेंद इस बार चिप किया just at the cover area and he's got the breakthrough for the bowler
इस बार हल्के से स्ट्रोक्स को चेक किया था फ्रंट फुट पर जाने के बाद। और जहां तक सवाल है शॉर्ट कवर का, तो शॉर्ट कवर फील्डर को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी यहाँ पर इस कैच को लपकने में। और इसी के साथ ताजुद्दीन की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। एक चौके की मदद से उन्होंने बनाए 5 रन और आखिरकार आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है जॉली फ्रेंड्स बजाल का, जबकि उनकी टीम की कुल रन संख्या है इस वक्त 9, 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು Safwan, the number 4 batsman, is now comes out to the middle. Second over in progress in their innings. फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए कप्तान न्यूज एनएफसी मरवूर के। और इस बीच अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे हैं इस वक्त बिद्रा मीडिया पर। जनाब इरफान इनके सारथ्य में यूट्यूब पर इस वक्त सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेल दिया स्टंप्स को कवर करने के बाद है, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल और गेंद सीधे पहुंची स्लिप डाउन क्षेत्र पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए इस वक्त सैफ कर चुके हैं। दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त मोड़ दिया तिरछा बल्ले के सहारे गली क्षेत्र पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। सेंसिबल क्रिकेट की इस वक्त जरूरत है जॉली फ्रेंड्स बजाल को, जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है उनके लिए। और सैफ इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए विकेटों के पीछे। कुछ हद तक इस वक्त आवाज उठी थी, जोश भरी आवाज है, लेकिन आखिरकार बल्लेबाज सुरक्षित। और इस बीच अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया बैकफुट पर जाने के बाद गली पर जब तक गेंद फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। स्कोर 1 रन के इजाफे के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर और 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed and after 2 overs they are 11 in comparison. NFC Marwur scored 8 runs in the first 2 overs. 6 रन पहले 2 ओवर में बनाए थे एनएफसी मरवूर ने, जबकि जॉली फ्रेंड्स बजाल इस वक्त बना चुका है 11 रन। एक बेहतर स्थिति में यहाँ पर नजर आता हुआ। 3 ओवर का खेल बाकी, 14 रन चाहिए विजय के लिए, 14 to get in remaining 18 deliveries and still they got 8 wickets kept intact. हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, और ये जो हल्की सी हवा इस वक्त गुजर रही है कुछ हद तक खिलाड़ी और दर्शक दोनों को इस भीषण गर्मी से राहत दिलाती हुई। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी लेकर इस वक्त तैयार पुनीत और नया ओवर वो प्रारंभ करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। वार्म अप इस वक्त करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए। और सब कुछ सही और ओवर की पहली गेंद लेकर पुनीत इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजहर के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद ट्राई किया खूबसूरती के साथ। स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और तीसरा ओवर शुरू हो चुका है और पुनीत एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। पुनीत ऑफ कटर गेंद परिवर्तन के तौर पर सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त खेलना चाहता। स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। रनों की सख्त जरूरत इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजों को, जबकि डॉट गेंदे और विकेटों की दरकार इस वक्त एनएफसी मरवूर के गेंदबाजों को। और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ सेंसिबली वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है
13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. It's 13 for the loss of 2 wicket in the over number 3rd in progress. पुनीत ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि डॉट गेंद और रन्स बल्लेबाज को नहीं मिले, तो यहाँ पर 4 गेंदे, 4 बेहतर गेंदे पुनीत यहाँ पर फेंक चुके हैं. और जहां तक सवाल है अब बचे हुए गेंदों का, तो 14 गेंदे बाकी हैं और 12 रन चाहिए. 14 balls remaining and 12 runs more. Now they have to score for victory. मैच इस वक्त दिलचस्प मोड़ की ओर बढ़ चुका है. इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है. कुल मिलाकर 14 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 11 रन चाहिए और गेंदे बाकी हैं 13. तो इस वक्त पुनीत गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया. ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद के ऑफ साइड पर बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद और पॉइंट पर जब तक गेंद फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर यहाँ पर समाप्त हो चुका है. सो 10 runs to get from 2 overs. और निस्संदेह यहाँ पर मैच बराबरी पर रुक चुका है. काफी लंबी बातचीत है यहाँ पर चलती हुई खिलाड़ियों के बीच में एनएफसी मरवूर के कि अगला ओवर यहाँ पर किसको दिया जाए, और बातचीत जारी है इस वक्त. और बातचीत के बाद एक खिलाड़ी ने अपनी टोपी इस वक्त उतारी, अंपायर को दी, नंबर 11 जर्सी पहने हुए खिलाड़ी, और वो इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए सिद्दीक का गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई इस वक्त लॉन्ग ऑन मौजूद. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर तैनात नहीं. स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट, एक्स्ट्रा कवर और गली इस वक्त तैनात, जबकि वाइड इज लॉन्ग ऑफ. और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज सिद्दीक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन से नहीं मिला. 11 गेंदे बाकी हैं, 10 रन चाहिए विजय के लिए. 10 to get from 11 डिलीवरीज. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार पैडल स्वीप किया खूबसूरती के साथ. स्टंप्स को कवर करने के बाद 1 रन मिलेगा. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 16 रनों पर इस 1 रन के साथ 2 विकेट के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. इन फैक्ट 10 balls रिमेनिंग, 9 runs टू गेट फॉर जॉली फ्रेंड्स बजाल. और सिद्दीक गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया, गेंद पहुंची इस वक्त गली पर. 1 रन का इजाफा नेट पर गेंद टकराती हुई और स्कोर बढ़कर 1 रन के साथ अब पहुंच चुका 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. बराबर का संघर्ष यहाँ पर जारी है. अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर करते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी. और अपनी अगली गेंद लेकर सिद्दीक इस वक्त तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार. सिद्दीक ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया. गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. 8 गेंदे बाकी, रन चाहिए इस वक्त 7. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. तो 8 गेंदे बाकी है, 7 रन चाहिए विजय के लिए. और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार. सिद्दीक का इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर को थोड़ा सा पीछे तैनात किया गया है और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार गेंद को खेला शॉर्ट कवर पर मिसफील्ड. इस वक्त फील्डर आते हुए बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा
लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन चुरा लगा। यहाँ पर सेंसिबली डिलिकेटली कहना पड़ेगा, इनको हल्के से पुश किया था अंतिम क्षण में, ये भांपते हुए कि एक्स्ट्रा कवर पर जो फील्डर मौजूद है काफी पीछे तैनात है और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। चतुर क्रिकेट अपनाते हुए बल्लेबाज अजहर इस गेंद पर अब 5 रन चाहिए, गेंदें बाकी है 7 और इस ओवर में अंतिम बार सिद्दीक इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में और यहाँ पर रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सफवान काफी आगे निकला है और यहाँ पर सीधे गेंद पहुंची थी गेंदबाज के हाथ में फॉलो थ्रू में और फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया। विकेट गिर चुका है, अब अंतिम ओवर बाकी, 5 रन चाहिए, 6 गेंदें बाकी है, रन बनाने हैं 5। द सेम सिचुएशन, सेम हालात कल गोरी यंग बॉयज और टीम एलिगेंट के बीच के मैच में हुआ था जब गोरी यंग बॉयज को 6 गेंदों पर 5 रन बनाने थे और गोरी यंग बॉयज 5 रन नहीं बना पाया था, सिर्फ 4 रन बना पाया था और मैच टाई हुआ था और सुपर ओवर में एलिगेंट ने गोरी यंग बॉयज को हराकर इस श्रृंखला के सेमीफाइनल में प्रवेश प्राप्त किया था। तो यहाँ पर उसी तरह के हालात है और 5 रन इस वक्त चाहिए 6 गेंदों पर। 5 रन चाहिए 6 गेंदों में और इस बीच गेंदबाज मैच निर्धारित ओवर लेकर तैयार। नंबर 1 की जर्सी इस वक्त पहने हुए और 5 रन चाहिए अंतिम ओवर में जॉली फ्रेंड्स को विजय दर्ज करने के लिए। तो देखना यह है कि एनएफसी मरवूर के गेंदबाज जो अंतिम ओवर शुरू करने जा रहे हैं नंबर 1 जर्सी पहने हुए वो किस तरीके की गेंदबाजी यहां पर करते हैं बल्लेबाज को बांध कर रखने के लिए। तो मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 5 नीडेड इन रिमेनिंग 6 बॉल्स और लेफ्टी बैट्समैन बाएं हाथ के बल्लेबाज 19 इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और इस गर्मी के तीव्रता तले यहाँ पर एक बेहतरीन मैच, एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करता हुआ और इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए उन्हें इसके लिए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर और गेंद को छोड़ दिया अंतिम क्षण में। इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ समीकरण आसान होता हुआ जॉली फ्रेंड्स बजाल के लिए। अब रन्स चाहिए 3, गेंदें बाकी हैं 6। 3 runs just they have to score for victory in remaining 6 balls। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए इस बीच विकेट कीपर कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करते हुए अब ऐसा कहना पड़ेगा एनएफसी मरवूर को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में विजय दिला सकती है। रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके, इस बार बेहतर गेंद नहीं, वाइड और 1 रन मिलेगा। कुछ सोच विचार करने के बाद वाइड घोषित करते हुए अंपायर इकबाल और 1 रन का इजाफा। 2 रन चाहिए, अब गेंदें बाकी हैं 5। 6 गेंदें बाकी है 6 जबकि रन चाहिए सिर्फ 2 और ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंची सीलिंग मिड ऑन पर 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट अ सिंगल रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 5 डिलीवरीज और ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल अपने विजय के द्वार पर खड़ा हो चुका है। ये गेंद 19 के लिए रक्षात्मक तरीके का खेल, रन के लिए दौड़ पड़े और इसी के साथ जॉली फ्रेंड्स बजाल रजिस्टर्ड अ विक्ट्री बाय 7 विकेट्स अगेंस्ट एनएफसी मरवूर and with that victory against NFC Maravur, Jolly Friends Bajal through to the next round of this competition. Next match will be played between Reliance Katipalla versus Young Friends Ammemar and that match starts with Rajesh Agarwal. तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे अंग्रेजी में सतीश के साथ जब दूसरे मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। Now it's time for break. Thank you. धन्यवाद।
ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರಾದ ಫಾರೂಕ್ ರಾವ್ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಫಾರೂಕ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಐಮಾನ್ जो कि इस वक्त मैन ऑफ द मैच के अवार्ड प्रदान करते हुए नन्हे से खिलाड़ी और यहाँ पर पहला मैच समाप्त हो चुका है. अब दूसरा मैच शुरू होगा. वापसी करते हैं सतीश के साथ अंग्रेजी में. धन्यवाद. थैंक यू. So 5 overs match, please note, and the match will going to start here. The match will be of 5 overs, and team which is playing this match, Reliance Katipalla and Young Friends Amemar. And here is first over will going to start from the commentary box end. Reliance Katipalla versus Young Friends Amemar. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. 9 ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.
ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. After winning the toss, captain of Young Friends Ammemar, they elected to the field first, so that opening batters came into middle for Reliance Katipalla. Iqbal and Azhar. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕಾಗಿ NFC ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು So first over and jersey number 77 will go into starts the proceedings, and it's a Nisar will go into ball to Nasir to Iqbal. Very experienced campaigner Iqbal, and will go into face his first delivery. Right arm over the wicket balls. Nasir bowls this time. Lofted at one. Half-hearted chip. He pays the penalty for that. Nothing a push, nothing a drive, but it was a half-hearted stroke there from Iqbal. Might be looking for a stroke towards the cover point region, but ball is which is the line of the delivery. It's very difficult to play that shot. He just went with the stroke, but quickly realizing that of course he couldn't manage to play that shot. He just went with the stroke half-heartedly, and unfortunately is back into pavilion, and deep long off fielder takes the catch. The first wicket is back into pavilion of Reliance Katipalla. Nasir correction is a bowler. He picked up a first wicket for his first delivery. The new batsman in is Liaquat with the jersey number 55. Liaquat is a new batter with a lot of responsibilities coming to the middle because they lost the first wicket for the first ball. And Iqbal, of course, they're very good. The player, unfortunately, as he played a half-hearted stroke down to deep long off region, lofted one, but not really able to get the distance he's looking for. So, Nasir bowling with a short run up. Away from us. A right arm over the wicket to Liaquat. One more very good player. This time beautifully driven just up and over towards the deep cover point region before the extra cover fielder to run back to field that one down to deep extra cover region. Ample time for the batters to complete that couple of runs. With is offered there by the bowler in the delegation, Nasir, so that Liaquat quite nicely getting the placement right. Is not really making a mistake what Iqbal is did. Of course, Iqbal is also tried to play that such kind of cricketing stroke, but he couldn't manage to get the placement right. So couple of runs. Reliance Katipalla is off the mark with a couple of runs. They're 2 for the loss of 1 wicket. Nasir again bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls. This time they're going for the quick single. Chance of run out in the non-strikers, and if it is a direct hit, I think definitely going to be a chance of run out. The fielder in the short mid-on region. He picks the ball, but throw is not good enough to get the result in the favor of fielding team. And fortunately for Liaquat, that ball just misses the stump. Otherwise, it's going to be one more wicket for the opposition team in the form of run out. So now the left-hand batter is back on strike. Azhar will go into face his first delivery of this first over of the power play. 5 overs game, 1 hour going to be a mandatory power play where you can keep only 2 fielders outside the circle. And 1 fielder in the deep long on and 1 at the deep mid-wicket region. The 2 fielders are in the deep in this power play over. Again, Nasir bowling away from us. Right arm over the wicket. Pass umpire Nasir Bajal. Oh, beautifully bowled. Absolutely perfect. One chance of run out in a non-strikers end, but I think it's a direct hit. Umpire now. Nasir Bajal asking for the third umpire, because whenever there is a direct hit, they're always going to be very close. Most of the
times when it's a direct hit result which is going in favor of fielding team. But here, not just we want to see what could be the result here. And Iqbal is a third umpire, and of course Anif is a third umpire out here. We're going to tell you whether it's out or not out with the technician of Bedra Media and Irfan of Bedra Media. We're going to give you the best result of that run out. Will it going to be out or not out? It's always going to be very close. Whenever there's a direct hit, it's very difficult for the field umpire to judge. That's why they're asking for the third umpire, so that they can give the best what they really wanted to give. Coming back to the next match, I already called two teams. Please get ready. And NFC Malur as well as Netravati. And please cooperate with the organizer to please cooperate with us by signing the official chart. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So third umpire, still they are not getting that much of evidence enough to get the best result. Still they are trying their level best to see whether the bat is in the air or not, because of the batsman, instead of dragging the bat, he wanted to put the bat into the crease, and that's why it's always going to be a difficult one for umpires to see that when the bails are off, whether when the bails are off and the bat is in the air or it is grounded. That's what umpire want to see. It's a very close one, but it's a out which is called by umpire. The bat is just a little bit in the air when the bails are off. That's why we already are mentioning about whenever running between the wicket, you need to drag your bat. Don't try to put your bat into the line. If you try to put the bat into the line, and that will provides opportunity for the opposition team to get the run out, because it takes a little bit time. But if you drags the bat, almost the batsman always going to be a safe. And it was that one technique what all the batsmen need to implement, and dragging the bat is so important unless you wanted to put the bat into the crease. So one more wicket is back into pavilion of Reliance cricketers. It's a 3 for the loss of 2 wicket. Imran is the new batsman in, and Liaquat and Imran, the experienced campaigner for the side of Reliance Katipalla, need to get some good partnership here after losing 2 wickets in the first over. So Nasir bowling away from us with a short run up. Right arm over the wicket to Liaquat. Short for leg, short mid wicket, mid on, and a short cow point. Again, nicely turns that one to square leg, going for the quick single in the negation. This time Liaquat and his partner is so quick, Imran, to respond that quick single very well, and they completed that single. With that single, scored Namuzan to 4 on the board for the loss of 2 wicket. So far it's a good going year for team MMR, as they won the toss, selected to field first, and they tried to put Reliance Cricket Katipalla into little bit under pressure situation after picking up 2 wickets. A beautifully balled, but wicketkeeper behind the fails to collect the ball. They're going for trying for the run, but there is no declared. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, there is a declared ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಓಡಬೇಕು as per the rules and regulation of this particular cricket ground is concerned. And one more dotted delivery
And after completion of over number first, trying for the right track but struggling in the first over, Reliance Katipala scored 4 valuable runs by losing 2 big wickets of their team. I requested the fielding team to make it past because we already mentioned that 5 overs, 28 minutes, 24 minutes in fact, need to complete within 24 minutes, 4 minutes for every over. That means total 5 overs means 20 minutes and 4 minutes which is extra, the grace time what we are given to you for the fall of wickets and some interruption in the middle, and you need to complete that your 5 overs within 24 minutes at least. 4 on the board, ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಕೊನೆಯ 4 ಓವರ್ನ ಬಾಕಿ ಇದೆ, 4 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. So bowler will go into ball from the commentary box and Samad on behalf of young friends Amema. Samad bowling away from us. Right arm over the wicket to Liaquat this time watching the ball, seeing that ball is going down the leg stump, and white signal by umpire. Now umpire Abdullah has no hesitation in his mind to signal the white, so one more extra total score moves on to 5 for the loss of 2 wicket. Again now Samad bowls, this time tip that one in there, opportunity for the fielder, the catching practice here for the long off fielder. The mistake which is did by Iqbal, the same mistake which is continued by Liaquat in delegation, half-hearted stroke. He can hit the ball powerfully because the direction of the wind definitely going to help that stroke to get the distance right. And half-hearted chip again, that fielder in the deep long off getting that catching practice in the deep long off region. The wicket number 3 is back into pavilion of Reliance Katipala. Samad got a wicket here. No power in that shot, just leaning into the drive, lofted drive. Pays the penalty for that. Unfortunately, wicket number 3 is back into pavilion of Reliance Katipala. The new batsman in Zunaid. When one more very good performer as far as Reliance Katipala playing 11 is concerned. Zunaid have to play some responsible innings for this partner Imran after losing 3 wickets very cheaply. Samad, right arm over the wicket to the new batsman. Zunaid got one at short fine leg, one at deep backward square leg, one at deep mid wicket and deep long on. 5 fielders inside the ring. Backward point shot, extra cover, deep long off. Beautifully bowled, perfect one in the delegation there from the bowler. Samad is really bowling tidy line and length, is not providing the opportunity for the batter to get any kind of stroke on the offside region. So Zunaid just wanted to change his bat. He's just getting the bat from his partner Imran. Wait and see after changing the bat. Will it going to help the batter to get any runs here? Wait and see. The next ball, nicely driven, bowler's back drive, beautifully driven down to deep long off region, and a good piece of fielding there with the fielder in the deep, picked at one in his right hand, one and pick up and collection there by the fielder. Just a single for Zunaid. With that single, scoreboard numbers on to 6 on the board for the loss of 3 wicket. Imran will go into face next delivery from Zunaid. Friends, Shantinagar organizing this wonderful cricket tournament in the name of Netravati Trophy 2022. Down the leg stump, going to be a punishable from umpire, not from the batter. And umpire Abdullah has got no hesitation in his mind to signal the wide. One more extra. With that extra, scoreboard moves on to 7 on the board for the loss of
3 wicket here in over number second in progress. Very slow cricket is going on here in the second match of the day number final. Nicely placed it down to deep long on region. They're running hard, looking for the second. Oh, he looking for the second, but the fielder in the deep long on so quick in the negation, so that the partner Imran is not interested. Rightly so. It's asking for trouble if you're coming back for the second. One more single. With that single score, numbers on to 8 on the board for the loss of 3 wickets in the over numbers are second in progress. Bright sunny afternoon out here, and the temperatures, it's more than 31 degrees. Loose fielding there by the fielder in the negation. Out the backward point region, they're grabbing the opportunity for comeback for the second run in the negation. So Nazir, the fieldsman there in the backward point region, is an experienced campaigner, but sometimes it's very difficult in this particular ground to field the ball correctly. You need to be very, very quick enough. But couple of runs for Reliance Katipala, and the scoreboard is double figure 10 on the board. Again, nicely driven, get the placement right towards the deep cow point region. One and pick up, absolutely good one there from the fielder. So confident, even though the fielder is trying to collect the ball in a single hand. And one more over completed, up completion of over number 2 then. And Reliance Katipala, they back in this game after getting 11 runs in 2 overs. And it's a much better over compared to the previous over. It's a 7 runs which is came from that over. 11 on the board. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11ಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬೌಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ನೋಡುವ. So Nawaz is a tall bowler brought into attack from the commentary box, and one who picked up 2 catches in the deep long off will go into ball that third over. I request to make it fast again. There is a short third man, short extra cover, deep cover point, deep backward point, deep long off, deep long on, deep mid wicket. The fielders in the deep first ball. Of course, that ball is deflected from the leg of the batsman, so that leg by call by umpire. One more addition to total. Addition of that single score Namuzan to 12 on the board for the loss of a 3 wicket in the over number 3 in progress. Memar versus Reliance Katipala. Young friends Memar, and on the toss selected to field first. Again, Nawaz bowls outside the run of leg stump, but well within the reach of the batsman. Batsman tried to flick set on off his legs, but wicketkeeper behind the stump. So quick in the negation, Rafiq, and very good pair of hands behind the stump. Again, one more experienced campaigner for young friends Memar, as he kept the ball nicely. Lofted at one, but not enough to beat that long on. One bounce collected by the fielder. Good return as well by the fielder in the negation. Not really let the chances for the batter to come back for the second year, and they need to settle for single, and scoreboard is now 13 now for the loss of 3 wicket here in over number 3 in progress. ಅಲ್ಲಿ NFC ಮುಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. Nicely driven down to deep extra cover region. There is a fielder in the deep extra cover region, so going to field that one. Ample time for the batter to complete the singles. So both the batters are dealing with the singles in this particular over, and scoreboard is slowly moving here. 14 on the board in the over number 3 in progress for Reliance Katipala. Nawaz bowls. Appeal for leg before wicket. Umpire says not out, and umpire says it's from the bat, inside edge of the bat, saving the batsman from leg before wicket. And otherwise, definitely is going to be a close one here from the bowler. Nawaz is appealing for leg before wicket. 15 on the board.
Last time in this over, Nawaz. Right arm over the wicket, balls to Zunaid. Zunaid drives that one nicely down to deep back, but a little bit correction in front of square, down to square leg division for a single. So one more over completed. Completion of over number 3. Reliance Katipalla is searching for the right track and they're 16 for the loss of 3 wicket. They're going exactly 5.33 runs per over, and wait and see how many runs they will going to score in this remaining 2 overs of their innings. ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ NFC ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So very hot here. Ashraf brought out attack from the commentary box and Ashraf will go to bowl the 4th over of the innings of Lance Kadipala. 16, which is the total score. Right arm over the wicket, balls. Drives, oh what a catch, oh my goodness, he just dropped that one. What attempt there from the fielder. Outstanding attempt there from the fielder Imran. And looks like he got a nasty blow while trying for the catch. I want to see it in the replay what really happened in this particular catch. And that was a fantastic attempt, I want to say, because let's just look at it one driven upishly and look at the extra cover field. Oh, beautiful, absolutely good attempt. But while diving to his front, I think he is hitting the ground, the stomach which is hitting the ground pretty hard. And not only the stomach, but I think his left leg, it's already he got an injury before this tournament. I think the stomach actually, that maybe that his hand is hitting his stomach, which is hurting him a lot. And looks like he's fine now. And for the God's sake, nothing much injury out here. While he trying for the catch, actually it's an elbow which is hitting his stomach, and he's just not really able to take that catch. If he able to take this catch, it's one of the best catch of the tournament. That was a great attempt there from Imran down at short extra cover region. Score 17 on the board. In between both the batters taken a single. Zunaid picked up a single. Now Imran will going to take the strike. Ashraf will going to bowl a next delivery from the commentary box end. Right arm over the wicket, balls to Imran. Oh, what a collection there from Rafiq there, appealing for a stump out, but umpire says rightly so, it's a not out and no damage done. And good work, but not good enough to get the result in favor of Rafiq. Looks like the ball is which is just he missed from the hand, and that's why umpire rightly so not interested to call for the third umpire. So one more very good delivery there from Ashraf. Fastest one, quicker one, outside the line of flex stem, but well within the reach of the batter.
It's always difficult when the ball is going down the leg stump for wicketkeeper to gather the ball, and the wicketkeeper Rafiq done a great job in dedication to collect the ball and try to make the stump out. One more dotted delivery. Third time in this over. Bowler Ashraf bowls this time. Miss wicket keeping. Chance of run out in onside again. The white signal by umpire, but Imran will not going to survive from that throw from Rafiq there. That is a very good throw coming for Rafiq. It's a little bit fumble from Rafiq, but he recovered very quickly and returns the ball to the hands of bowler, and bowler completes the formalities of run out. The Imran's wicket is back into pavilion. Reliance Khatipalla looking now little bit trouble now as they lost the wicket of Imran. Once it looks like the partnership is slowly building up for the team. Reliance Khatipalla, they lost one more wicket. So new batsman in Tawfiq. ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅವರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಅವರ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 69, 18 on the board. Ashraf again bowling with a short turn up. Right arm bowls driven upishly but quite safely down to deep extra cover region. They're looking for the second chance of run out and is gone. Oh my goodness, the wicket of Zunaid. He's not happy. He's just asking his the partner to why you are not responding for the run. There is no run at all in the occasion. But Zunaid wanted to back into strike because there's a over number 4 in progress. He desperately wanted to get some runs from his bat. But unfortunately, it's back into pavilion. Reliance Khatipalla have lost their wicket number 5 here at the score of 19. Ashraf to Nazim. The correction, Tawfiq. Nazim is a new batsman. This time, one more chance for the fielder to take the catch. And one more wicket is back into pavilion in that occasion. Everything is going wrong here for Reliance Khatipalla. They lost the wicket here as Tawfiq tried to hit the ball down to deep long on, intentionally to clear the boundary line, but not really getting that much of enough distance he is looking for as a deep long on fielder completes the catch. And last 2 deliveries remaining in this over. Scoreboard is still remains on 19 for the loss of wicket number 6 is back into pavilion. Ashraf back to his bowling mark. New batsman in. Umpire, 1 minute. New batsman have to go to the strike. New batsman, there is rotation. As per the new rules and regulation of ICC, there is no crossing. The new batsman have to take the strike. Rahil.
Driven nicely down to deep long of region for a single, then they're looking for the second, but the fielding of the team MMR is really excellent. And all the fielders, we can see that they are 100% in this game, not really providing any opportunity for the Reliance Katipalla to get any extra runs here. For all that, we can see that the name which is Young Friends MMR, the young guys of MMR, and so far looking pretty good in this match. Again, oh, that was a fielding. First time watching that fielder misfielding that one short fine leg fielder, and by call by umpire. One more addition to total. Very good over completed there by Ashraf, and after completion of leg by in fact, and after completion of over number 4, scoreboard is 21 for the loss of 6 wicket. Last over remaining in the innings of Reliance Katipalla. They needed one good over. At least a over of 10 runs will going to give them the very little bit satisfied total score. And the competitive total, they wanted to get at least a 30 runs which is required in the board if they wanted to win the match against the team Young Friends MMR. Reliance Katipalla dealing with the final over. Last over. The ball is in the hands of jersey number 77. Nasir, the last over will go into ball. For the next match, it is Superstar Maluru. Superstar Maluru will go into take Netravati, Shantinagar. And host team, Netravati, the French Shantinagar, organizing this Netravati Trophy 2022. And Netravati Shantinagar will go into play their first match against Superstar Maluru. Nasir bowls first ball, and it's a dotted one. Need not to play that dotted delivery. Reliance Katipalla in the last over is in progress. Each and every dot ball will going to create the problem for Reliance Katipalla if they're not able to get at least 6 runs which is required if they wanted to get some competitive total. Nasir Junior bowls. Again, they're going for the single. 1+1 to bonus runs here for Reliance. They will definitely going to enjoy this bonus run. And with that bonus of couple of runs, scoreboard numbers under 23. The last 5 deliveries remaining as Junior Nasir. And now it's a fantastic weather condition. Of course, the umpires and players wanted that kind of condition. It is a cloudy, overcast condition. And it's driven upishly, but only 1 run for that stroke from the batter. And with that single, scoreboard numbers under 24 on the board for the loss of 6 wickets. Reliance Katipalla. Reliance Katipalla, one more very popular team in the region of Suratkal, Krishnapura. They got a history of more than 35 years. One of the most reputed team taking competition in this prestigious Netravati Trophy 2022. Again, all of lovely wicket keeping here from Rafiq. Absolutely fantastic one. And just in a blink of eyes, he completes a job. A quick work behind the stump. Rafiq is known for that. There is the safest pair of hands in the behind the stump. Done a great job. And wicket number 7, which is back into pavilion of Reliance Katipalla at the score of 24, and they only got another 3 deliveries to spare. ಕೊನೆಯ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಇದು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಡ ಈಗಾಗಲೇ 24ಕ್ಕೆ ತನ್ನ 7 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು
Welcome back, and again the bowler will going to continue here as Nasir will going to continue from the commentary box, and the left-hand batsman is on strike. Khadar. Wait and see how Khadar will going to contribute from the bat in the remaining three deliveries, which is very important. Oh, that bam again. That ball is going far outside the run of off stump, and wide call by umpire Nasir. They're going for the run. Chance of run out. Missed it completely. Oh my goodness. And they're grabbing this opportunity here. Umpire have to see whether the ball is in play. The ball is in play means, of course, the run will going to be given. To wait and see. Umpire, please make the decision quickly. How much runs? David Telbeku. Wide matre. Only wide. Thank you. $25 on the board. So wide delivery, one run which is added to total. Scoreboard now moves on to 25 on the board. This is a last over is in progress. Four time in this over. Nasir, right arm over the wicket. Balls again the wide. And one more extra again added total. Reliance getting some extra runs. The bonus runs, 26 on the board. Nasir and third wide in this particular over he bowled, and he bowling again the fourth time in this over to the left hand batter Khadar. Khadar going for the drive. This time wicketkeeper fails to collect the ball. By call by umpire. Good line in the negation there from Nasir, with the addition of that single. Scoreboard numbers under 27 on the board for the loss of 2 wickets, for the loss of 7 wickets. 27 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಟಿಪಳ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. Nasir bowling away from us. Right arm over the wicket balls. It's a full toss, lofted, and he will going to get the fielder in the deep mid wicket region. Not really getting that one from the middle of the bat. Otherwise, he can dispatch that one. The very young, talented player Mazin is a man who tried to hit the ball across the line, full toss delivery, but not really having a sweetest part of the bat. Ball is just landed into the hands of mid wicket. New batter have to take the strike. Salman, one more very talented bowler. Salman just came into middle. Outstanding performance from him in a UCG cricket ground last season. Salman will go into face next delivery from Nasir. Right arm over the wicket balls. Nasir across the line, swinging that one, but it's a dotted delivery. Bless run out taken place. The final delivery is a dotted and run out. So Reliance Katipalla finished their 5 overs quota, and they scored 27 runs by losing 8 wickets, and they set a target of 28 to win this match for Young Friends of Myanmar. Outstanding performance here from the bowlers of Young Friends of Myanmar, and we will see how we'll go into justify the effort of their bowlers. They need to get another 28 runs to win this match in 30 balls,
and wait and see the kind of reply coming from the batter. Meanwhile, I request the two teams captain please report here for the toss. Netravati Shantinagar as well as new superstar Maluru to report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನನ್ನ ಚಿಮಿಗೆಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Before the innings will go into start of young friends MMR, I request Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. 28 the target. ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಲೆಮಾ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ for the toss procedure in fact. Right, the 28 the target for young friends of MMR and 28 runs they have to score for victory in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 5.60 runs per over and the innings now going to start. Nazir and Rafiq the openers, meantime the bowler is Salman and now the first ball of the innings is now coming up. पहली गेंद लेकर इस वक्त सलमान तैयार, नजीर सामना करने के लिए, रफीक नॉन स्ट्राइकर एंड पर और यंग फ्रेंड्स MMR की पारी की पहली गेंद इस वक्त लेकर गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद ऑफ द टॉस. ब्रिलियंट ब्रिलियंट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, अपने एक हाथ से ऊपर की ओर छलांग लगाई और ऐसा कहना पड़ेगा गेंद उनके हाथों में सीधे बैठ गई और यहाँ पर इस बेहतरीन कैच की बदौलत पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है नजीर का और शून्य पर पहला विकेट खो चुका है इस वक्त यंग फ्रेंड्स MMR. और फील्डर जो कि खड़े हुए थे 20 दर्शक की तैयारी के अंदर बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपका अपने एक हाथ से और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहाँ पर विकेट इस वक्त गिर चुका है. 0 रन 1 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाने 5 ओवर में, जहाँ तक लक्ष्य का सवाल है. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला नेत्रावती ट्रॉफी 2022-2022 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है फ्रेंड्स शांति नगर ने और यहाँ पर मुकाबला इस वक्त जारी है. माफ कीजिए, मुकाबला इस वक्त जारी है रिलायंस काटीपल्ला और सुपरस्टार माफ कीजिए यंग फ्रेंड्स MMR के बीच में.
तो बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट गिरने के बाद अब इंतजार है नए बल्लेबाज का और देखते हैं कौन से बल्लेबाज इस वक्त यहाँ पर उतरते हैं। तो दोपहर का वक्त लगभग 1 बजते हुए बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है और गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। तो नए बल्लेबाज नंबर 3 बल्लेबाज किशोर जो कि इस वक्त मैदान पर उतरते हुए रफीक का साथ निभाने के लिए, और जहां तक रफीक और किशोर का सवाल है काफी अनुभवी खिलाड़ी दोनों एक अरसे से वो कुछ टीम का प्रतिनिधित्व कई टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी उपस्थिति यंग फ्रेंड्स उम्मीदवार के लिए बेहद जरूरी है जहां तक उनका लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है। तो पहली गेंद पर विकेट प्राप्त करने के बाद गेंदबाज सलमान काफी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज जो के सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार टिप किया स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर। वन मोर विकेट फॉलन, 2 deliveries, 2 wickets, and now young friends Ambemar are now looking in trouble. He just checked the shot at the last moment after goes on to the back foot by Kishore, but unfortunately for him, the ball went into the hands of fielder at extra cover, and finally he made no mistake. So 2 गेंदे 2 विकेटें और young friends Ambemar कहना पड़ेगा they are straight away right under pressure now. 0 पर 2 विकेटें गिर चुके हैं और यहाँ पर अब नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज लंबे कद के खिलाड़ी जो कि इस वक्त रफीक का साथ निभाने के लिए अंसार नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए। सुपरस्टार मल्लूर after won the toss they elected to field first against Netravati cricketers, and that match is now coming up live exclusively right in front of you right after this match. तो यहाँ पर 2 गेंदे 2 विकेटें हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज इस वक्त तैयार। अंसार इस वक्त सामना करते हुए देखना ही है कि अंसार गेंदबाज सलमान का हैट्रिक रोक पाते हैं या नहीं। इस बीच दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए हैट्रिक गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद निकलती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन 2 रन मिलेंगे। 1+1 2 runs now added to their total, and with that couple run the runs account begin for young friends Ambemar 2 तो यहाँ पर 2 रन मिल चुके हैं यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सलमान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रफीक अंपायर से गार्ड लेने के बाद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सलमान की गेंदों का फील्डिंग का मुआयना यहाँ पर करते हुए और जहां तक यंग फ्रेंड्स अम्मेमार के विजय तक पहुंचने का सवाल है एक बेहतर साझेदारी की उन्हें सख्त जरूरत है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट सलमान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रफीक के लिए इस बार गेंद हवे में लेकिन नेट के उस पार 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी 3 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो सलमान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रफीक सामना करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रफीक के लिए अगली गेंद स्वीप करना चाहा, not quite mid wicket, but he gets in a single for that stroke. In fact, it's an overthrow there, but back up by the fielder at point area. और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 4 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। It's 4 for the loss of 2 wicket and the over number first in progress. A successful over progressing here so far from Salman. Just conceded 4 runs in this over and captured 2 wickets so far. And now once again here he comes, right arm over the wicket bowls again. इस बार ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में हाफ स्टॉप रन के लिए दौड़ पड़े रफीक के लिए खतरा, लेकिन रफीक काफी तेज और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं।
गेंद लगभग बल्लेबाज से टकराने के बाद गई थी गली की दिशा में और इसका फायदा उठाकर ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 रन पूरा कर चुके हैं। रफीक ताली बजाकर इस वक्त अंसार का अभिवादन करते हुए कि उन्होंने बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर निभाया है। तो 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। अब 6 रन तो 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर और ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक किया ऑफ द टोज। 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो 2 विकेट पहले 2 गेंदों पर गिर जाने के बाद भी एक बेहतर साझेदारी इस वक्त पहले ओवर में निभाने में सफल रफीक और अंसार 7 रन जोड़ चुके हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद। जहां तक यंग फ्रेंड्स मेमार का सवाल है, एक संतुलित टीम इन दिनों में मंगलूर के बेहतरीन टीमों में से एक जानी जाती है रिलायंस काटीपल्ला की तरह। और रिलायंस काटीपल्ला भी करीबन 40 साल का इतिहास है और वो भी एक बेहतरीन टीमों में से एक जानी जाती है। और 2 बेहतरीन टीमों के बीच इस वक्त मुकाबला जारी है। और जहां तक यंग फ्रेंड्स मेमार का सवाल है, शुभकामनाएं कई लोगों ने दिया, खासकर हाजिम जो कि यंग फ्रेंड्स के खिलाड़ी मेमार के खिलाड़ी भी है, हाजिम, जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं इस वक्त भेजी है इस श्रृंखला में यंग फ्रेंड्स मेमार की सफलता के लिए। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो मैच अभी भी इस वक्त बराबरी पर रुक चुका है। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज इमरान ना, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अंसार के लिए। 21 रन चाहिए, 24 गेंदें बाकी, 21 टू गेट इन रिमाइनिंग 24 डिलीवरीज। और ओवर की पहले गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 8 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। और फिर से एक बार गेंदबाज की ओर किया गेंद, इस बार उछाला लंबा पर, लेकिन फील्डर के हाथों में। और इसी के साथ अंसार की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। मैं समझता हूं यहां पर ऐसे स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं थी इस वक्त, क्योंकि रन्स अच्छे खासे बन रहे थे। तो यहां पर अंसार ने एक चौका या छक्का लगाना चाहा, प्रेशर ऑफ करना चाहा था, लेकिन कुछ ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर नहीं था। लेकिन यहां पर आक्रामक स्ट्रोक लगाने के प्रयास में वो अपना विकेट यहां पर गवा बैठे। और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है यंग फ्रेंड्स मेमार का 8 रनों के योग पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। So after the departure of Azhar, the new batsman, Sammat is now comes out to the middle as a number 5 batsman with lots of responsibility for young friends Amemar. वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। यहाँ पर गेंदबाज इमरान की गेंदों का ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में। गेंद जाते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह यहाँ पर यंग फ्रेंड्स मेमार को जरूरत है एक साझेदारी पार्टनरशिप की। और क्रीज पर मौजूद रफीक जो कि अपार अनुभव है उन्हें बल्लेबाजी का, तो इस वक्त वो जानते हैं उनकी उपस्थिति उनके टीम के लिए बेहद जरूरी, वो खुद जानते हैं कि उनकी उपस्थिति उनकी टीम के लिए बेहद जरूरी है। और यहाँ पर वो एक बेहतर पारी खेलने की कोशिश करते हुए और इस बीच राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, जगह नहीं बना पाए और रन से इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इमरान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इनात राउंड द विकेट रिवर्स शॉट, गेंद को खेला पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद पहुंची इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है और ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट मीटिंग इट एट द लास्ट मोमेंट। He's got his stoppage of the bat and but luckily for him it went in the wicket area, because of that he gets in a single for that stroke। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इमरान एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए
दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज समद सामना करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद पहुंची टॉप एज पर टकराने के बाद लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक रन मिलेगा। इस बीच 11 3 विकेट के नुकसान पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। लास्ट बॉल अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए रफीक सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन सा स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ शॉर्ट मिड विकेट फील्डर। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ा था रफीक ने, लेकिन गेंद फ्लैटर वर्जन पर पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े हुए थे और आखिरकार एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपका और रफीक का बेशकीमती विकेट यहां पर गिर चुका है। तो निस्संदेह ये विकेट का पतन यंग फ्रेंड्स अम्मेमार के लिए यहां पर ड्रॉबैक का साबित हो सकता है, क्योंकि रफीक एक काफी अनुभवी बल्लेबाज थे और उनका विकेट यहां पर गिरना यंग फ्रेंड्स उरुआ को मुश्किलों में इस वक्त यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को निस्संदेह मुश्किलों के दलदल में ढकेल सकता है। तो इस वक्त शाकिर का आगमन होता हुआ एज अ नंबर 6 बैट्समैन। 2 overs completed and after 2 overs it's 11 for the loss of 4 wicket. Still in overall calculation it's 17 runs they have to score for victory, 18 balls remaining in the innings and as far as the victory of this match is concerned, still I must say this match is now evenly poised. Number 6 the batsman is now comes out to the middle, Shakir और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार समद, जबकि गेंदबाजी शुरू करते हुए माजिम इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 18 गेंदें बाकी, 17 रन चाहिए विजय के लिए और विजय के लिए यहां पर कड़ा संघर्ष जारी है रिलायंस काटीपल्ला और यंग फ्रेंड्स अम्मेबार के बीच में। दोनों संतुलित टीमें विजय के लिए इस वक्त भिड़ रही हैं और ओवर की पहली गेंद लेकर माजिम इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी अंतिम क्षण में और आखिरकार गेंद को शॉर्ट कवर पर फील्ड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू हो चुका है। माजिम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ना चाहा, वहां पर क्या हुआ है असल में हमें यहाँ पर पता नहीं लगा क्योंकि नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन बिल्कुल सामने थे हमारे, लेकिन वहां पर हाथ जरूर उठी थी 2-3 फील्डरों की, लेकिन बल्लेबाज के लिए कोई क्षति नहीं। यहाँ पर 12 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है, 16 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम 16 डिलीवरीज। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से झुके डॉट गेंद, कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स फॉर द बॉलर। अब कुछ हद तक दबाव बल्लेबाज के ऊपर, 15 गेंदें बाकी हैं, 16 रन चाहिए, 16 टू गेट फ्रॉम 15 डिलीवरीज। व्हाट अ मैच इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर और बोथ टीम्स प्लेयर्स आर नाउ फाइटिंग हार्ड और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर माजिम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, शाकिर 2 डॉट गेंदें इस वक्त खेल चुके हैं और देखते हैं अगली गेंद पर वो कौन सी बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं शाकिर के खिलाफ। शाकिर के खिलाफ नहीं, माजिम के खिलाफ, और शाकिर की यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त माजिम की, चूंकि 3 डॉट गेंदें तो 14 गेंदें बाकी, 16 रन चाहिए और धीरे से इस वक्त तख्ता पलटता हुआ। तो 3 लगातार डॉट गेंदें खेलने के बाद अब दबाव बल्लेबाज शाकिर के ऊपर काफी हद तक बढ़ चुका है। तो इस वक्त अपनी अगली गेंद लेकर माजिम तैयार शाकिर के लिए, पेस का चतुर परिवर्तन करते हुए अपनी गेंदबाजी में इस वक्त माजिम सामना करने के लिए तैयार इस वक्त शाकिर। विकेट कीपर फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद माजिम दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाकिर के लिए यह गेंद इस बार टिप किया लगन पर फील्डर और नहीं पहुंच पाए। स्वयं गेंदबाज माजिम ने जीतोड़ कोशिश की थी लेकिन आखिरकार गेंद तक लपकने में असफल और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 13 रन बन चुके हैं यहाँ पर 28 का लक्ष्य, जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 13 गेंदें बाकी है, 15 रन चाहिए विजय के लिए। 15 रन टू गेट इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। विजय के लिए बराबर का टक्कर यहां पर जारी है और इसमें शाकिर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं। सामना इस वक्त करने के लिए तैयार समद और
इस वक्त माजिम सफल ओवर अब तक उनका साबित हो चुका है। अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज समद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को चिप किया खूबसूरती के साथ, स्क्वायर ऑफ द विकेट, मिड ऑफ फील्डर की बाईं ओर से 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। जो 14 रन बन चुके हैं, 14 रन और बनाने हैं। 14 रन स्कोर, 14 रन स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री, 2 overs to go in their innings। तो यहां पर हमारे सामने एक इस वक्त इकबाल जी मौजूद है। तो यहां पर एक वक्त के दिग्गज खिलाड़ी, इन द 80s and 90s decades he dominated the underarm cricket। अब अंपायरिंग का कार्यभार बेहतरीन निभाते हैं। और यहाँ पर सतीश मैं आपको बुलाना चाहूंगा, 12 गेंदों में 14 रन चाहिए इस वक्त, तो पॉसिबिलिटीज रिमेन्स द सेम। तो पिछले ओवर में माजिम ने जिस तरीके की गेंदबाजी की है, उसी तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद है इस वक्त आने वाले ओवर्स में। यहाँ पर रिलायंस का टिप्पण लगे गेंदबाजों को, अगर उन्हें बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखना है। तो जहां तक यहाँ पर सवाल है यंग फ्रेंड्स एमएमआर के बल्लेबाजों को, तो हर गेंद पर इस वक्त उन्हें रन बनाना होगा विजय अगर दर्ज करना है तो। Exactly, Gopi, and you need to appreciate the effort of the youngsters of Reliance Katipalla, Mazim, and of course Salman. The two very young, talented bowlers really did a fantastic job to put some pressure on young friends MMR. But still, opportunities there for MMR, Gopi, because you need to bat very well. Sensible batting which is required. Just a rotation of strike, they're very important, and they can get extra runs, excluding the wides and nobles. They have to get the 14 runs, so that I think the rotation of strike is first priority of MMR to win this match. बिल्कुल सतीश, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को खेला, इस बार गेंद को फील्ड करते फील्डर दूसरा रन लेना चाहते हैं, नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश, इस वक्त स्ट्राइक रोटेट करना बिल्कुल जरूरी बन चुका है, और स्ट्राइक रोटेट हर गेंद पर करते हैं तो अपने आप दबाव गेंदबाज के ऊपर आएगा, और कोई वाइड अगर वो फेंकते तो निसंदेह बल्लेबाज के लिए बोनस कहलाएगा। तो हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद बेहतर गेंद थी, विकेट कीपर चूके हैं, लेकिन इस बार विकेट कीपर की गलती की वजह से बल्लेबाज ने 1 रन यहां पर पूर्ण कर दिया। अब 10 गेंदे बाकी, 12 रन। और जहां तक सवाल है रिलायंस काटीपल्ला का, तो इस वक्त उन्हें चाहिए डॉट गेंदे, लगातार उन्हें डॉट गेंदे फेंकनी होंगी इस वक्त, और विकेट इस वक्त उखाड़ने होगा। अगर विकेट उखाड़ नहीं सके तो भी कोई बात नहीं, लेकिन डॉट गेंदे इस वक्त उन्हें जरूर फेंकने हैं इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। फिलहाल बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है, 10 गेंदे बाकी हैं, 12 रन चाहिए, 12 to get from 10 deliveries। What a fantastic match is now progressing here। और इस बीच फील्डिंग में जमावट गेंदबाज करने के बाद इमरान गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इमरान की गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद मिडल स्टंप पर लगते हुए बल्लेबाज के जूतों पर टकराने के बाद, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। He just wanted to play that one with a twisted bat in the face of reverse shot, but the ball after being hitting to his shoes, it flattered the middle stump, and that is the wicket number 5 for young friends MMR। तो पहले ओवर में रफीक और अंसार ने जब 9 रन जोड़े थे, तब ऐसा लग रहा था यंग फ्रेंड्स MMR के बल्लेबाज छा जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक करते हुए रिलायंस काटीपल्ला के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया, और यहाँ पर कुछ हद तक तख्ता उनका भारी लगता हुआ। अब गेंदे बाकी है, 9 रन से चाहिए 12, 12 runs to get in remaining 9 deliveries। और नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन होता हुआ काफी जिम्मेदारियों के साथ इस वक्त क्रीज पर अपना कदम बढ़ाते हुए अशरफ इस वक्त साथ निभाएंगे शाकिर का। और इस वक्त देखते हैं ये दोनों बल्लेबाज मिलकर यंग फ्रेंड्स MMR को सही मंजिल तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल गेंदबाजी इस वक्त लिए वे गेंदबाज इमरान इमो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 4 खिलाड़ी अभी भी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। शॉर्ट फाइन लेग पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑन थोड़ा सा वाइडर तैनात। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट। 5 फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात लंबे स्ट्रोक्स रोकने के प्रयत्न में। और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, टॉप है, कोई फील्डर वहां पर नहीं, 1 रन मिलेगा। फील्डर गेंद तेजी के साथ गेंद तक पहुंचते हुए बेहतर फील्डिंग वहां पर। और सारे खिलाड़ियों ने तालियों के साथ ताली बजाकर उस खिलाड़ी की सराहना की जिन्होंने बेहतर फील्डिंग यहां पर की डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन से रोक कर रखा। 17 रन बन चुके हैं, 11 to get from 8 balls। What a fantastic match is now progressing here, and
Now once again the bowler Imran, here he comes, right arm over the wicket, bowling now. तो स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए शाकिर 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। 11 रन चाहिए 8 गेंदों में। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 1 रन मिलेगा लेग बाई के रूप में। और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर। अब कुल मिलाकर रन से चाहिए 10, गेंदें बाकी हैं 7। तो बचे हुए गेंद और रन 3 का फासला अभी भी बरकरार है। और अगर यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को अपने रन तक पहुंचना तो ये 3 के फासले को उन्हें मिटाना होगा। और जहां तक रिलैक्स का टिपल्ला का सवाल है तो उन्हें अगर इस मैच को जीतना है तो इस 3 के फासले को बरकरार रखना होगा पारी के अंत तक, पारी के अंतिम गेंद तक कहना पड़ेगा। और देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद यहाँ पर इमरान अंतिम Imran considered 4 runs in this over. One more good over in a relatively point of view. The equation seems to be for little bit for young friends Ammar from last over. अंतिम ओवर में और गेंदबाजी लेकर इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते गेंदबाजी शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज लंबे कद के खिलाड़ी शाकिर। तो फील्डिंग में यहाँ पर जमावट चलती हुई, दोनों अंपायर आपस में कुछ बातचीत करते हुए और अपने ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए 10 रन चाहिए गेंदों में। 10 to get from 16 overs। 4 खिलाड़ी अभी भी डिस्कस के दायरे के अंदर तैनात और कुछ बातचीत इस वक्त जारी है गेंदबाज और फील्डर के बीच। और इसके बाद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए इस वक्त गेंदबाज और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार कर गेंदबाजी शुरू करते हुए शाकिर के लिए गेंदों में और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार चूंकि ऑफ से बाहर की ओर निकलती जमीन के साथ और स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। एक गेंद डॉट हो चुकी है, 5 गेंदें बाकी हैं, चाहिए निस्संदेह एक चौके छक्के की इस वक्त जरूरत है यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को इस मैच में कमबैक करने के लिए। तो एक बार फिर से फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और इस बीच दोनों बल्लेबाज की बातचीत इस वक्त करते हुए पिच के बीच अपने स्थान पर लौटते हुए तख्ता इस वक्त भारी लगता पड़ लगा, लेकिन बैक करने का मौका जरूर है इस वक्त यंग फ्रेंड्स यंग फ्रेंड्स मारना के बल्लेबाजों को। देखते हैं क्या होता है। और जहां तक सवाल है 5 गेंद बाकी 10 रन चाहिए गेंद लेकर तैयार। ये गेंद दूसरा रन आसानी के साथ पूर्ण कर चुके हैं। फील्डर अब 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 8 टू गेट नाउ फ्रॉम रिमेनिंग 4 बॉल्स। 4 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए। मैच अभी भी एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है और इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए खादर दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। और खादर एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए शाकिर के लिए अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद खादर की शाकिर के लिए और इस बार गेंद को उछाला एक बार फिर से वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर तेजी के साथ आपके 1 रन मिलेगा। 1 ही रन के साथ बल्लेबाज संतुष्ट हो चुके इस वक्त। 21 नाउ, 7 टू गेट, 3 बॉल्स रिमाइनिंग। और ये 3 गेंदें अब रिलायंस काटीपल्ला और यंग फ्रेंड्स अम्मेमार का भविष्य लिखेंगे इस मैच में। तो यहां पर खादर एक बार फिर से फील्डिंग का मुआयना करने के बाद
गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त अशरफ, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और अशरफ इस वक्त अपने बैटिंग के मार्ग से कुछ हद तक हट गए। एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार खादर की गेंदों का, बाएं हाथ राउंड द विकेट खादर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अशरफ के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, विकेट कीपर ने विकेट झटका है। यहाँ पर रन के लिए दौड़ पड़े और यहाँ पर मिल चुके हैं रन्स 2, लेकिन यहाँ पर देखना यह है कि थर्ड अंपायर के लिए इस वक्त कॉल किया गया है। तो अगर ये गेंद यहाँ पर बल्लेबाज बचते हैं, रनआउट नहीं होते, तो 2 रन उनके खाते में जोड़े जाएंगे और लक्ष्य कुछ हद तक आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पर विकेट गिरता है तो निस्संदेह सिर्फ 1 रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा और 1 विकेट भी यहाँ पर गिरेगा। तो जहां तक सवाल है अगले मैच का, तो अगला मैच नेत्रावती और सुपरस्टार मल्लूर के बीच में खेला जाएगा। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में इस वक्त तृतीय अंपायर उस रनआउट का इस वक्त परिशीलन करते हुए, और देखते हैं आखिरकार वो क्या निर्धार यहां पर देते हैं। He's gone और सिर्फ 1 रन यहां पर जोड़े जाएंगे। एंड नाउ it's 22 now for the loss of 6 wickets, 6 to get from 3 deliveries, 6 runs to get from 3 deliveries। और जब विकेट उखाड़े गए थे, जब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज से कुछ इंच बाहर था, तो तृतीय अंपायर इकबाल ने इस रनआउट का परिशीलन करते हुए यहां पर उन्हें आउट घोषित किया। और अब 3 गेंदों में चाहिए 6 रन विजय के लिए यंग फ्रेंड्स एमएमआर को। 5 for tie, 6 for win, and the new batsman is now comes out to the middle, number 8 batsman, 69 इमरान इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उपस्थित और सामना करने के लिए तैयार। खादर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए विकेट कीपर और डीप मिड विकेट फीडर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है। जहां तक सवाल है लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ कुछ हद तक सीधा इस वक्त मौजूद ठीक सीमा रेखा के पास दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान के लिए। और इस बीच इमरान गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 6 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी उनकी पारी में। अगली गेंद खादर इमरान के लिए, अगली गेंद लेकर तैयार। दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ बढ़ता हुआ इस वक्त विजय के लिए कड़ा संघर्ष जारी है। और कादर बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इमरान के लिए ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई और इस बीच वाइड इस वक्त घोषित हो चुकी है और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकल रहे थे। और आखिरकार कुछ बातचीत करते हुए खिलाड़ी अंपायर से और आखिरकार यहां पर वाइड घोषित किया गया है। तो इस बीच बातचीत जारी है यहां पर, खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು So single run added and now 5 runs they have to score for victory in 3 balls. 4 for tie, 5 for win. 3 balls remaining. What a terrific match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. और अब सामना करने के लिए तैयार एक बार फिर से इमरान खादर की गेंदों का।
खादर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रहा। 5 रन इस वक्त चाहिए यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को। 3 गेंदे बाकी और खादर 7 से 8 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज इमरान सामना करते हुए यह गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई एक बार फिर से, और इस बार रन आउट यहां पर हो चुका है और वाइड का इशारा। तो अब 3 गेंदे 4 रन, लेकिन विकेट जरूर यहां पर गिरा है, लेकिन वाइड मिला है इस वक्त तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में यंग फ्रेंड्स अम्मेमार को। तो ये उनके लिए इस वक्त खुशी की बात है। तो गेंदे अभी भी 3 बरकरार है, रन सब चाहिए 4। तो पहले 3 गेंदों में बेहतर गेंदबाजी की थी खादर ने, लेकिन उसके बाद लगातार 2 वाइड उन्होंने फेंके और आखिरकार अपनी सही लेंथ और लाइन को अभी भी तराशते हुए 24 नाउ, 4 to get wicket, 7 wickets down, 7 wickets down, 24 for the loss of 7 wickets. 3 wickets they got in their hand, 4 runs they have to score, 3 deliveries remaining in their innings. और इस बीच गेंदबाज खादर को टीम के अन्य खिलाड़ी रिलायंस काटीपल्ला के कुछ समझाते हुए कि किस तरीके की लेंथ और लाइन के साथ उन्हें इस वक्त गेंदबाजी करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर लगातार 2 वाइड फेंकने के बाद सहज रूप से दबाव उनके ऊपर आ चुका है और देखना यह है कि उस दबाव को वो किस तरह आने वाले गेंदों में झेलते हैं। और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, नासिर। इमरान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट, काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और इस बीच खादर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान सामना करने के लिए तैयार खादर की गेंदों का। 3 गेंदे बाकी, 4 रन चाहिए। Here we go, बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, शॉर्ट टर्न की दिशा में 1 रन मिलेगा। अब 2 गेंदे बाकी और रन से चाहिए 3। तो 2 गेंदे अगर निर्धारित किया जाएगा। If the match ended in tie, winners will be decided by toss. 2 balls remaining, 3 runs they have to score, 2 for tie, and the next ball of the match is now coming up. और खतर ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಬಲವಾಗಿ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜೇತ ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ 2 balls इस बीच और अपनी अगली साथ जमीन पर टिप्पा विकेट के दिशा में 1 रन मिलेगा। अब अंतिम गेंद 142 and ball हमला करने के लिए तैयार और खादर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ऐसा कहना पड़ेगा रिलायंस काटीपल्ला का भविष्य गेंदबाज खादर के हाथों में, जबकि यंग फ्रेंड्स अम्मेमार का भविष्य बल्लेबाज इमरान के हाथों में। तो देखते हैं यहां पर इस गेंद पर क्या होता है। मैच निर्धारित गेंद लेकर इस वक्त खादर तैयार रहा। अंतिम ओवर में 10 रन बनाने थे, जबकि 5 गेंदों में, पहले 5 गेंदों में 9 रन 8 रन बना चुके हैं यहां पर बल्लेबाज यंग फ्रेंड्स अम्मेमार के। दे स्कोर्ड 8 runs in the first 5 deliveries and now 2 required of last ball. अंतिम गेंद 2 रन और यहां पर अभी भी फील्डिंग में जमावट करते हुए तो कुछ और जहां तक अंतिम गेंद देखते हैं, इस अंतिम गेंद में विजय को टीम करती
And we are just waiting for the last ball, match deciding ball of the match. अभी भी कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। अंतिम गेंद पर 2 रन चाहिए। खदर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इमरान सामना करने के लिए तैयार। The last ball of the match is now coming up. 2 of last delivery. Here we go. Left arm around the wicket. ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट पर, मिसफील्ड, लेकिन एक बार रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, और इस बार रन के लिए साइकिल पर मौका, और इस बार रन आउट हो चुका है। So the match now ended in a tie. अब देखते हैं टॉस के जरिए कौन सी टीम यहां पर विजय प्राप्त करती है, भाग्य किसका यहां पर साथ देता है। तो वो कृपया को संपर्क कर टॉप रखें। Captains of both teams, please contact the umpires. So toss procedure with through between Super Mallur will take Netravati cricketers in the next match, and that match starts within just a while. Just till then we're taking a short break, and we'll be back right after the short break with my one more friend, my colleague, Mr. Araf, in our national language. And we'll be back right after the short break. Thank you. Dhanyavad.
So now it's the time for the man of the match, and man of the match which is goes to Samad of Young Friends MMR for his all-round performance, scored valuable 6 runs and picked up 1 valuable wicket. So that I request Samad to come and collect your man of the match award from our chief guest. I request Jabbar. So very popular figure Jabbar will going to present this man of the match award for Samad for his all-round performance. ದಯಮಾಡಿ ಸಮದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. For his all-round performance. So congratulations. And Jabbar will going to present this man of the match award for Samad for his all-round performance. Thank you very much. We are back to this match, and before the match will go into start once again, I welcome our co-commentator Mr. Araf Bandar for the further explanation for the match in our English language and Hindi language. Thank you. जैसे कि धन्यवाद सतीश जी और गोपी जी के बहुत ही खूबसूरत तरीके की कमेंट्री यहाँ पर आंखों दिखाल बताते हुए इस टूर्नामेंट का मनोरंजन करते हुए, और सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहूँगा इस मैदान पर, जहाँ पर फैजल नगर के एक खूबसूरत बड़ी मैदान यहाँ पर सजी है और ग्रीन सिग्नल अंपायर की यहाँ पर आ चुकी है. फ्रेंड्स, शांति नगर आयोजित करता हुआ नेत्रावती ट्रॉफी, जब अब इस वक्त नेत्रावती की टीम इस वक्त मैदान पर मौजूद है और 2 आरंभिक सलामी बल्लेबाज किशोर स्ट्राइक रन जोन पर और नॉन स्ट्राइक रन जोन पर जफीर. 4 ओवर की मैच यहाँ पर खेला जाएगा और गेंदबाजी पर इस वक्त पहली गेंद स्ट्राइकर गेंदबाज लेता हुआ अशरफ तैयार. राइट मोर द विकेट की दिशा पर अंपायर को पार करते हुए गेंद इस वक्त पहली किशोर को बल्लेबाजी, बल्ले को पटकते हुए गेंदबाजी करते हुए देखना पड़ेगा किस तरीके की तालमेल यहाँ पर रची जाती है. इस वक्त शायद ऑफ स्टंप से लक्ष्य से दूर जाता हुआ गेंद और वाइड का इशारा देते हुए अंपायर, और इसी के साथ यहाँ पर खाता खुलता हुआ अशरफ के नामों पर यहाँ पर खाता खुलता हुआ 4 ओवर की मैच यहाँ पर खेला जा रहा है. और इस वक्त एक खूबसूरत बड़ी मंजर समय बचकर घड़ी पर होता हुआ 1 बजकर करीबी 30 होता हुआ इस वक्त मैदान पर, और खड़ी धूप यहाँ पर गिर चुकी है और मैच का भी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है खूबसूरत तरीके से, और दोनों टीम बहुत ही अच्छी तरीके से जर्सी मेंटेन करते हुए रचाते हुए इस मैदान पर हरे भरे पेड़ों के साथ रंग बिरंगी झंडे लहराते हुए खुले आसमान, नीले रंग के आसमान और सफेद तरह के बादल के साथ खूबसूरत बड़ी मैदान पर गिरता हुआ एक सूरज की किरणें, उसी के साथ खेलते हुए गर्मी को महसूस करते हुए 32 डिग्री सेल्सियस इस वक्त चलता हुआ और 36 डिग्री हॉट फीलिंग्स इस वक्त लेते हुए मैदान पर, और गेंद गिरता हुआ इस वक्त शायद देखना पड़ेगा, शायद गेंद जाकर पैरों को टकराई या लेग बाइस का इशारा देते हुए अंपायर, और इसी के साथ 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ 3 गेंद फेंकने के बाद. बहुत ही खूबसूरत तरीके की मैच यहाँ पर देखने मिली. जो पिछली मैच यहाँ पर खेली गई थी बहुत ही जबरदस्त मैच थी, हाई वोल्टेज मैच, जहाँ पर एक टॉस ने निर्णय लिया कि कौन सा टीम जीतेगा. बहुत ही अच्छी मैच थी. गेंदबाज रिलायंस काटीपल के इतनी अच्छी तरीके से गिरी जो अंत ओवर पर एक शायद बुरी ओवर गिरी, जिस वजह से जो एक ऐसा सामना करना पड़ा कि वहां पर कॉइन ने निर्णय लिया. इस वक्त वहां पर स्वीप की बहुत ही खूबसूरत मिसफील्ड होता हुआ नजर आई. बल्लेबाज अच्छी तरीके की बल्लेबाज दौड़ते हुए 2 रन के लिए, और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके की बल्लेबाज 2 रन दौड़ते हुए पूरे किए. चौथी गेंदों पर कुल मिलाकर 5 रन बने. किशोर यानी कि बहुत ही समय से अंडरआर्म के साथ देते हुए नजर आए. मैंने ऐसा ही मैदान के बाहर जब बातचीत हो रही थी, मैंने सुना कि एक खिलाड़ी जब कह रहा था कि 100 रन ये खिलाड़ी ने मारा था एक मैदान पर, और इस वक्त मैदान पर मौजूद है नेत्रावती के साथ देते हुए जो पुराने शख्स इस टीम के, और इस वक्त वहां पर गेंद गिरता हुआ अशरफ की, और स्वीप कैच हाथों पे खेल कर ड्रॉप किया. यानी कि कैच ड्रॉप करना मैच को
को ड्रॉप करने जैसी बात होती है। इस वक्त नेत्रावती एक चांस मिलता हुआ किशोर को, बहुत ही एक बड़ा चांस यहाँ पर मिलता हुआ नजर आई। इस वक्त उस चांस को अब बल्लेबाज को टिक कर खेलना पड़ेगा, यानी कि राहत का सांस उनको जब मिलेगी इस चांस का ठीक तरीके से मौका उठाए। खिलाड़ी ने यहाँ पर अब बचा है और 7 रन कुल मिलाकर यहाँ पर बच चुकी है। और आखिरी गेंदों पर अशरफ किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर दिखाते देखना पड़ेगा। डॉटेड डिलीवरी होगी या फिर बल्लेबाज कुछ सिंगल्स या डबल्स बनाएगी या विकेट जाएगी, कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंदों पर पहली ओवर की शुरुआती करते हुए अशरफ और आखिरी गेंद को लेता हुआ अंपायर को पार करते हुए, और इस वक्त आखिरी गेंद स्वीप करने की कोशिश, बहुत ही खूबसूरत तरीके स्ट्रोक किया। क्या अच्छी फील्डिंग थी, वहां पर दौड़ते हुए आए, विकेट कीपर के दस्तानों पर गेंद को दे दिया। आखिरी गेंद यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। कुल मिलाकर पहली ओवर के समाप्त के बाद रन जाता हुआ स्कोर बोर्ड पर 8 रन यहाँ पर बन चुके हैं बिना कोई विकेट गंवाए है। बहुत ही खूबसूरत तरीके की यहाँ पर बल्लेबाजी की। अब इस वक्त किशोर और जफीर मैदान पर मौजूद है। किशोर को जब एक लाइफ मिला तो इस वक्त जाफर, क्षमा चाहूंगा, जाफर इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन जोन पर और स्ट्राइक रन जोन पर किशोर जो ओपनिंग बल्लेबाज कप्तान ने उनको एक उम्मीदवार लेकर इस मैदान पर चुने। जैसे कि नेत्रावती ट्रॉफी चल रहा है और नेत्रावती की टीम मैच पर खेल रहा है, जैसे कि मंसूर भाई ने इस मैदान पर खूबसूरत बड़ी मैच को रचाई है और उसी के साथ एक खूबसूरत उनके टीम के साथ जो साथ देते हुए सभी टीम स्पोर्ट्स जितने भी स्पिरिट रहने वाले खिलाड़ी रहते उनको सपोर्ट करते हुए उनके साथ जुड़े हुए इस वक्त उनके टीम पर रियाज जो स्पोर्ट्स विनर के मालक है और क्रिकेट के एक ऐसी प्रेमी है जो उन्होंने क्रिकेट पर शुरू करते हुए उसी के साथ वो क्रिकेट का बिजनेस उन्होंने खोला। बहुत ही अच्छी एक स्पिरिट हमको मिलता है उनसे कि कुछ खेलो और कुछ अपने आप को बनाओ, और उन्होंने अपने आप को बनाकर दिखाया। और इस वक्त आज इस मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे दो ऐसे शख्स जो इस मैच को भी रचा है, उनके मंसूर भाई और उनके पूरे टीम। इस खूबसूरत तरीके आज का आखिरी दिन होता हुआ, लगभग 2 दिन से मैच चलता हुआ इस मैदान पर और आज का आखिरी दिन लेता हुआ बड़ी बड़ी मैच यहाँ पर अभी भी खेलना बाकी है। जहां तक अब मैच का हालत पहली ओवर के समाप्त के बाद कुल मिलाकर 8 रन यहाँ पर बन चुकी है। अब गेंदबाजी पर नए गेंदबाज का आगमन हो चुका है, अजहर। इस वक्त अजहर गेंदबाजी पर और अंपायर गोरी एक बाल को पार करता हुआ, यानी कि एक दिग्गज शख्स जो इस मैदान पर 3 दिन से काम करता हुआ लगातार, इकबाल जी। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत गेंद और वहां पर देखो रन आउट की खतरा हो सकती थी, पर लगबाइज का रूप से अंपायर ने इशारा करते हुए 1 रन दौड़ते हुए पूरे किए। इसी के साथ 9 रन यहाँ पर बनता हुआ, बहुत ही खूबसूरत नजारा, हल्का सा हवा चलता हुआ, उसी के साथ लाइव टेलीकास्ट होता हुआ इस मैदान पर। बेदरा मीडिया यानी कि 3 दिन से लगातार काम करता हुआ इस मैदान पर, जो इस मैदान से बाहर बैठे हुए मोबाइल से देखता हुआ इस मैच को, उनको भी स्वागत करना चाहूंगा इस खूबसूरत बड़ी टूर्नामेंट पर, जहां पर फ्रेंड्स शांतिनगर प्रेजेंट्स नेत्रावती ट्रॉफी 2022 चलता हुआ आखिरी दिन। और इस वक्त दूसरा गेंद यहां पर चलता हुआ, अजहर की बल्लेबाज वहां पर मेरे ख्याल से जफर बल्ले को पटकते हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी गेंद की, और क्षेत्र रक्षण की सजावट होते हुए यहां पर नजर आ रही है गेंदबाज की ओर से। और गेंद इस वक्त टपक आते हुए और दौड़ लेते हुए अंपायर को पार करते हुए और गेंद गिर चुकी है। बहुत ही बुरी गेंद, बहुत ही बुरी गेंद, इसे पिच से बाहर जाता हुआ बहुत ही लंबा रास्ता साफ किया उन्होंने, यानी कि यहाँ पर 1+1 का रूप से यहाँ पर रन मिलता हुआ नजर आई। इसी के साथ बहुत ही बुरी तरीके की अब इस वक्त शुरुआत होता हुआ नजर आ रही है अजहर की, क्योंकि पहली गेंद बहुत ही अच्छी तरीके से लाइन एंड लाइन गिरी और उसके बाद बुरा गेंद शायद ओवरथ्रो अपने हाथों से होता हुआ नजर आई, जिससे हाथ को फिसलता हुआ गेंद जमीन से सीधा वाइड की ओर निकली। इस कारण 1+1 यहाँ पर जुड़ता हुआ नजर आई और उसी के साथ 11 रन कुल मिलाकर बन चुके। इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छी तरीके से बल्ले की भी तालमेल यहाँ पर नजर आते हुए दौड़ते हुए गेंद आकर रोक दी और इसी के साथ 1 रन यहाँ पर दौड़ते हुए नजर आई। और इन 1 रनों पर अब यहाँ पर रन बढ़ता हुआ 12 रन कुल मिलाकर। दर्शक अब यहाँ पर कम नजर आते क्योंकि कड़ी धूप यहाँ पर गिर चुकी है। इसी के साथ चाव में बैठते हुए इस मैच का आनंद लेते हुए पेड़ के नीचे बैठे हुए इस मैच का भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे और बहुत ही खूबसूरत नजारा इस वक्त मैदान पर इस वक्त
सिंगल्स लेते हुए नजर आए और उसी के साथ एक सिंगल्स जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 13 रन कुल मिलाकर यहाँ पर बन चुके हैं दूसरी ओवर की शुरुआती पर, यानी कि रन्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि इस वक्त जो दूसरी ओवर की शुरुआत में कम से कम मेरे ख्याल से गेंदबाजी ऐसी होना चाहिए थी कि लगभग 9 या 10 रन तक जहां पर दे, पर अब इस वक्त यहाँ पर रन से जरा बढ़ चुकी है और इसी के साथ जहां पर एक रनआउट का खतरा महसूस जरूर हुआ था बल्लेबाज को, पर अपने आप को संतुष्ट उन्होंने ग्रीज पर पहुंचाकर 1 रन वहां पर पूरे करते हुए नजर आए और इसी के साथ 17 रन कुल मिलाकर यहां पर बन चुके हैं। इस वक्त किशोर मैदान पर विकेट को रोककर बल्लेबाजी करते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मैदान पर उतरे और गेंद यहां पर गिरता हुआ के ओह क्या खूबसूरत बिंदी गेंद थी वहां पर, बल्लेबाज को जरा सा भी अंदाज नहीं हुआ गेंद किस तरीके से निकल गई, पूरी तरीके से चकमाका है वहां पर बल्लेबाज और विकेट कीपर के दस्तानों पर जाकर गेंद गिरता हुआ नजर आई और इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी, कमबैक डिलीवरी कहते हैं इसे। अगर इसी तरीके की गेंदबाज अजहर दिखाए तो शायद वहां पर रन पर जरा सा रुकावट जरूर दिखा सकते हैं और इस वक्त टपकाते हुए गेंदबाज साइलेंट सा मैदान खुले आसमान के नीचे चलता हुआ ये मैच और टर्न राउंड विकेट की दिशा पर ओह क्या नफीतुल्ला गेंद, बल्लेबाज वही बल्लेबाजी का अंदाज। ओवर की समाप्त हो चुकी है और कुल मिलाकर दूसरी ओवर की समाप्त के बाद रन आता हुआ स्कोर बोर्ड पर 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए है और जैसे कि आखिरी गेंदों पर जो बल्लेबाज किशोर थे दोनों गेंद उन्होंने एक ही दिशा की कोशिश की जिस पर उन्होंने नाकामयाब होते हुए नजर आए, बल्ले को घुमाकर एक बल्लेबाजी करने की कोशिश की। जब एक खिलाड़ी को जब पहले अटेम्प्ट पर उस कनेक्ट नहीं होता है तो खिलाड़ी को जरा रूप बदलना पड़ता है, कुछ अलग दिशा पर बल्लेबाजी करना पड़ता है, पर वो गलती होने के कारण वहां पर डॉटेड डिलीवरी होता हुआ नजर आई नेत्रावती के खिलाड़ी से और इस वक्त 2 ओवर की समाप्त हो चुकी है। अब लगभग बचा 2 ओवर इस इनिंग्स के समाप्त के लिए, कुल मिलाकर 4 ओवर की मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। इस वक्त कप्तान ने एक ऐसी गेंदबाज को चुना है गेंदबाजी करने के लिए जो अपनी बारी को संभालते हुए अजहर के बाद तीसरी ओवर की छाती पर उतर आते हुए मैदान पर जो राइट आर्म राउंड विकेट की दिशा पर गेंदबाजी करते हुए नवाज इस वक्त 3 नंबर के जर्सी पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज जाफर के लिए जाफर क्षेत्र की सजावट होता हुआ मैदान पर, हल्का सा हवा तेज चलता हुआ मैदान पर, चील कौवे उड़ते हुए और उसी के साथ बहुत अच्छे काम करते हुए स्कोर राइटर्स और कैमरामैन और एडिटर्स यहाँ पर बैठे हुए मॉनिटर्स पर और उसी के साथ गेंद गिरता हुआ बुरी शुरुआत, गेंद बहुत ही बुरी गेंद गिरी जिसका फायदा बल्लेबाजों ने उठाता हुआ नजर आए। वाइड का इशारा आते हुए अंपायर से, जहां तक वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ स्कोर पर, यानी कि 2 रन अब इस वक्त तक कुल मिलाकर बन चुकी है और यानी कि इसी 2 रन के साथ रन करीबी बढ़ता हुआ 16 रन पर आ चुकी है। 16 रन कुल मिलाकर अब तक यहाँ पर खाते पर होता हुआ तीसरी ओवर की शुरुआती पर और गेंद गिरता हुआ इस वक्त भी शायद देखना पड़ेगा, वहां पर शायद रन आउट जरूर हो सकती थी पर अंपायर शायद वहां पर 22 का रूप देते हुए बहुत ही अच्छी निर्णय बल्लेबाज को लगा कि वहां पर किशोर को कि वहां पर वाइड होगी, पर अंपायर की नजर वहां पर चुकी ठीक तरीके से नजर पर आई और कहा उन्होंने 22 का रूप इट्स नॉट वाइड और इसी के साथ वहां पर रन अब यहां पर बनता हुआ 17 रन, यानी कि 17 मेरे फेवरेट नंबर। किसको होगा खतरा देखना पड़ेगा यहाँ पर इस वक्त मैदान पर, गेंदबाज को होगा खतरा या फिर बल्लेबाज को होगा खतरा। इस वक्त गेंदबाजी पर तैयार नवाज अपनी दूसरी गेंद को लेता हुआ इस वक्त लॉफ्ट वहां पर ओहो वहां पर दास्तानों पर विकेट कीपर ने जरा सा धीमी रफ्तार की जो काम करते हुए नजर आई, जिस कारण वहां पर एक रन आउट भी छुटी और टिप कॉट भी छुटता हुआ नजर आई। 2 चांस वहां पर मिलती अगर थोड़ी तेजी वहां पर दिखाते विकेट कीपर, पर चुके इस वक्त और एक लाइफ लाइन मिलता हुआ नजर आई। क्यों इस वक्त किशोर बल्ले को पटकते हुए देखना पड़ेगा तालमेल, शायद इस वक्त भी उन्होंने गेंद को छोड़ा कि मानते हुए कि वाइड होगा पर 22 का रूप देते हुए अंपायर इस वक्त पर उन्होंने डॉट होते हुए भी रन्स को दौड़ते हुए नजर आए, क्योंकि इसी के साथ अब यहाँ पर विकेट कीपर चेंज होता हुआ नजर आए, क्योंकि वहां पर काम बहुत ही धीमी रफ्तार से होता हुआ नजर आए, जिस कारण कप्तान ने निर्णय लिया कि अब शायद
विकेट कीपर को चेंज करना पड़ेगा, जिस कारण वहां पर डॉट डिलीवरी पे भी रन जाते हुए नजर आई। उसको रोकने के लिए अब यहाँ पर विकेट कीपर चेंज हो चुका। अब गेंदबाजी पर नवाज फिर से तैयार अपनी चौथी गेंद को लेता हुआ, और चौथी गेंद इस वक्त गिरता हुआ मैदान पर घसता हुआ जमीन को लेता हुआ बल्ले को टकराते हुए गेंद गई, बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद वहां पर गिल्ली की दिशा पाई गई, जिस कारण बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरे किए और इसी के से 1 रनों पर अब 4 गेंद यहां पर फेंक चुके हैं। अब केवल बचा 2 गेंद इस ओवर के समाप्त के लिए और गेंदबाजी पर अजहर तैयार, नवाज तैयार। और इस वक्त खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही नफीतुल्ला बिंदी गेंद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए। डॉटेड डिलीवरी पूरी तरीके से बीटेड होते हुए नजर आए। किशोर इस वक्त कुछ अच्छे खास काम ना करते हुए नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा डॉटेड डिलीवरी यहाँ पर खेलते हुए नजर आए किशोर इस वक्त मैदान पर। और इस बार बल्ले को टकराए पर वहां पर खतरा महसूस होता हुआ कैच आउट के रूप पर विकेट गिरता हुआ, पहला विकेट तीसरी ओवर की गेंदों पर गिरी। बहुत ही खूबसूरत पार्टनरशिप निभाई दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर, रन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा स्कोर बोर्डों पर, और कुल मिलाकर रन्स यहाँ पर पूरे हो चुके हैं 20 रन स्कोर बोर्ड पर। जब 3 ओवर समाप्त हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्त के बाद कुल मिलाकर 20 रन यहाँ पर बन चुकी है। जैसे कि मेरे ख्याल से जो आखिरी तीसरी ओवर थी थोड़ा सा कमबैक डिलीवरी यहाँ पर नजर आई, क्योंकि ज़्यादा रन्स उन्होंने नहीं दी, पर वहाँ पर एक जो टीम के मालिक एक स्पिरिट देते हुए बल्लेबाजों को जाफर से कुछ बातचीत करते हुए नजर आए मंसूर जी। उन्होंने कहा कि टके रहे, आखिरी 6 गेंदों पर कुछ ऐसा खेल दिखा कि एक अच्छा लक्ष्य रखे जहां पर एक मुश्किलात घड़ी महसूस जरूर करना चाहिए जो विपक्ष टीम यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ फेस करते हुए। सुपरस्टार के जो खिलाड़ी इस वक्त अपनी आखिरी गेंद के ओवर की एक सजावट क्षेत्ररक्षण होता हुआ नजर आ रही है, और अंपायर गुर इकबाल को पार करते हुए नजर आएंगे जो आखिरी गेंद को लेता हुआ गेंदबाज। नए बल्लेबाज नसीर का आगमन हो चुका है मैदान पर, जो जाफर के साथ देंगे इस वक्त मैदान पर। और गेंदबाजी पर इरफान तैयार राइट आर्म और विकेट के दिशा पर अंपायर को पार करते हुए, और इसी के साथ खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, ग्राउंड शॉट थी वहां पर, फील्डर मौजूद है, यंगेस्ट खिलाड़ी, और 2 रन वहां पर दौड़ते हुए पूरे किए। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, कभी धूप कभी छाव यहाँ पर गिरता हुआ मैदान पर, यानी कि बादल सूरज के साथ खेलता हुआ नजर आ रही है, और इसी के साथ गेंद बल्ले के साथ खेलता हुआ नजर आ रही है इस मैदान पर। और इरफान और एक बार तैयार गेंदबाजी को लेता हुआ इस वक्त खूबसूरत गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहां पर नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज पर अंपायर ने इशारा करते हुए वाइड का कॉल देते हुए गोरी इकबाल जी एक ऐसे शख्स है जो दक्षिण कन्नड़ के बहुत ही एक माहिर खिलाड़ी, यानी कि उनके 16 वर्ष में मैदान पर क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे। उनका पहला टीम था शायद A1 टीम, और उसके बाद गोरी पर सेट हुए जब उनका 18 साल थी, और अब तक का करियर जुड़ता हुआ मैदान पर और अंपायर के रूप निभाते हुए, उसी के साथ खूबसूरत स्ट्रोक करता हुआ ऑफ साइड के दिशा पर जो लॉन्ग ऑफ के दिशा पर गई, और क्षेत्ररक्षण पर रुकावट, और जब तक गेंद वहां पर बॉलर के हाथों पर आए बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरे करते हुए नजर आए। 3 गेंद, और इसी के साथ खूबसूरत बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी क्षेत्ररक्षण, उड़ता हुआ क्षेत्ररक्षण करता हुए नजर आए, और बल्लेबाज भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, 2-2 रन दौड़ते हुए पूरे करे, जैसे जंगल पे चीता दौड़ता है उसी तरह वहां पर दौड़ते हुए नजर। पर वहां पर 1 शॉट, यानी कि 1 शॉट 1 रन कटेगी वहां पर, बल्लेबाज की गलती की वजह से वहां पर 1 रन माइनस होता हुआ स्कोर बोर्ड पर, जो 2 रन दौड़े कंप्लीट वेस्ट होता हुआ नजर आए, यानी कि 1 ही रन का वहां पर दौड़ लगाना सिर्फ उनको वहां पर मायना रखता हुआ इस वक्त मैदान पर 25 रन कुल मिलाकर बन चुकी है। और गेंदबाजी की चौथी गेंद को लेता हुआ इस वक्त शायद वाइड गेंद, बुरी गेंद, लेग स्टंप से दूर जाता हुआ गेंद, और उसी के साथ वाइड करार देते हुए अंपायर, और बल्लेबाज शायद उस रन को कवर अप करते हुए नजर आए, जो रन दौड़े थे वो वाइड पे यहाँ पर गेंदबाज कवर करता हुआ नजर आए। इस वक्त लॉफ्ट किया, गेंद हवे पर और सीधा सीमा रेखा के पार करता हुआ बहुत ही बड़ा चक्का, यानी कि खूबसूरत बल्लेबाजी, गेंद हवा का सफर लेता हुआ सीधा जाता हुआ स्टेडियम से बाहर। अंत ओवर पर चौथी गेंद पर जो पिटाई हुई इस वक्त इरफान की,
जो खूबसूरत पिटाई हुई, सख्त जरूरत थी जो स्पीड बढ़ाने स्कोर बोर्ड के लिए, और स्कोर बोर्ड का स्पीड यहाँ पर बढ़ चुका है। 32 रन यहाँ पर कुल मिलाकर बन चुकी है। लास्ट 2 बॉल्स रिमाइनिंग, आखिरी 2 गेंद। इरफान इरफान इस वक्त जोहाफर, ओह क्या बल्लेबाज पर कैच आउट। इस बार फील्डर ने कहा कि लॉन्ग ऑन के फील्डर ने कहा भाई इस टाइम नहीं होगा, इस टाइम मैं पकड़ लूंगा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कैच थी वहां पर, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी थी। जो निसार जो बल्लेबाज फ्रेशर बल्लेबाज उतर आए थे मैदान पर, उनकी साझेदारी अच्छी तरीके से निभाई उन्होंने। मैदान पर एक बड़ा लंबा सा चक्का लगाए, जिस कारण अब आउट होते हुए भी कह सकते हैं कि मैंने तो एक चक्का तो मारा हो, तो मुझे कोई गम नहीं है। उसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ मैदान पर, आखिरी गेंद को फेस करता हुआ इस इनिंग्स की, और 72 रन स्कोर बोर्ड पर बन चुकी है। 32 रन। आखिरी गेंदों पर किस तरीके की यहाँ पर गेंद रची जाएगी, क्या बल्ले और गेंद की तालमेल यहाँ पर दिखाई देगी या नहीं, देखना पड़ेगा। डॉटेड डिलीवरी या फिर रन्स बनाएंगे या फिर विकेट गिरेगी। आखिरी गेंद इरफान लेता हुआ, और इस वक्त गेंद रन आउट की कतर हो सकती थी, पर इरफान छुटे। लेग बाइस का रूप से यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ, और उसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ और इनिंग्स की भी समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 4 ओवर के समाप्त के बाद 33 रन यहाँ पर बन चुके एक्स्ट्राज और बल्ले से मिलता हुआ, और उसी के साथ 34 का लक्ष्य यहाँ पर रखा हुआ है। आज नेत्रावती की टीम जो विपक्ष टीम है, सुपरस्टार मल्लूर 34 रन to chase in 24 deliveries, 10 extras from score. It's like a very big target, we can say that right now for the batsmen, for superstar Mallur. They have to bat very intelligently right now in the present. Short meetings are going on. So soon after this match, we'll be playing between Team Matrix Mangalore versus Deadly Boys Kankanadi. I request both the team players as well as the captain, please report the commentary dash immediately for the signature. It's one innings, we have completed 4 overs match, so we don't have more time, shortage of time, more matches yet to play in this ground. It's an French Santinagar presents a Netravati Trophy 2022. It's on a final day. Bedra Media presenting a live telecast very well in this ground. 2 cameramen working very hard, 2 monitor mans and score writers, 2 umpires, as well as all the audience present in this ground who are enjoying this tournament. Once again, welcome to this homey ground of Faisal Nagar. We're presenting French Santinagar presents Netravati in the name of Netravati C. The Netravati Trophy presents in this ground final day. Netravati team right now enter the ground. They are splitting into their positions. Will be having a short soon after this match. Team Matrix Mangalore versus Deadly Boys Kankanadi. दोनों टीम से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द कमेंटेटरी डैश पर आइए सिग्नेचर के लिए, क्योंकि समय का आधार यहाँ पर कहीं मैच खेलना बाकी। अब इस मैदान पर खूबसूरत जर्सी के साथ इस वक्त मैदान पर सभी 11 खिलाड़ी उतर चुके हैं। नेत्रावती टीम से अपने अपने जगह लेते हुए क्षेत्र रक्षण की, और 2 आरंभिक बल्लेबाज का भी आगमन मैदान पर बातचीत होता हुआ मैदान पर धीमी धीमी कदम बढ़ाते हुए ग्रीस स्ट्राइकर ऑन जोन और नॉन स्ट्राइकर ऑन जोन का स्थान लेते हुए नजर आएंगे। और इसी के साथ 2 एम्पायर्स हमारे साथ जुड़े हुए। मेन एम्पायर पर अनीफ बजल, स्क्वायर लेग एम्पायर पर इकबाल गोरी इस वक्त तक काम करते हुए इस मैच का। जैसे कि यहाँ पर मैच चलता हुआ दूसरी इनिंग्स की शुरुआत हो रही है। इसी मैदान पर डेडली बॉयज कंकनाडी का जर्सी इनॉग्रेशन होता हुआ नजर आ रही है। ठीक कमेंटेटरी के पीछे यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होता हुआ डेडली बॉयज कंकनाडी के जर्सी सेरेमनी के साथ मैच का शुरुआत होते हुआ 3, 2, 1। और इसी के साथ गेंद यहाँ पर फेंकने के लिए तैयार हो चुके हैं पहली स्ट्राइकर गेंदबाज शाहनवाज, और बल्लेबाजी करते हुए सुपरस्टार
मल्लूर के दो आरंभिक बल्लेबाज, स्ट्राइकर ऑन जोन पर पच्चू और नॉन स्ट्राइकर ऑन जोन पर अजहर। टीम मैट्रिक्स और डेडली बॉयज जल्द से जल्द यहां पर आइए सिग्नेचर के लिए। और इस वक्त मैदान पर खामोशी छाई हुई है, कड़ी धूप गिर चुकी है। गेंदबाज गेंद को टपकते हुए अनीफ को पार करते हुए पहली गेंद लॉफ करता हुआ, गेंद हवा पर सीमा रे करीबी कैच आउट, यानी पहली गेंद पर विकेट। विजिल के गुंजात यहां पर सुनता हुआ मैदान पर जब कैच आउट यहां पर गिरता हुआ लॉन्ग ऑफ के दिशा पर। इस वक्त शायद मंसूर बहुत ही खुश नजर आते हुए तालियों से गेंदबाज और फील्डर का एक तारीफ करते हुए नजर आ रहे। बहुत ही अच्छी गेंद उन्होंने लगाई इस वक्त और क्षेत्ररक्षण भी अच्छी तरीके से। बल्लेबाज एक जैसे शुरुआती गेंद पर एक चक्का लगाने की कोशिश की है, जैसे हमेशा इंटरनेशनल टीम पर जब पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जब ओपनिंग पर जब उनकी हमेशा ये उम्मीद रहती है कि पहली जब गेंद होती है कि चक्का लगाए, उनका एक टीम स्पिरिट रहता है। इसी तरह उन्होंने कोशिश की बच्चों ने, पर वहां पर विकेट डकआउट होते हुए नजर आए, लौट चुके प्रेविलियन पर और उसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका मैदान पर। नौशाद इस वक्त नौशाद बड़े हिटर और सिमर जरा सा चुके वहां पर रोकने की कोशिश की, जैसा जान वैसा हरकत वाली शॉट यहां पर दिखाते हुए नजर आए। नौशाद इस वक्त डैमेज यहां पर होता हुआ नजर आए क्षेत्ररक्षण के ओर के लॉन्ग ऑन के दिशा पर, जो क्षेत्ररक्षण दो जरूर लगाए पर गेंद को रोक नहीं पाए। 4 रन बाउंड्री के साथ यहां पर शुरुआत होता हुआ कांटे पर, इसी के साथ 4 रन की शुरुआती नौशाद के बल्ले से आता हुआ। खूबसूरत बल्लेबाजी, खूबसूरत कड़ी जवाब पहले विकेट लेने का यहां पर देते हुए नौशाद। इस वक्त और एक बार बल्ले को पटकते हुए बल्लेबाज, गेंद को पटकते हुए गेंदबाज और गेंद गिराते हुए इस वक्त बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। वहां पर गेंदबाज गेंद को रोके बैकअप करने के लिए, गेंदबाज दौड़ते हुए आए पर जब तक वहां पर गेंद बॉलर के हाथों पर गेंद आई, वहां पर बल्लेबाज 1 रन चुराते हुए नजर आए और उसी के साथ 5 रन कुल मिलाकर यहां पर बन चुकी है। तटियाड़ के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यहां पर क्षेत्ररक्षण सजाते हुए नजर आए। मंसूर रियाज इस वक्त नजर आते हुए मैदान पर बैकअप करने के लिए दौड़े। लेग बाइस के रूप से यहां पर अनीफ इशारा करते हुए अंपायर लेग बाइस का रूप से 1 रन मिलता हुआ 6 रन कुल मिलाकर पहली ओवर की शुरुआती पर। गेंद अब तक 4 गेंद यहां पर फेंक चुके, 2 गेंद अब केवल बचा इस ओवर के समाप्त के लिए। शाहनवाज गेंदबाजी पर तैयार नौशाद के लिए, जो जोरों से बल्ले को पटकते इंतजार कर रहे इस गेंद की। देखना पड़ेगा इस बार किस तरीके की तालमेल यहां पर रची जाएगी। और गेंद 5वीं गेंद गिरता हुआ, ओह शायद ऐसा लगा कि गोल्फ का बल्ला उठाया नौशाद ने, और पर ठीक तरीके से कनेक्ट ना ही, वहां पर सीधा वहां पर गेंद बल्ले की बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद तटियाड़ के जो विकेट के करीबी घूमता हुआ नजर आए और उसी के साथ 1 रन दौड़ते हुए नजर आए और 1 रन पूरे होते हुए और 7 रन कुल मिलाकर बन चुकी है। 1 विकेट गंवाने के बाद सुपरस्टार मल्लूर इस वक्त मैदान पर। कंप्लीट साइलेंट मैदान, यहां पर सिर्फ जनरेटर की आवाज सुनाई देते हुए, हवा भी हल्का सा चलता हुआ, जरा सा सूरज की किरणें भी हट चुकी है मैदान से। तो समय बचकर घड़ी पर करीबी 2 बजता हुआ, 4 मिनट कम 2 के लिए। और राशिद वहां पर गेंद का चुनाव होता हुआ नजर आ रही है। लाइव टेलीकास्ट होता हुआ बिद्रा मीडिया के जरिए से इस मैदान पर, फैजल नगर के मैदान पर, जहां पर फ्रेंड्स शांति नगर प्रेजेंस नेत्रावती ट्रॉफी पर चलता हुआ डेडली बॉयज कंकनाडी का जर्सी इनॉग्रेशन चलता हुआ ठीक इस मैदान पर।
फिर से मैदान पर धूप यहाँ पर गिर चुकी है, जो बादल सूरज को कवर की थी वो हट चुकी है। और विनती करूंगा अंपायर्स और खिलाड़ियों से जल्द इस मैच को आगे बढ़ाए, और दर्शकों से विनती करूंगा बाउंड्री लाइन से हटके इस मैच का आनंद ले। और जैसे कि गेंद अब सिर्फ बचा एक, आखिरी एक गेंद यहां पर बचा हुआ है। शाहनवाज गेंदबाज के रूप लेते हुए आखिरी बार राइट आर्म राउंड द विकेट के दिशा पर बल्लेबाज इस वक्त अजहर। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर देखी, बल्ले की वहां पर एक कनेक्शन होता हुआ नजर आई, जिस कारण एक रन दौड़ते हुए पूरे होता हुआ। इसी के साथ ओवर की समाप्त हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्त के बाद रन जाता हुआ लगभग 8 रन। जैसे कि पहली इनिंग्स पर भी देखा गया था कि जब अशरफ गेंदबाजी की थी पहली ओवर पर उन्होंने 8 रन दी थी, वही रिपीट होता हुआ इस वक्त दूसरी इनिंग्स पर जहां पर नेत्रावती की यहां पर होता हुआ शाहनवाज की गेंदों पर जो पहली ओवर पर 8 रन देता हुआ नजर आए। और लगभग 34 का लक्ष्य यहां पर रखा हुआ है। और इस वक्त कठिन जरूर होगी गेंदबाजों को अगर इस मैच को अगर ठीक तरीके से वहां पर नहीं पकड़ पाएंगे तो, क्योंकि मैच का हालात कभी भी पलट सकता है। कभी कभी जीतने वाला टीम हारता है और हारने वाला टीम जीतता है। और इस वक्त कौन सी टीम जीतेगी इस बहुत ही सवाल उठता हुआ सभी के मनों पर। जैसे कि व्यूवर्स भी बैठे हुए बेदरा मीडिया के जरिए से जो मैच देख रहे, जो शायद इंडिया से बाहर सऊदी अरेबिया और दुबई ऐसे कई शहरों कई कंट्रियों से मैच को और देखते हुए नजर आ रहे, और वो भी यही सोचते होंगे कि कौन सा टीम इस मैच का विजेता पाएगा, कि सुपरस्टार मल्लूर इस टीम को जीतेगा या फिर नेत्रवती इस मैच को जीतेगा। कुछ सवाल उठते हुए क्षेत्र रक्षण की भी सजावट होते हुए मैदान पर दिखता हुआ। लगभग 1 मिनट बचा हुआ 2 बजने के लिए घड़ी पर, और दूसरी ओवर की शुरुआत होता हुआ अंपायर गोरी इकबाल को पार करता हुआ दिस्ती हसन इस वक्त तक गेंदबाजी पर बहुत खूबसूरत नाम दिस्ती हसन इस वक्त राइट आर्म और विकेट की दिशा पर पहली गेंद को लेता हुआ स्ट्रोक की बहुत ही खूबसूरत तालमेल बल्ले और गेंद की नजर आई। वहां पर गेंदबाज ने मिड रीजन पर गेंद को रोक दिया और वहां पर 1 रन मिलेगी। और अप्रिशिएट करता हुआ नजर आ रहे खिलाड़ी एक दूसरे को यहाँ पर इस वक्त मैदान पर तालियों से कहा कि अच्छी क्षेत्र रक्षण थी, अच्छी गेंदबाज थी। इसी तरीके की एक गेम स्पिरिट यहाँ पर दिखता हुआ इस वक्त मैदान पर, क्योंकि गेंद खेल एक ऐसी खेल होती है कि जीत और हार के बीच एक दोस्ती की संबंध जरूर यहाँ पर रहती है। कभी कभार जब विपक्ष टीम एक ऐसी दोस्त बल्लेबाजी पर करते हुए नजर आता है, इस वक्त शायद बुरी गेंद, इस वक्त ऐसी गेंद की सख्त जरूरत नहीं थी गेंदबाजों को, वाइड का इशारा देते हुए अंपायर, और 1+1 रूप मिलता हुआ। और इसी के साथ 2 रन जुटा हुआ स्कोर बोर्ड पर 11 रन कुल मिलाकर यहाँ पर बन चुकी है। दिस्ती हसन डिडली बॉयज कंकनाडी की यहाँ पर जर्सी लॉन्चिंग होता हुआ नजर आ रही है। एक खूबसूरत मंजर इस वक्त जर्सी लॉन्चिंग होता हुआ नेत्रावती ट्रॉफी पर, और उसी के साथ बुरा गेंदबाज का भी मंजर देखने मिलेगी, क्योंकि वहां पर इस वक्त ऐसी गेंद की सख्त जरूरत नहीं थी दिस्ती हसन को, क्योंकि लगातार वाइड पे वाइड गिरता हुआ नजर आई, और जिस कारण 3 एक्स्ट्राज मिले और रन पर भी तब्दीली होता हुआ कुल मिलाकर अब यहाँ पर बन चुकी है 12 रन यहाँ पर बन चुके दूसरी ओवर की शुरुआती पर। और गेंदबाजी पर दिस्ती हसन इस वक्त कड़ी के ऊपर फ्राई होते हुए और गेंद को टप्पा खाते हुए अंपायर इकबाल को पार करते हुए इस वक्त बल्ले को जोर से पटकते हुए लॉक करने की कोशिश, बल्ले की बाहरी किनारे लगते हुए पीछे की ओर दिल्ली के दिशा जो विकेट कीपर के दास्तानों से चुपता हुआ, और स्लिपर गेंद को रोक दिया गया है, जहां पर 1 रन दौड़ते हुए पूरे किए। इसी के साथ 13 रन कुल मिलाकर यहाँ पर बन चुकी है, और 13 रन के साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे दक्षिण कन्नड़ के दिग्गज कमेंटेटर्स भी जुड़ते हुए अगले मैचों को लेते हुए टीम मैट्रिक्स मैंगलोर के बीच और दिल्ली बॉयज के कनाडी के बीच जो खूबसूरत आवाज के साथ मनोरंजन आपको दिखाल करते हुए नजर आएंगे। वाइड का इशारा फिर से यहाँ पर आते हुए, और
वाइड का इशारा यहाँ पर मिलता हुआ, फिर से 14 रन यहाँ पर कुल मिलाकर बच गए बहुत ही बुरी, यानी कि अब शायद मेरे ख्याल से दूरी 20 रन की इस मैच को जीतने के लिए, लगभग 20 रन की फासला अब इस मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी कुछ ज़रा अच्छा सा काम नहीं करते हुए नजर आ रहे गेंदबाजी इस वक्त दिस्ती असन्ना, इस वक्त कम बैक डिलीवरी बीचों बीच लाइन एंड लेंथ वहाँ पर रखा, उंगली उठी अपीलिंग जरूर किए पर स्क्वेयर लेग अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज रीच हो चुके हैं वहाँ पर क्रीज पर, तो विकेट वहाँ पर नहीं गिरेगी, डॉटेड डिलीवरी यहाँ पर माना जाएगा। अच्छी नाफितुल्ला बिंदी कम बैक डिलीवरी कहते हैं इसे। अब केवल बचा गेंद इस मैच को, इस ओवर को समाप्त करने के लिए तीन गेंद बचा इस ओवर की समाप्त के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. जी हाँ, धन्यवाद सतीश जी। जैसे कि डेडली और टीम मैट्रिक्स जल्द से जल्द रिक्वेस्ट कर रहे कि आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर यहाँ पर पूरे करें। वाइड का इशारा फिर से, बहुत ही बुरी शुरुआत थी दिस्ती हसन से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रही है। जो टीम को जो उम्मीद थी दिस्ती हसन से, उस उम्मीद से तर हटते हुए नजर आ रहे, और शायद वहाँ पर मंसूर भाई भी जरा सा नाखुश होते हुए देखना पड़ेगा। शायद एक कैचअप का रुख जरूर थी दास्तानों पर जरा सा कंफ्यूज होते हुए नजर आए। जरा सा बल्ले की बाहरी किनारा लगता हुआ, और इसी के साथ 15 रन कुल मिलाकर बन चुकी है। 19 रन की दूरी इस मैच को जीतने के लिए सुपरस्टार मल्लोर इस वक्त पूरी दमदार कोशिश करता हुआ मैच को जिताने के लिए। बल्लेबाज नौशाद जो दमदार शॉट रखने वाले खिलाड़ी इस वक्त फेस करता हुआ दिस्ती हसन, बहुत ही खूबसूरत गेंद वहाँ पर बल्लेबाजी फेस करता हुआ, और वहाँ पर देखो अच्छी क्षेत्ररक्षण होता हुआ नजर आए। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को, और इसी के साथ अब केवल बचा गेंद इस ओवर की समाप्ति के लिए। लास्ट वन मोर बॉल लेफ्ट कम टू दिस ओवर, आखिरी एक गेंद यहाँ पर बचा हुआ है, और कुल मिलाकर 16 रन यहाँ पर बन चुकी है, और करीबी यहाँ पर खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन करता हुआ ओवर की समाप्त हो चुकी है। और 17 रन कुल मिलाकर यहाँ पर बन चुकी है। 17 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। बहुत ही बुरी ओवर इस वक्त तक गिरता हुआ मैदान पर, कुल मिलाकर उन्होंने 9 रन दी यहाँ पर इस ओवर पर, ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्राज देते हुए नजर आए, जिस कारण एक मुश्किलात गड़ी, जिस वजह से वहां पर एक मुश्किलात घड़ी जरूर फेस होना पड़ेगा आखिरी ओवरों पर, क्योंकि लगभग दूसरी ओवर पर 9 रन देना यानी कि बहुत ही एक डैमेज फील जरूर होगी मैट्रिक्स को, पर कमबैक डिलीवरी यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा जो आने वाले 2 ओवर जो फेंकने वाले गेंदबाज रहेंगे। इस वक्त तीसरी ओवर की छाती पर गेंदबाज उतरा मैदान पर। अजीज एक अजीजदार गेंदबाज जरूर दिखाना पड़ेगा अगर इस टूर्नामेंट में टिकना हो तो, क्योंकि लगभग दूसरी ओवर आपको भी पता है कि बहुत बुरी तरीके से ओवर गिरी, और मैदान पर 2 आरंभिक ऐसे बल्लेबाज मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी की प्रदर्शन दिखाते हुए। अजहर और नौशाद बहुत ही अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सुपरस्टार मल्लूर से एक पुराने एक्सपीरियंस कैंपेनर इस खिलाड़ी इस टीम के जो खेलते हुए इस वक्त मैदान पर। अजहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए तीसरी ओवर की पहली गेंद को लेता हुआ, गेंद वहां पर पहली गेंद गिरता हुआ। अजीज की दौड़, बहुत ही लंबे दौड़ लेके अनीफ को पार करेंगे, हाथों से गेंद चिरता हुआ, गेंद पटकते हुए लंबे पटकता, यानी कि कम से कम 10-12 बार पटक चुके हैं गेंद और दौड़ ले चुके, और गेंद को गिराए। ओह बहुत ही खूबसूरत गेंद, जोरदार अपील होता हुआ नजर आए LBW के लिए, पर वहां पर लेग बाइस का इशारा देते हुए अंपायर इस वक्त अनीफ काम करते हुए मेन अंपायर पर, और कुल मिलाकर 17 रन को पार करता हुआ 18 रन यहाँ पर कुल मिलाकर बन चुकी है, और पावर प्ले भी खत्म हो चुका है, और क्षेत्ररक्षण लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड रीजन मिड पॉइंट पर सभी खिलाड़ी यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रही है, और 30 यार्ड के अंदर
लगभग कुछ 5-4 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद और गेंदबाजी गेंद पटकते हुए अंपायर अनीफ को पार करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हवा चलता हुआ विकेट कीपर शायद हवा से विकेट वहां पर बेल से गिरता हुआ नजर आए, जिससे वहां पर टिक होता हुआ किशोर की तरफ से वहां पर जो मैट्रिक्स के खिलाड़ी विकेट कीपर इस वक्त दास्तानों पर काम करते हुए और गेंद दूसरी गेंद को लेता हुआ गेंदबाज तैयार। इस वक्त अजीज आगे आके खेलने की कोशिश की, डॉटेड डिलीवरी कंप्लीटेड। नफीतुल्लाह बिंदी गेंद कम बैक ओवर कह सकते हैं इसे। अगर इसी तरीके की गेंद गिरेगी तो शायद वहां पर कम बैक कर सकते हैं रन्स पर मैट्रिक्स। जैसे कि अगला मैच यहां पर खेला जाएगा टीम मैट्रिक्स के बीच और डेडली बॉयज के बीच। रन्स यहाँ पर गिरता हुआ बहुत ही खूबसूरत कोशिश वहां पर लॉफ करने की कोशिश, रन आउट की खतरा हो सकते थे पर महसूस जरूर की वहां पर नौशाद ने, पर जल्द से जल्द उन्होंने ग्रीस पर अपने आप को संतुष्ट पहुंचा दिया और 19 रन पर आकर रुकावट स्कोरबोर्ड पर। 19 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 valuable balls of a third over on the progress. Remaining 3 more deliveries left to complete this over. Third over on the progress. We can see the setup of fielding lineup. It's completely very good right now. Very good weathers. I can say that it's very hot as well as lightly the hay weather. We can see the flying flags around the grounds and beautifully delivery has been spelled. But I think this is a very bad delivery. It's far from a region and goes for the wide. Declared by the umpire Anif. So this delivery was not important right now to bowler Aziz. He shouldn't have faced such kind of delivery at this moment when there is a chance of losing in this match. And Aziz इस वक्त और एक बार तैयार अपनी चौथी गेंद को लेता हुआ। इस वक्त अच्छी गेंद बहुत ही खूबसूरत गेंद। बॉल सेज यू मिस इट आई हिट इट, सीधा जाकर विकेटों को जाके टकराई जो अजहर का यहाँ पर खात्मा होता हुआ नजर आए, क्योंकि बहुत ही लंबे अर्स तक क्या मैदान पर टिके रहे। खूबसूरत तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने दिखी, टिके रहे और लगभग उन्होंने शायद मेरे ख्याल से 4 रन उन्होंने बनाया अपने खातों, 7 रन शायद 4 रन उन्होंने बनाया, 7 गेंद उन्होंने शायद खेले और अब नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका मैदान पर जो अजहर का जगह लेते हुए नजर आएंगे और कुल मिलाकर 20 रन शायद यहाँ पर बन चुके। केवल 14 रन की दूरी इस मैच को जीतने के लिए। 14 more runs required to win this match in remaining in remaining 8 deliveries. 14 more runs required to win this match. So we have a new man enter the ground. Darshan with the 00 जर्सी नंबर अपने दर्शन करते हुए इस मैदान पर नए खिलाड़ी दर्शन उतर आ चुके हैं मैदान पर और गेंदबाज अजीज की गेंद दर्शन के कदमों पे जाकर गेंद टिकेगी। अब जहां पर कमेंटेटरी के अंत से गेंद जो छूटेगी सीधा दर्शन जो फ्रेश बल्लेबाज है उनके कदमों पर करीबी बल्ले के आसपास किस तरीके की तालमेल यहाँ पर रची जाएगी देखना पड़ेगा। बल्ले और गेंद की हल्का सा धूप, हल्का सा छाव गिरता हुआ मैदान पर, हल्का सा हवा लहराते हुए झंडे हरे भरे पेड़ के साथ खुले आसमान के नीचे है। ओ क्या खूबसूरत गेंद, मिडल विकेट स्वीप करने की कोशिश की बल्लेबाज, उल्टे बल्ले की इस्तेमाल करने की कोशिश की, पूरी तरीके से चकमा खाए, मिड विकेट को जाके चूमता हुआ नजर आया। यानी कि अब इस वक्त वहां पर हैट्रिक चांस का खतरा, हैट्रिक चांस का खतरा, यानी कि दर्शन का गेंदबाज पूरी तरीके से दर्शन विकेट पे होता हुआ नजर आए, चूमता हुआ नजर आए। बहुत ही अच्छी इंटेलिजेंट गेंदबाजी यहाँ पर इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीजदार गेंदबाज, जैसे शुरुआती ओवर होते हुए मैंने कहा था कि अब अजीजदार गेंदबाजी करना चाहिए, वही गेंदबाजी यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रही है। आखिरी गेंद और हैट्रिक चांस, क्या यहाँ पर हैट्रिक हो सकता है आखिरी गेंदों पर? क्या यहाँ पर तालियों और विजिलों का गुंजाट होगी आखिरी गेंदों पर? बल्लेबाज इरफान इस वक्त बहुत लंबे ऊंचे हत्ते कट्टे से एक खिलाड़ी इस वक्त इंतजार कर रहे आखिरी गेंद हैट्रिक का फेस करते हुए
और आगे की खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रू की दिशा पर गेंद को रोकने की कोशिश पर चुके इस वक्त बल्ले की बाहरी किनारा लगता हुआ गेंद, एच होता हुआ गेंद 30 यार्ड के अंदर ही गेंद को रोक दिया गया था। एक रन खाते पर जुटता हुआ इरफान की इस वक्त, और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्त हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्त के बाद 21 रन यानी कि 21 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 वैल्यूएबल ओवर्स, रिमेनिंग 6 वैल्यूएबल बॉल्स। आखिरी 6 गेंद, और इन आखिरी 6 गेंदों पर लगभग मेरे ख्याल से 13 रन की जरूरत था। इन बचे हुए कुछ ही 6 गेंद और 13 रन का फासला, यानी कि जमीन और आसमान का फासला तो नहीं कह सकते, मुश्किल भी होगी और आसानी भी होगी। अगर बल्लेबाज कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए तो यहाँ पर शायद मैच थोड़ा सा एक फाइट बन सकता है। अगर एक छोटी गलती, गेंदबाज अगर एक छोटी गलती करे तो यहाँ पर पूरी तरीके से मैच बैटिंग टीम को जाएगी। अगर बल्लेबाज गलती करे तो सीधा मैच बॉलिंग टीम के हाथों पर। और देखो, जो मैंने कहा गलती ना करे, उसी गलती को दोहराते हुए पहली गेंद पर नसीर गेंदबाजी पर बुरी शुरुआती, इस वक्त कम बैक, ओहो बल्ला आसमान का सफर लेता हुआ नजर आए, हाथों से चुटता हुआ बल्ला सीधा स्क्वायर लेग एम्पायर के करीबी। बहुत ही अच्छी नसीब थी स्क्वायर लेग एम्पायर की, अगर थोड़ा तेज निकल तो शायद सर जरा फट सकती थी और बचे इस वक्त, और पर इरफान नहीं बच सके क्योंकि वहां पर विकेट गिरता हुआ नजर आए। इरफान जैसे बल्लेबाज की हट्टे गट्टे जरूर थे, पर हाथों से बल्ले छुटी, पर गेंद विकेटों को चूमता हुआ नहीं छुटी, क्योंकि जो शुरुआती की थी नसीर ने बुरी ओवर से, जो वाइड फेंकता हुआ उसको कम बैक करते हुए नजर आए, विकेट लेता हुआ। बहुत ही खूबसूरत था ओवर, यहाँ पर कम बैक डिलीवरी। जैसे कि 2 टीम के कप्तान, टीम मैट्रिक्स मैंगलोर के कप्तान और डेडली बॉयज कंकनाडी के कप्तान, आखिरी फाइनल कॉल टॉस सेरेमनी के लिए। जल्द से जल्द अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच चुकी है तो जल्द से जल्द यहाँ पर कमेंटेटर डैश पर आइए। टॉस रेफरी यहाँ पर आपका इंतजार करते हुए टॉस के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर का यहाँ पर इनिंग्स चलता हुआ इस मैच की, और लगभग सिर्फ बचा 5 गेंद और समय बहुत कम। अभी भी कहीं मैच यहाँ पर खेलना, फाइनल्स लगभग 6 बजे के अंदर अगर फाइनल्स खत्म होगा तो बहुत ही अच्छा मैच आज का दिन चलेगा, क्योंकि जब सूरज अपना समय बदलता है तो यहाँ पर अंधेरा छा जाती है, और अंधेरा छाई तो यहाँ पर गेंद देखने में मुश्किलात जरूर होगी। तो जल्द से जल्द सभी टीम्स पे क्रिकेटर से विनती करूंगा, स्पिरिट दिखाए कि जल्द से जल्द इस मैच को खत्म करे और फ्रेंड्स शांति नगर को साथ दे इस खूबसूरत टूर्नामेंट का आज का दिन का फाइनल अच्छी तरीके से खत्म करने के लिए। जो नेत्रवती ट्रॉफी चलता हुआ 2022 आज का आखिरी दिन चलता हुआ इस मैदान पर, और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत मैच भी चलता हुआ, रोमांचक घड़ी, पूरी तरीके से प्रेशर बिल्डअप होता हुआ दोनों टीम को। यहाँ पर बल्लेबाज भी और गेंदबाज भी, जैसे पॉपकॉर्न प्रेशर कुकर पर कुक होता है, उसी तरह इस वक्त सभी खिलाड़ी कुक होते हुए नजर आ रहे हैं मैदान पर। It's a final call for Team Matrix. I request please the captain report immediately for the commentator dash for the toss ceremony. And here फिर से और एक बार गेंद, शायद गेंद जमीन को गसता हुआ, धूल को उठाता हुआ बल्लेबाज को लगा वाइड होगी, पर वहां पर डॉटेड डिलीवरी गिरता हुआ नजर आए। खूबसूरत गेंदबाजी, डॉटेड डिलीवरी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आए। नसीर इस वक्त गेंदबाजी पर तीसरा गेंद लेता हुआ आखिरी ओवर की इस मैच की। इस बार देखो, इस बार अजीबो गरीबो आशा होता हुआ नजर आए, वाइड का इशारा, बुरी गेंद, बहुत ही बुरी गेंद, शायद वहां पर वाइड +1 यहाँ पर मिलता हुआ, और उसी के साथ रन पूरे होते हुए 24, यानी कि 24 रन ऑन द स्कोर बोर्ड, 24 runs coming in the scoreboard. Last 4 more balls left to come to this over, and 10 more runs required to win this match. In 4 deliveries, 10 more runs required to win this match. One big shot,
required from batsman Naushad right now present, taking in the pressure. Movement for deliveries, 6-10 more runs required in this match. Very high voltage match, we can say that right now. Nasir, it's a beautiful delivery. It was showing as if it is gone for the wide delivery, but it was coming inside Willie, but it's a tactics deliveries, we can say that. It's a confused for the batsman, but this time it's a back delivery. It's a very bad delivery. It wasn't required, but they had a profit too. They had to lose a damage, but they had a profit too by getting a wicket right now in this ground. But it's a wide delivery. Umpire was showing, but I was knowing that it was a wide delivery, but I had to reply to the umpires too. And it's a run coming in the scoreboard is 25 काम 25 यानी कि 25 runs on the scoreboard right now in the scoreboard. देखना पड़ेगा किसका काम यहाँ पर 25 होता है. मैट्रिक्स का काम 25 होगा या फिर सुपरस्टार मल्लूर की यहाँ पर काम 25 होता है. देखना पड़ेगा. इस वक्त 3 गेंद और 9 रन की जरूरत. मैट्रिक्स के कप्तान जल्द से जल्द यहाँ पर आइए. लगभग 3 कॉल्स आपको दे चुके हैं. यहाँ पर टॉस डालते डालते भी मैच का आनंद ले सकते हैं. 3 गेंद 9 रन की जरूरत. प्रति गेंद 3 रन. इस वक्त अच्छी गेंद डॉटेड डिलीवरी. सख्त जरूरत इस वक्त नौशाद को एक बड़े चक्के की जरूरत. अगर इस मैच का एक फाइट पर रूप पर लाना है तो एक बड़ी सख्त चक्के की जरूरत. क्या नौशाद लगा पाएंगे? आगे की खेलने की कोशिश पर विकेट गिरता हुआ नजर आए. अब पूरी तरीके से मैच नेत्रावती के हाथों पर जाता हुआ. मैच का बाजी पलट चुका है. अब केवल बचा आखिरी एक गेंद और 9 रन की जरूरत. चमत्कारी बचा सकता है सुपरस्टार मल्लूर को, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी खेल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है. किसी वक्त कौन सा भी हाल यहां पर ले सकती है. इस वक्त गेंदबाज एक बहुत ही खूबी से कमबैक डिलीवरी करना पड़ेगा. 1 गेंद 9 रन. अब कह सकते हैं जमीनों आसमान का फासला, पर नामुमकिन नहीं है. एक गलती, वाइड, नो बॉल, 6 छक्का, कुछ भी लग सकता है, क्योंकि क्रिकेट है मेरे भाई. यहां पर कुछ भी हो सकता है. 1 गेंद और 2 बल्लेबाज. यहां पर मुकाबला चलता हुआ 11 खिलाड़ियों के बीच इस वक्त मैदान पर. आखिरी गेंद गिरता हुआ. शायद वहां पर गेंद को माना नहीं जाएगा. बल्लेबाज शायद रेडी ना रहे वहां पर. सो डेड बॉल. आखिरी गेंद अभी भी जारी इस वक्त मैदान पर. 1 गेंद 9 रन. और इसके बाद यहाँ पर एक जीत की मनोरंजन देखने मिलेगी इस आखिरी गेंद के बाद. और आखिरी गेंद गिरता हुआ. ओह, बुरी गेंद, बहुत ही बुरी गेंद. इस वक्त ऐसी गेंद की जरूरत नहीं है. जो आखिरी गेंदों पर ऐसी गलती करना यानी कि जरा सा डैमेज जरूर ला सकते हैं, क्योंकि अब चाहिए 1 गेंदों पर 8 रन की जरूरत इस वक्त मैदान पर. और जैसे कि मैच का भी अंत होता हुआ नजर आ रही है. 2:20 होता हुआ घड़ी पर, और लाइव टेलीकास्ट भी होता हुआ बिद्रा मीडिया के जरिए से. इरफान और उनके टीम बहुत अच्छे काम करते हुए. फ्रेंड्स, शांतिनगर प्रेजेंस नेत्रावती ट्रॉफी 2022 चलता हुआ. और इस वक्त नेत्रावती फ्रेंड्स के बीच और सुपरस्टार मल्लूर के बीच चलता हुआ ये मैच. आखिरी गेंद और 8 रन. खामोशी छाई हुई है मैदान पर. नसीर गेंदबाजी पर. और इस वक्त गेंद गिरती हुई है. जमीन गस्ता हुआ गेंद सीमारा की करीबी गेंद को. और मैच का समाप्त होता हुआ. इसी के साथ नेत्रावती फ्रेंड्स इस मैच को जीतते हुए. कंग्रेचुलेशंस नेत्रावती फ्रेंड्स, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर मैचेस. सुपरस्टार मल्लूर, बहुत ही अच्छी मैच थी.
मैच का समाप्त हो चुका है। बहुत ही अच्छी खेल यहाँ पर दिखाए। तो आगे की आंखों दिकाल अगले मैच को लेता हुआ टीम मैट्रिक्स मैंगलोर के बीच और डेडली बॉयज कंकनाडी के बीच खेला जाएगा। जब ये दो टीम मैदान पर आए, मैन ऑफ द मैच का हकदार नासिर को बुलाना चाहूंगा। सुपर नेत्रवती फ्रेंड्स के नासिर, मैन ऑफ द मैच का हकदार आपको मिलता हुआ इस वक्त। कंग्रेचुलेशंस। और टॉस होता हुआ इस मैदान पर और आगे की आंखों दिकाल हमारे साथ जो दक्षिण कन्नड़ के एक बहुत ही खूबसूरत सुरीली आवाज जो कमेंट्री की एक अगर मैदान पर या मोबाइल पर बैठे तो एक खूबसूरत मजा मिलती है। जैसे बॉलीवुड पर दो ऐसी जोड़ी थी जो करण अर्जुन की, और उसी तरह अंडरआर्म क्रिकेट पर एक ऐसी जोड़ी जो मेरी फेवरेट जोड़ी सतीश गोपी की, और बहुत ही खूबसूरत मनोरंजन। धन्यवाद सतीश गोपी जी, आप इस मैदान पर मौका दिए इस मंच पर बैठने के लिए, और सामने की आंखों दिकाल दोनों को स्वागत करना चाहूंगा इस मैच पर। धन्यवाद, और सभी दर्शकों को और सभी खिलाड़ियों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू। Request Nasir, please come here for the toss. For the man of the match winner, the man of the match winner of the previous match, Nasir of Netravati. Please come and collect your man of the match. Nasir, ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡದ ನಾಸಿರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆತಿಫ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತಿಫ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ Mangalore, will going to present the man of the match award to Nasir of Netravati Friends Shanti Nagar. Congratulations. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಪೈರ್ ನಾಸಿರ್ ಅವರು ನಾಣಿಜಿಮೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಪೈರ್ ನಾಸಿರ್ ಬಜಾಲ್.
ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. Welcome back and match number 4 of day number final of this prestigious cricket tournament. Team Matrix Bangalore takes on Deadly Boys Kankanadi. Please note the 4 overs match, 1 hour going to be a power play, and where you can keep 2 fielders outside the circle. And after winning the toss, captain of Team Matrix, no hesitation in his mind to elected to field first. And thank you very much, Arafat, and for your wonderful voice in the previous match, and for your word of complimentary. And definitely it's going to be a biggest honor for us. And thank you very much, and all the best for the future. And now coming back to this match as a Team Matrix Mangalore and Deadly Boys Kankanadi, the both is a very good teams is taking part in this tournament, Netravati Trophy 2022, clashing each other in the first match of this final day of cricket tournament. Last match of the first round, and Team Matrix versus Deadly Boys Kankanadi. The 4 overs match, please don't waste the time. Request opening batsman, please come here immediately. Opening batsman, please go for the bat immediately without wasting a time. At the same time, I request Jolly Friends Nanturu and Young Friends Memar, please report here immediately for the next match. Jolly Friends Nanturu ಹಾಗೂ Young Friends Memar ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. So here you go, the opening batters walking towards the middle. It's one and only the hard hitter of the ball, Altaf Falpadi, is walking towards the middle. Along with him, Latif, one more very good striker of the ball, is just fast walking towards the middle for Deadly Kankanadi. Deadly Kankanadi, one of the reputed team in Kankanadi, and they got a reputation of organizing a wonderful cricket tournament last year in UCG cricket ground in the name of Deadly Trophy and the Deadly Premier League, which is successfully organized at UCG cricket ground. And of course Atif is now the present captain of NM Cricketers Mangalore, who is started his career by playing for Deadly Kankanadi. I still remember him when he was very young. He's represented for Deadly Kankanadi, the tournament which is played at Urva Cricket Ground. I think it's the MPL, and he just grabbing the opportunity to showcase his talent, and afterwards he never looked back, and now he becomes one of the best all-rounder of the South Kent district, and leading one of the reputed team NM Cricketers Mangalore. Here is the first ball, right on the money, right on the target, but ball looks like the umpire is not satisfied enough to give the leg before wicket, but it's a little bit inside edge of the bat, saving the batsman from the leg before wicket. And that was a really lucky break here for Altaf Alfadi. And
Umpire, rightly so, Nasir Bajal, seeing that it is inside edge of the bat, and the first run comes of here for Nasir, for Altaf Alpadi. One without loss of any wicket here in over first in progress. Please note, fielding team 20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ 18 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ 4 ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Nizam bowling away from us. Round the wicket he balls outside the line of flag stump. Punishable from umpire. And umpire told that it's a wide ball and wide signaled and wide, which is registered by Faisal, our scorer. And Faisal, our scorer for today's match. Beautifully bowled. Appeal for leg before wicket. How is that? What loud appeal coming from wicketkeeper behind the stump, but the ball suddenly going down the leg stump as he was angling across from round the wicket, and definitely that going to miss the leg stump. So two very good deliveries to start with here from bowler Nizam, as he bowled right on the target, right on the money, not providing the opportunity for the batters to go for any kind of big shot in this power play. Hanif is a square leg umpire. Nasir Bajal is the main umpire. Altogether, Iqbal, Abdullah, all 4 umpires did a great job for the success of this cricket tournament. Netravati Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shantinagar in this most beautiful Shantinagar red ground. Again, the bowler back to his bowling mark. Right arm around the wicket. Nizam beautifully bowled. That is a perfect line, and to ball to the batsman like Altaf Alpadi. He wanted to hit the ball on the onside region, but the line is outside the line of off stump, so that Alpadi has got no answer for that particular delivery. Score remains on 3 on the board for without loss of any wicket. Square leg, short mid wicket. One is in front of square, one is behind square. Deep long on is there. Again, lovely delivery, lovely line in the negation. Again, Altaf Alfadi not reading that line well. Again, he's looking for the big shot on the onside region. But you need to see that there is no fielder in the offside region. There is an opportunity for the batter to get the runs from the offside region as well. But sometimes it's happening whenever the batsman is so strong on the onside region. And always they love to play that stroke on the onside region. But sometimes you need to see the line of the ball which is very difficult to drag the ball from outside the line of off stump. Now Altaf Alpad is standing a little bit across, almost covering his stump, and wait and see what could be the strategy from him for the next delivery. Nizam, right arm around the wicket to Altaf. Altaf this time going for the drive again. Lack of placement, chance of run out in. Oh my goodness, the golden opportunities missed out there by short mid off fielder. The opportunity which is created when Altafadi pushing the ball straight to the hands of short mid-off, trying for the single. Mid-off fielder collects the ball, but tried to make that run out. Ball just slipping out of his hand, and Altafadi is survived from that run out. So one more addition is Muzan to 2. Total score of his team Muzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. 2 Altafs, one is Altaf Walpadi, and this is Altaf, just Altaf shot, going for the big shot, pays the penalty for that, tried to slash that one outside the line of off stump, not quite getting hold of that one properly, and ball is just got that one, outside edge of the bat, and the ball just ballooning up in the extra cover field, making no mistake at all. The wicket number first of Deadly Kankanadi is back into pavilion, and of course Deadly Kankanadi looking for some deadly start here, but I think team matrix definitely they got a very good wicket here in the first over of the power play. It's a 4 for the loss of 1 wicket.
So new batsman in is Izaz, one more very talented players, very good friend, very good all-rounder for the side of Deadly Kankanadi, and he and Ali and Atif are the two batters who really started their journey for playing for Deadly Kankanadi, and both are become now complete player and accomplished player in the present cricket. And of course, I still remember this man has got a fantastic season 4 or 5 years back in MPL. He's just exposed as a talent in that particular tournament, and two very good youngsters which is came out from that MPL. And I still remember, Gopi, that was a 5 hours tournament of 2 innings, which is a different concept is implemented first time in UCG ground, and far outside run off stump and going to be a big wide, and with that extra score, but Namuzan to 6 on the board for the loss of 1 wicket. And that tournament he's become man of the series, Izaz, for his all-round performance. And he won the Kudla Premier League, one more the biggest platform for the cricket, the performers, the talents. It's produced a lot of talents, the Kudla Premier League, and some players are grabbing the opportunity. I request the fielding team, please make it fast, don't waste the time. A strong breeze out here in the middle, which is disturbing the batsman. The dust which is coming out of the pitch is again Riaz. Right arm round the wicket, bowls to Altaf. Altaf swings and swings hard, but not really getting the distance right. Just we are talking about this cricket ground is not so easy. This cricket ground is not so easy to get the distance right. You need to be see that where the wind is flowing. Just look at that, the flags which is flying around behind the stumps. Looks like ball is in the offside, the wind which is in the direction of the offside region. And Altaf swings at one right from the middle of the bat. And no doubt at all, but as the fact that he played it one against the direction of the wind. He pays the penalty for that. Deep backward square leg fielder completed the catch. The wicket number 2 of Deadly Kankanadi is back into pavilion. Now, Deadly, what the name they got, Deadly. Don't think they got a deadly start here, but they got a shackling start. One more, the batsman, Altaf Basavanagudi. And very interesting, Gopi. Already is 3 Altaf out of 4 batsmen. Altaf Valpadi, Altaf, one more Altaf is on back into pavilion, and now Izaz, and afterwards one more Altaf Basavanagudi. One more fantastic all-rounder, Altaf Basavanagudi, will go into face next delivery. Top edge! And here is umpire, just I think no need to raise his finger, and a batsman walking towards the pavilion. I need to appreciate the sportsman spirit of this man, Altaf Basavanagudi. Absolutely, the round of applause required for Altaf Basavanagudi, because without waiting for the umpire decision, he is walking towards the pavilion. You know exactly, he got a bat onto that, but umpire Anif has got a doubt in his mind. He wanted to clarify from square leg umpire, well, it's going to be a leg or the bat. But sometimes, Gopi, if you see that whenever, if the ball is without having a contact with the pad, then ball will not go into balloon up that much of height. Only if the ball has got an inside edge of the bat or outside edge of the bat, then ball definitely will go into ballooning up in the air. And that's right, that ball is high up in the air, that only because of a ball is just has a contact with the bat, then ball hits a leg of Altaf Basavanagudi. But he's showing a sportsman spirit, and a true spirit of the cricket will go into lift the game of cricket, the spirit of game of cricket. And word of appreciation which is really required for Altaf Basavanagudi. And 3 Altafs are back into pavilion of 2 Altafs. One Altaf is still, Latif is there in the 2 Altaf, correction, Altaf Valpadi and Altaf Basavanagudi. Latif, in fact, is the batsman, is back into pavilion. Faizan is the new batsman, facing next ball. Hat-trick delivery. But this time, chance of run out. Oh, he's gone.
Really gone indeed. Of course, a third wicket is back into pavilion in this over, but it's not a hat trick for the bowler as far as the wicket is concerned. It's in the form of run out, but Deadly Kankanadi, they are in a deadly trouble now because they lost wicket number 4 very cheaply. One more duck. Faizan is back into pavilion. Altogether, there are 3 ducks. Altaf is out for duck, and Altaf Basavanagudi is out for duck. Now Faizan is also out for duck. Duck. Samshir is a new batter, is walking towards the middle with the jersey number 2, and tremendous pressure now for the batter because they lost 4 valuable wickets just over number 2nd in progress. Riyaz just dismantling the batting department, and Nizam is also dismantling the batting department. Riyaz again around the wicket, he bowls beautifully, ball again right on the money, right on the target, a perfect delivery to ball to the batter, and this time the batsman managed to pick the single here as Samshir picked up a single off the toes. He plays it down to short final region by flicking the ball, and with that single, scoreboard is moving after a long time from 6 to 7. It's a 7 for the loss of 4 wicket. Quite unusual scoreboard. We can see that in the afternoon. Bright sunny afternoon. Time is exactly 2 past 45. But still it's a very good number of crowds is enjoying the game of cricket. Riyaz balls, and this time batsman Izaz just wanted to play as per the condition required. He's just pedaling the ball down to short fine leg region for a single. Now all responsibility in the shoulder of Izaz. How well he managed to consolidate the innings. After losing 4 wickets, I think Izaz have to play some big innings, good innings for his team, because 4 hours per minute of a game, Scope, there is no time to think and play. And after losing 4 wickets, and wait and see how Izaz will going to get some runs. We're going to get some runs for his team, as again Riyaz right arm over the wicket. This is going to be a bonus run for team Deadly Kankanadi. They will going to enjoy this extra run because they didn't got enough runs on the board. The bowler tried to bowl some dotted delivery, but couldn't manage to control that line what he's looking for. 9 for the loss of 4 wicket in the over number 2nd in progress. Very slow cricket is progressing here in the lazy afternoon. After that the lunch, of course, a little bit lazy for everyone. Again, lovely delivery, beautiful delivery to finish the over number 2. Then after completion of over number 2, searching for the right track, Deadly Kankanadi, and really struggling in the middle. They got only 9 on the board by losing 4 wickets. 2 overs remaining, excluding wides and no balls. Out of that 2 overs, that means 12 deliveries. Wait and see how many runs they will going to score here. Of course, 4 overs means at least 30 runs, which is badly required in that 4 overs. If batting first team will going to depend that one, and they're playing against a team Matrix, one more very good team. As far as in Mangalore South Kent district is concerned, they got some very experienced campaigner in their side, and considering all this fact, I think it's a less than 25. I think it's going to be a very difficult to depend. Wait and see how well Team Matrix will going to continue the success what they got in the 2 overs. Can they able to continue that one in the remaining 2 overs or not? Meanwhile, change in bowling, and Akim is brought into attack to bowl that Hakim Adur, and is playing for 5-star Adur Hakim, and now is playing for Team Matrix in this Netravati Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shantinagar under the leadership of Mansoor. Left arm over the wicket, first ball. This time chance of run out, and ball, the throw which is little bit wide from that field at short mid wicket, and so that the bowler couldn't manage to gather that throw. The batsman just survived from that run out. Isas picked up a single, scoreboard moves on to 10 for the loss of 2 wicket. Again left arm around the wicket, little correction, is bowling around the wicket, and balls to right-hander batsman. Again dries up easily, but over the head of that Asif is trying his level best to take that catch. Has got a very good jump, but not quite enough to take that catch here. Asif is a very experienced campaigner for the side of
Team Matrix, the very good striker of the ball as well. Is a good all-rounder. And one more addition. Scoreboard now 11 on the board for the loss of 4 wickets. Izaz back on strike. Izaz drives that one. Nice looking drive. Sweet sound coming from the bat. He played that one as per the merit of that delivery with the full face of the bat. Drives that one beautifully down to deep long of region for a single. With that single, scoreboard numbers on to 12 on the board for the loss of a 4 wicket here in over number 3 in progress. Bowler Hakim again, left arm bowls, beautifully bowled, but wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Looks like ball got outside edge of the bat, off the batsman. That's why the wicketkeeper fails to collect the ball, and the batsman tried to cut that one, Faizan, and that got outside edge of the bat and got a single. So strikes are rotating here in this third over. 4 deliveries of 4 singles conceded by the bowlers. So 13 on the board for the loss of a 4 wicket. Izaz will go into face next ball. Went for the reverse sweep, lovely work behind the stump, but result which is negative because the back foot of Izaz is still inside the crease. Of course, Izaz now tried to make a little bit experiment in his strokes because he knows that they're dealing with the last few deliveries. You need to get one big shot, and by doing that, I think he's implemented that technique of hitting a switch it, but it's a ball that defeats the bat of him. But wicketkeeper electrifying work behind the stump and much required dotted delivery in this over. Akim. Score remains on 13 on the board. Last time in this over. Faizan bowls. Izaz drives that one firmly down to deep long on region for a single. Neat collection there by the fielder. He will going to retain the strike for the next over. 3 overs completed. After completion of over number 3, Delhi Kankanad is still not really coming out of that the early breakthrough, and they're still struggling in their point of view of run rate is concerned. I don't think they got a very good run rate. Just a 14 on the board, and last over remaining in their innings. And last over, wait and see how Izaz and his partner Faizan will go into Samshir lead correction. Samshir and the batsman Izaz, wait and see how well they're going to get some good score in this final over. Last opportunity to accelerate the run rate, and it's a bright and very hot afternoon, not so easy afternoon for the players and for the umpires, especially in this particular cricket ground, Gopi. It's extra temperature because of that mud, the soil which is we can see in this particular ground. It's a hillside, so probably the temperature is always going to be the higher than what's the normal temperature. It might be more than 31 to 32 degrees Celsius here in this Shantinagar red cricket ground. But still the spectators enjoying the game of cricket in this hot condition. Last over will go into start, and Taslim, the captain of the side, will go into ball that last over for Team Matrix. Taslim away from us, experienced campaigner, right arm over the wicket balls. This time umpire have to see that it's a deliberate padding, and umpire rightly so called that it's a deliberate. Taslim has bowled around his legs, and the Izaz just not really able to offer the strokes, and that's why umpire rightly so. It's a deliberate padding so that no run given. Second time in this over. Right arm over the wicket again. Beautifully bowled, and one beautiful stumping behind the stump by the keeper. What an outstanding keeping there from the keeper. Rizwan, just number 23, lovely keeping. And we were talking about yesterday's some top wicket keepers in South Kent district. When Mansoor is keeping behind the stump, we just compared him with the legend wicket keeper Radhakrishna Kamath Babanna. And but several keeper Gopis, some of course we are noticing some wicket keeper. Even Javed from my own team, Hanuman cricketers, one of the fantastic wicket keeper behind the stump. Very short fellow, but he got a very good eye. He's judging the ball very well. I noticed him even sometime when I am fielding in the cover region, when I returns the ball to the hands of wicketkeeper Javed, he is making a very quick collection and
disturbing the stumps. And so many wicket keepers we can give. And wicket keeper Gopi, we can come to that point afterwards when we are getting a time to talk about all that things. But here is one more new batsman coming into the middle. This time he lofted, sweet sound, but I don't think we're going to get the distance. Oh my goodness, unfortunate. What a lovely stroke there from Harif, but unfortunately, I just mentioned about Gopi. The direction of the wind is not really helping that stroke for Harif there. Lovely stroke. You can see that one of the best sound, the instrumental sound which came from the bat. But that might be a little bit against the wind, so that ball is landed safely into the hands of fielder. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತೂರು ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮೆಮಾರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So Taslim is on hat-trick. Picked up 2 wickets in 2 deliveries, and the new batsman in is Asif. And wait and see, can Taslim be able to get the second hat-trick of this tournament? Wait and see. This time, loud appeal for leg before wicket. Taslim is so confident. He's just celebrating and laughing that he got a hat-trick there. But umpire says, no man, ball is just going to miss the leg stump. And he's not satisfied, rightly so, as Taslim knows that. Because excitement and always be there. Because this is a hat-trick delivery, then each and every bowler's, certainly it's always going to be a golden moment for any bowler if he fixes a hat-trick. And the Taslim... just missed it in just in a whisker, that ball just missing the leg stump. Otherwise it's going to be leg before wicket. And the scoreboard is more than to 15 now on the board. Taslim right above the wicket drives that one down to Asif. Is a fielder there in the short mid-off region. There fumble again, they're coming back for the second and asking for the third umpire. Fumble picked and returns, but wait for the umpire signal. Just looking at the body language of the batsman, looks like he may be the short of a crease, but wait to see that third umpire decision. Will it going to be out or not out? So out is a call from our third umpire. So the batsman knows that because 90% of walking his pitch is completed, and he's just waiting for the formalities of umpires to give the out. Third umpire will give the out, and third umpire Iqbal and is given that out decision. So last pair in the middle. 8 wickets back into pavilion, 7 wickets back into pavilion. Last delivery of the innings of Deadly will going to start. Taslim so far been outstanding in this last over. What a great over. Just a couple of runs, and in that couple of runs, one leg by. Final time it's over. Drives that on. Asif the fieldsman there. Next chance of Jan out there, but the bowler couldn't manage to complete the job, and over completed. Just a single in the last ball, and after completion of over number 4, and Deadly Kankanadi managed to score only 17 runs, and it is a target of 18 to win the match for Team Matrix. And without wasting a time, I request Team Matrix batsman, please get ready to open the innings. At the same time, I request Deadly boys Kankanadi to please enter into the ground as quick as possible. It's a disappointment performance, isn't it, Gopi? The Deadly Kankanadi looks like they got a deadly team. They got a coordination of some fantastic striker of the ball like Altaf Alpadi, Altaf Basanagudi. They got Latif, they got Izaz. But it's not kind of runs after having that kind of
batting department in your side. The 17 runs and I think it's going to be a big score. But Gopi, Deadly Kankanadi, as like I mentioned, they got a batting lineup and even they got a very good bowling lineup. So that wait and see how well they will go into defend this total against Team Matrix. Coming back to Team Matrix, the bowlers did the job. Absolutely, it's a fantastic performance because leading from the captain Taslim bowled a fantastic last over, and Nizam, Riaz, and Akim all have done a great job to restrict the opposition by less than 17 runs. And I think if you need to justify the effort of the bowlers, Team Matrix batsmen have to not a big job, just sensible batting which is required for them to win this match. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा इस वक्त टेटली कंकनाडी के बल्लेबाजों ने अपनी क्षमता के अनुसार बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की थी, तो इस वजह से उनकी टीम इस वक्त सिर्फ बना पाई 17 रन निर्धारित 4 ओवर में, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों ने दिया। फलस्वरूप इस वक्त उनके बल्लेबाजों के सामने एक कुछ ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर देखना यह है कि टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पार कर पाते हैं नहीं। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो डेडली कंकनाडी को राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर एक घातक गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी अगर उन्हें 17 रन के अंदर टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों को रोक कर रखना है। तो ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕರೆ. ಕೂಡಲೇ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. रमीज और इस्माइल आरंभिक बल्लेबाज और मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, तो उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार। लक्ष्य इस वक्त 18 रनों का और मुन्ना डेडली बॉयज कंकनाडी की ओर से गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज रमीज इस वक्त सामना करते हुए रिवर्स शॉट खेला पहली गेंद, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिला और ओवर थ्रो, लेकिन यहाँ पर रन आउट होने का खतरा जरूर, लेकिन थ्रो इस वक्त किया था जमीन पर। और एक पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बॉल जब तक विकेट कीपर थोड़ा सा छल लगा कर गेंद को फील्ड करे, कलेक्ट करे बल्लेबाज, दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। तो 2 रन यहाँ पर पूर्ण हो चुका है बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार। मुन्ना इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त एक बार फिर से पॉइंट की दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े निशाना, और यहां पर निशाना लग चुका है और तीसरे अंपायर के लिए इस वक्त कॉल दिया गया है। निस्संदेह यहां पर नजदीकी मामला हो सकता है। फील्डिंग वहां पर पॉइंट फील्डर ने की, जैसे ही गेंद को उन्होंने फील्ड किया नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया, उनका थ्रो स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ। तब देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज का बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या नहीं। नॉट आउट, द सिग्नल केम फ्रॉम द थर्ड अंपायर और इस बीच बल्लेबाज बच चुके हैं, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, काबिल तारीफ फील्डिंग इस वक्त पॉइंट फील्डर ने की थी और आखिरकार बल्लेबाजी इस गेंद पर बच चुके हैं। ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತೂರ್ ಹಾಗೂ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ, ಇದು ಕೊನೆ ಕರೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂತೂರ್ ಅಂಡ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟಾಸ್. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಎಂಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ.
तो इस वक्त गेंदबाज ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त गेंद जाते हुए सीधे डाउन पर 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर, कोई जल्दबाजी की इस वक्त जरूरत नहीं है टीम मैट्रिक्स को। अगर इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी भी करते तो 18 रनों के लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों बल्लेबाज इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अपनाते हुए पहले ओवर में। और इस बीच मुन्ना अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिना तो बढ़ता विकेट, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया। गेंद जाती हुई कवर पॉइंट की दिशा में, गेंद को फील्ड करने में सफल, सीमा रेखा के अंदर काफी मुश्किल के साथ। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था तीसरा रन यहाँ पर पूर्ण करने का। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर की थी। लगभग 10 से 12 कदम दौड़ते हुए अंतिम क्षण में बड़ी मुश्किल के साथ अपने दूसरे या तीसरे प्रयत्न में गेंद को उन्होंने फील्ड किया डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर रहा। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का और कम से कम 1 रन अपनी टीम को वो बचाने में सफल फील्डर जो डीप कवर पॉइंट पर तैनात थे। 7 रन बिना किसी नुकसान के। मुन्ना एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो बढ़ता विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। इस वक्त खूबसूरती के साथ विकेट से हटते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 8 रन बन चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर सिर्फ 10 रन और चाहिए विजय के लिए। और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया, लिमिट ऑफ पर रन्स नहीं मिलेगा, जगह नहीं बना पाए और इसी के साथ ओवर आते हैं। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद एक बेहतर शुरुआत यहाँ पर कर चुका है टीम मैट्रिक्स। 8 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। 18 रन उन्हें बनाने हैं और जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है इस वक्त टीम मैट्रिक्स दे आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। इनफैक्ट एट दिस सिचुएशन बिल्कुल सही राह पर वो इस वक्त जाता हुआ 8 रन छोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला नेत्रावती ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स शांतिनगर ने और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है बित्रा मीडिया पर। जनाब इरफान इनके सारथे में और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए। तो गेंदबाजी अल्ताफ बसवनगुड़ी इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार बल्लेबाज इस्माइल। तो ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार इस वक्त अल्ताफ बसवनगुड़ी। इस्माइल के लिए 10 रन चाहिए 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, लिमिट ऑफ पर गेंद पहुंची। गेंद को खेलना चाहा ऑफ साइड पर, गेंद गई ऑन साइड पर, बल्ले का भीतरी किनारा अंदरूनी किनारा टकराने के बाद और जब तक गेंद को वहां पर मिड ऑन पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 9 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है, ये गेंद रिवर्स शॉट, 1 रन का इजाफा, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन बिना किसी नुकसान के। और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला। इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा, स्वीपर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 11 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर सिर्फ 7 रनों की जरूरत इस वक्त यहाँ पर बल्लेबाज को। यह गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, क्लीन कलेक्शन, नॉट मोर देन अ सिंगल। और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 6 रन चाहिए विजय के लिए और कुल मिलाकर 14 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में। ये गेंद इस बार चूंकि शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है इस वक्त 12 रनों पर। और इस ओवर में अंतिम बार अल्ताफ बसवनगुड़ी दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद फ्लाइट एंड खूबसूरती के साथ लिमिट ऑफ पर और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। ऑफ द टोस गेंद को खेला था, ओवर पिच गेंद को, लेकिन गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर और इसे बिना देखे नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज काफी आगे निकला है और आसान सा रन आउट होता हुआ वहां पर नॉन स्ट्राइकर पर। बेहतर फील्डिंग शॉर्ट मिड विकेट फील्डर की। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 2 ओवर्स कंप्लीटेड, 12 एट द बोर्ड और एक बेहतर ओवर अल्ताफ बसवनगुड़ी का समाप्त हो चुका है जिसमें 4 रन उन्होंने प्रदान किए। अभी भी चिंता का कोई विषय नहीं है, सिर्फ 6 रन बनाने हैं बचे हुए 2 ओवर में यानी 12 गेंदों में। और ऐसा कहना पड़ेगा टीम मैट्रिक्स अभी भी अपनी सही राह पर जाता हुआ, जस्ट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक।
Mustafa, the number 3 batsman, is now comes out to the middle for टीम मैट्रिक्स और गेंदबाज ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त फॉलो थ्रू में गेंद को अल्ताफ गेंदबाज थे जो गेंद तक पहुंच नहीं पाए, जब तक सीली मीडिया पर खुद पीछे की ओर जाकर गेंद को फीड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और 5 रन चाहिए विजय के लिए। जस्ट 5 टू गेट फॉर विक्ट्री। अगली गेंद के लिए तैयार, ये गेंद फुल टॉस, पुल किया, गेंद हवे में लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और इसमें थोड़ी सी मिस जजमेंट और इसमें इस जजमेंट का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। तो 15 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रकृति पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस और फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए अल्ताफ दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद ढीली गेंद उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर वहां पर नहीं है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए लेकिन गेंद को रोकने में सफल और इसी के साथ ये चौका यहां पर गिर चुका और इसी के साथ टीम मैट्रिक्स इस मैच को जीत चुका है। डेडली बॉयज कंकनाडी के खिलाफ 9 विकेटों से 2.4 ओवर में उन्होंने लक्ष्य का पीछा किया। 2.3 ओवर में कहना पड़ेगा और आखिरकार इस मैच में विजय दर्ज कर चुका है। तो अगला मैच खेला जाएगा जॉली फ्रेंड्स नंतूर और यंग फ्रेंड्स अम्मेमार के बीच में और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया दोनों टीमों के सदस्यों से कि अगले मैच की शुरुआत जल्द से जल्द करें। तस्लीम मुझे रन रिया सही रन रन विकेट ये आएगी तस्लीम मुझे रन विकेट आएगा इन तस्लीम అవునా తస్లీం లెగ్ బై ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ತಸ್ಲೀಂನವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಕೇವಲ 3 ರನ್ ಇತ್ತು, 2 ರನ್ ಇತ್ತು, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ 1 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ। ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ತಸ್ಲೀಂನವರು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜೀಜ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿನಂತಿ। ಈಗಾಗಲೇ ತಸ್ಲೀಂನವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜೀಜ್ ಬಜಾಲ್ ಇವರು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ। and everything all over for the next match. So the next match is now going to start between Young Friends MMR versus NFC. In fact, it's a Jolly Friends Nantur will take over Young Friends MMR in the next match, and we'll be back right after the short break with Satish in English when the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. I request make it fast. I request the opening batsmen of team Young Friends MMR, please go for bat immediately. ದಯಮಾಡಿ Young Friends MMR ತಂಡದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಪೈರ್ಸ್ನವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. Young Friends MMR opening batsman, please go for bat immediately. So right now, and a match will going to begin here, and Jolly Friends versus team Young Friends MMR, and here you go. The opening batters are walking towards the middle. Rafiq, the left-hand batter, and along with Rafiq, we have
Isam will going to start the proceedings for team Jolly Friends, and the batter Azim Nazir, the correction Nazir and Rafiq. Nazir is fails to contribute in the bat in the first match, but is a very talented and experienced campaigner for the side of team Young Friends of Myanmar. Wait and see how well these two batters will going to get the start, which is really very important. Only 1 hour going to be a power play, so they need to capitalize that one. First ball, right above wicket. First ball itself, their appeal for leg before wicket. Umpire says leg by ball might be going down the leg side, and because of Isam is bowling some big off cutter in the dedication. Very confident appeal, but umpire denied that appeal. Rightly so, that ball is just going down just a little bit, and Nasir, Nasir definitely. Nazir couldn't manage to read that pace of that delivery, and just survive from that delivery. Rafiq will go into face next delivery flare from Isam. Isam is a very experienced campaigner, very good bowler, economical, and always loves the ball in the power play. Flum, absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. The Rafiq just couldn't manage to reach that turn of the delivery, and of course across the line he tried to swing that one. That's what the problem here for Rafiq, because he playing his first delivery, and without middling the ball, if he wanted to play across the line against the pace of Isam, then you need to pay the penalty for that. And ball pitched in a line and tried to play towards that square leg region, and Rafiq missed it completely, finding himself like before wicket. The first wicket is back into pavilion of Young Friends Myanmar. Blaster, really a big wicket, and Rafiq is a kind of batsman, is always going to be very useful in this format of a game, so can be the very effective be effective in the form of rotating the strike, and when the time which is required for some big shot, he can deliver some big shot as well. But unfortunately is back into pavilion. Two very good deliveries to start with here for Isam, and he picked up 1 wicket for that. 2 or the appeal for leg before wicket, and 1 which is umpire says it's out. This time 1 more fantastic delivery. What a start here from Isam. Again the new batter wanted to get the single for that delivery, but Isam is not providing that opportunity on his follow through, quickly moving towards the ball, denying the runs from the batters. 3 very good deliveries to start with for Isam. Is putting his all experience in this particular over without scoring, without giving any run, single run. And that leg by, that's only leg by. It's not going to the of course it's definitely going to the account of extra, but not which is not going to the account of the bowler. So 3 very good deliveries to start with. The new batter Samad, the hero of the previous match, will go into pace Isam. This time lovely shot, beautifully driven there by Samad, and lovely, oh my goodness, can you believe this? This is a really costly one for team Jolly Friends. What could be a certain single, the fielder of deep long on region might be just removes his eyes on the ball. Maybe a little bit that bounce where he couldn't manage to tackle with, as ball just hitting his body and changing the direction. Ball went towards a deeper long on boundary for 4 runs. So sometimes it's happening in cricket, isn't it? Even some good fielders, it's sometimes it's very difficult to tackle with the ground, ground which is definitely sometimes it's have got up and downs in the deep, and that's why the ball just a little bit changing the direction and extra bounce, and he's completely missed out that one. Samad again drives that one down to short fine leg division for a single. So with that single, scoreboard now moves on to 6 on the board. Quite unfortunately, what could be a great over, and that was turned out for the lucky one here for team
young friends MMR. Of course, they got a luck in the previous match after the match which is ended in a tie. Then toss is decided the winner. Again looking for the drive. Again dotted delivery. First over completed. After completion of first over, Isam really got a very good start, but unfortunately we're going to finish that over as a 1 over no maiden conceded. 6 runs, so total it's a 7 runs. He conceded 6 and one leg by, and total is 6 runs, and out of that one leg by, that means 5 runs which is came from his bowling. So young friends of Myanmar, of course, they lost 2 valuable wickets in the first over, but still a valuable wicket of 1 wicket, the wicket of Rafiq, but still they got the runs what they really wanted in this particular over. So new bowler has been introduced from the commentary box end. It's Shahil. Sahil will going to bowl the second over. I request the fielding team, don't waste the time, make it fast. Samad will going to be the striker. He's batting on 5, the man of the match in the previous match for Jolly Friends when they played against team NFC Maravuru. He played a very good innings for his team and he bowled very well. And here is the first ball. This time sensible batting from Samad. Jack picking. Oh, directed! Directed, always going to be danger. Directed, always going to be danger for the batsman. And wait and see what could be the decision coming from umpire, the third umpire, because umpires, the field umpire, Nasir Bajal is just asking for the third umpire to give the decision. What a fantastic piece of fielding there by the fielder at short cow point region. Just a pick up and throw. Outstanding piece of fielding. It's not so easy to hit the stump because of the angle what we can see that the fielder is returning the ball. He can see only the single wicket. Look at that effort there from fielder. Absolutely magnificent. But we need to see the result of this effort of that fielder. Well, the ball when hitting the wicket, will it go into the batsman? Will it going to be the batsman bat in the air? Very, very important. Sometime the bowler definitely will going to come in front of the camera, the angle. That time it's very difficult for us to see. And his bat is in the air. That means he's gone. He's gone. It's absolutely terrific piece of fielding there by the fielder. Outstanding fielding there by the youngster. Jersey number 6. Shafiq is the fielder down at the backward point region. One of the important field placement, the backward point region, where you needed to have some good fielders in that region, backward point and cow point, because most of the time the ball is coming in that area. And of course, if you're coming to the international cricket, we are watching some good fielders fielding in that region, and one of the best fielder in the international level is a legend. And Chanty Rhodes we are talking about is fielding in that backward point region. Outstanding, and is definitely a miracle fielder in international level. Again, ball is in there, but fielder in the square like this couldn't manage to reach that catch, but after 2-3 bounces he is able to collect that one. Meantime, the batsman Nazir managed to complete the single. With that single score, now moves on to 7 on the board for the loss of wicket number 2, which is back in the pavilion in the form of a run out. Samad will go into face next delivery of Shahil. Sahil with a short run up was umpire Nazir. Right arm over wicket pause. Reverse sweep and wicket keeper behind the stump. Excellent work. Is lifting on ball. If it on the line always going to be out as far as the present rules and regulation of the cricket is concerned. Need to be a little part of your boot inside the line. And then only you can be the safe. Now that's why umpire doesn't want to take a risk here, is Iqbal. Seeing the body language of wicketkeeper behind the stump, is so confident in delegation, but you need to see the confidence level of a third umpire to give the wide. It's going to be very, very interesting to see.
So batsman is safe with a little bit part of his boot is inside that the crease. That's why he's the same. And Iqbal has got a big smile in his face. He's just saying, yes, that's why I'm asking for the third umpire. I have got a dot in the mind. Doesn't want to take a risk. If you have got technologies like what Bedra Media has got, definitely their job is to give the decision. And the third umpire, Abdullah, just was watching that all angles and giving that decision which is not out. So thank you very much for the wonderful technique here from Bedra Media. They provided for that very close call for the stump out. Beautifully balled, but this time wicketkeeper fails to collect the ball. Very wanted to collect the ball, but he's just missed the ball completely from his hand. And the opposition team got a single for that. With that single score, numbers on to 8 on the board. 8 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Sahil again back to his bowling mark. Right arm over the wicket, bowls to Nazir just across the line of the delivery, swings that one, missed it completely. Wicketkeeper also fails to collect the ball. That ball is just deflected from the leg of Nazir, so that leg by called by umpire. One more addition. With the addition of that single score, numbers on to 9 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. Young friends, MMR, they won the match against Reliance Katipala, one of the best match of the day number final. Unfortunately, luck which is not going in favor of Reliance Katipala, but this time straightforward catch missed out by the fielder, the same fielder who got a run out in this particular over by hitting the stumps. The same fielder is dropping the catch because that ball is went very quickly to him, but he fails to react very quickly for that. And over number 2 completed. After completion of over number 2, young friends Myanmar managed to score double figure 10 on the board at the rate of exactly 5 runs per over. The 12 ball 10 runs projected scores definitely is going to be 20 in the same run rate in 4 overs. So that but they in friends of MR doesn't want to see that projected score. They wanted more than that projected score. Maybe they wanted to get acceleration of run rate in the remaining 12 balls, excluding wides and no balls. If able to get another 15 runs, it's going to be a good score, 25 in 4 overs and just over 6 runs per over. Wait and see how well they will going to get some good score in the remaining 2 overs. So far, I think the bowlers of Jolly Friends did a great job in this 2 overs. So bowling change. Farooq is a hero of the previous match, is a captain of the side as well, and he's a local boy and he's got a local support as well. And wait and see how Farooq will go into justify himself as he bowls third over of the innings of young friends Myanmar. Right arm over the wicket, ball strap that one straight to the hands of square leg. Wicket number 3 is back into pavilion. This is a huge wicket there for Farooq, just like he's a local hero. Definitely the round of applause which is coming from the crowds here for Farooq, picking up wickets in his first ball itself, as the batsman Samad tried to not really getting from the bat. Managed to keep it down, and square leg fielder completed that catch. 3 gone of team young friends of MMR in the just over number 3 in progress. They got only 10 runs on the boards. The new batsman in a little master Kishore, and Kishore, everybody knows this abilities. Maybe there's a small in size, but he's got a lot of talent behind him. And little master, we can't judge anyone by his height, just like don't judge the book by its cover. And he's just like that only. He's a very good talented player for the side of young friends of Myanmar. Wait and see how Kishore will go into contribute from the bat. And he's a busy customer, the good and clever batter. Farooq. Success in the first ball. Second time in this over. Right arm over wicket balls. This time again right on the muddy. I feel for leg before. Chance of run out in a non-strikers, and leg by call by umpire. Ball just going down the leg stump a little bit. Rightly so, umpire Iqbal is not interested to call that leg before wicket, but very much interested to call that leg by. And with that leg by score, Namuzan to 11 on the board for the loss of 3 wickets. And over number 3 in progress. Nazir is still there in the middle. Nazir,
and he will going to face the bowling of Farooq across the line again. Try to hit the ball. Chance of run out. He's just missing the 3 stumps. Can you believe this? He's very close to the stumps. He can hit the stumps, but still Farooq is not believing his eyes that how I missed that stumps. When you were 3 stumps, he can hit the ball. Lot of time for him to think and throw. But sometimes it's happening in cricket, isn't it? Sometimes you are missing the wicket, even though you're very close to the stumps. But sometimes you can hit the stumps, even though you're far from the stumps. And accuracy is so important. Sharpshooter, of course, sometimes in cricket, will get the wicket in the form of run out by hitting the stumps. In the previous over, we are witnessing one sharp shooting from the backward point fielder when they got run out decision after hitting a direct hit into the non-strikers and stumps. Went for the reverse hit. Wicketkeeper just searching for the ball and hitting the stumps. Again the third umpire busy. Today in this match, his third umpire is a very busy customer here in our committee box, along with the technician of Bidra Media, Irfan. He is leading from the fan tail always. He is the one who will going to provide the right decision, right angle to get a good decision in this particular match. Wait and see. The batsman, his position where he is almost charging for the run, and look at the wicketkeeper behind the stump. He hits the stump, the batsman out of the crease, and is gone. So third umpire Abdullah saying that in one angle only they clear their doubt, because the angle of that run out, the cameraman at square angle, I think Ajmal, the cameraman of Bidra Media, is in a square angle. Thank you very much for that fantastic angle which is provided, because there all we can see that behind the picture, behind the screen, and responsible for the success of the tournament. And again, one more wicket is back into play. A lot of run out taken place in this particular match. It is the second run out, third run out in fact, and that shows the fielding department of Jolly Friends is outstanding in this match. 2 run outs and 1 caught and 1 leg before wicket. That's 4 wickets which is back into pavilion. So new bowler, new batsman Ashraf will going to face the next delivery of Farooq. Right arm over the wicket balls. Outside the like Semper going for the sweep shot, but umpire not missing the opportunity to signal the wide. Farooq is not really happy with himself, because after bowling such a good deliveries in this particular over, as he considered a wide, 1 extra runs and extra deliveries. 13 on the board. Right arm over the wicket, beautifully bowled. The wicket keeper behind the stump. This time missed it completely. It's not a good to see that the wicket keeper fails to collect the ball when the bowlers doing a great job, hard work they're doing to miss the bat of the batter. The wicket keeper fails to collect the ball, and 1 more single is added to total in the form of extra. And wicket keeper sacrificing his wicket, sacrificing his place, is walking towards the square leg region, and scoreboard is 14 on the board. 14 ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 14. 4 ವಿಕೆಟ್ನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ MMR ಇದರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ಫಾರೂಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ over the wicket, reverse sweeping that one, Kishore, but protection has been given in the deep. Fumble from the fielder, grabbing the opportunity, completing couple, going for the third, chance of run out in the non-strikers, and that is gone. This time Iqbal in the right position to raise his finger, is not really asking for the third umpire. You know exactly the batsman Kishore is well short of his crease. Kishore also knows that. He is just walking towards pavilion in the same speed where he was trying to get the second and third run, and 2 valuable runs now completed, and with that 2 valuable runs, scoreboard now moves on to 16 on the board for the loss of 5 wickets. Last over remaining in the innings of Friends MMR. Young Friends MMR
So last over will going to start from the commentary box end. I request the fielding team to make it past. This is just a 4 overs match. So for the next match, please get ready. Two teams. Team Matrix as well as ನೇತ್ರಾವತಿ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇತ್ರಾವತಿ. Harris is the bowler. Keeper changed, but problem continues. And one more bye. So one more extra scoreboard moves on to 17 on the board. These all runs are very important, isn't it? Extra runs. If you experience extra runs, if you not couldn't manage to control, then it's going to be a more danger for you when going to chase those runs. It's definitely going to make a big impact in the result of the match. And here is Harris, a very youngster for the side. Right arm over the wicket balls. This time beautifully bowled. Neat collection behind the stump this time by the wicket keeper. Beautifully bowled. The very good line in the irrigation there from Harris. And definitely going to be a future bowler for Jolly Friends. The way that he's bowling the line and length. And this time his arm is just correcting the field. He wanted the fielder from the deep east to come little bit front. And here is Harris balls outside the non-flex stamp, and the wicketkeeper fails to collect the ball neatly. 1+1. All the efforts which is gone in vain in that delivery, because he bowled a wide outside the non-flex stamp. 1+1. 2 extra runs. He bowled 2 very good deliveries. But when he bowls a wide delivery, immediately after that what effort which is made in the previous 2 deliveries, which has gone in vain. And this is what you call the discipline is so important in cricket. And the line and length is so important. And the scoreboard is now moves on to 19 on the board. 19 for the loss of 5 wickets. Harris again bowling away from us. Right arm over the wicket balls. This time went for the reverse sweep. Appeal for like before a chance of run out, and direct hit he is looking for, but he misses umpire. Going for the second and is gone. Oh. There is no possibility of a second run, because I think the non-strike is too far across after trying to pick the single quickly, but the wicketkeeper tried to uproot it the stump, leg by call by umpire, rightly so. Just a single, but out which is not given. And just I want to see it in the replay, why the out which is not given, leg by given by umpire. Maybe the stumps which is uprooted, which is not from the ball. The ball looks like which is yes, ball which is not there in the hands. It's a good decision there from umpire Nasir Bajal. Ball just slipped out of his hand. Wickets are uprooted. That time ball which is ball, I think the bowler missed that one completely from the hand. Batsman survives. They got a single. With their single, scoreboard now moves on to 20 on the board. The last 3 deliveries left in their innings. The batsman Ashraf will go into face. Again swept that one, but and in the air for a while. They're looking for the second. Quick work by the umpire, or asking for the third umpire. How many times in this particular match is umpire Iqbal every time is asking for the third umpire? One more close call. Definitely it's going to be a very close call. And that's why umpire Iqbal doesn't want to take a risk here, because the cricket is all about fair game and need to give the fair decision, isn't it? And of course, wait and see what could be the decision of this one, as also whether the
the bat is in the air or not, while wicketkeeper actually done a fantastic job because it's a quick walk. It's a fast walk, of course, because we can see in the replay it might be the very slower one because of slow motion. That's why it's going to be as this is this is the heartbeat of the batsman, whether it's out or not out. It's out. Batsman is out. His bat is in the air a little bit, and that's why it's out, which is given. So once again, good decision, which is coming from third umpire as well, because need to see that that very close that the bat is in the air. The once again, batsman not dragging the bat. He tried to put the bat on the crease, and that's why he's back into pavilion now. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದರೊಳಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. Straight to the answer fielder. One more run out. It's raining here in the form of run out. It's a fourth run out which has taken place, and wicket number 7 which is back into pavilion. Last ball of their innings is coming up. There's good bowling there for Harris, excluding that wide ball he bowled in the third deliveries, but afterwards he's back very strongly with a very strong line and length, contains the runs for his team. Harris will bowl one good delivery here and the final time in this, but one big good shot which is required for Amimar if they wanted to get a good score here. This time umpire have to wait for that. They're going for the second chance of run out. Umpire says now the umpire want to see whether the deliberate padding or not, because batsman coming down the track. That time the bowler bowled out a little bit in the leg side, and whether it is going to be a run or not, we have to see. Umpire says it's from the bat. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. The batsman, of course, wanted to flick that one off his legs, and rightly so. Umpire says that it's a run, so only one run out taken place, I think so. So 22, which is the total score. Outstanding bowling performance here from Jolly Friends, restricting the against team for just 22 and set a target of 23 to win this match. 23 to win this match. It's a good work there by Harris and all the bowlers of Jolly Friends. Bowled a very tidy line and length, and 23 is going to be a target. Wait to see how well Jolly Friends will going to get this 23 to win this match, and at the same time wait and see how well Jolly Friends will going to get this, how well Memor will going to defend this. Take a short break here in the commentary box, and after that short break I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in national language Hindi. Thank you.
22 the target. 23 young friends Myanmar have to score for victory. And in fact, Myanmar scored for 22 runs scored by Myanmar, and 23 the target for Jolly Friends. And as far as the time is concerned to complete their 5 overs quota, 20 minutes time will be given to complete their 5 overs quota. And the bowlers, please note, young friends, Myanmar's bowler have to complete their quota of 5 overs under 20 minutes. 4 hours quota in fact, under 16 minutes they have to complete. 16 minutes, 4 hours quota they have to complete under 16 minutes. 16 minutes, yeah. So this is the information for the bowlers of young friends Myanmar. They have to complete their quota under 16 minutes, 4 hours quota. Next match, Team Matrix versus Netravati. I request the captains of Netravati and Team Matrix to please report to the stage immediately for toss. So 23 the target for Jolly Friends. Nantur, their innings now going to start, and Tajuddin and Azim the openers. Meantime the bowler is Nasir. I request Netravati and Team Matrix to please report to the stage immediately for toss. Ali kade 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So back to this game. It's 23 the target and the innings now going to start. First ball of their innings is now coming up. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नासिर, जबकि ताजुद्दीन सामना करने के लिए तैयार. ओवर के पहले गेंद चिप किया इस वक्त, एनफील्ड क्लियर करते हुए कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाते हुए. जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, डीप कवर पॉइंट क्षेत्र पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया. खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद पहुंची डीप कवर पॉइंट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और नासिर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यहां पर दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर चलती हुई. और जहां तक सवाल है इस वक्त तक गेंद का, तो नासिर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज ताजुद्दीन सामना करने के लिए तैयार. एक बेहतर शुरुआत की जरूरत इस वक्त जॉली फ्रेंड्स को. अगर उन्हें 23 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो निर्धारित 4 ओवर में. और फिर से एक बार गेंदबाज दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार चिप किया ऑफ द टोज एंड आई थिंक इट टेकन जस्ट इनसाइड द फेंस. ऑफ द टोज गेंद को उछाला था, लेकिन प्लेसमेंट वाज टू रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही पेड द पेनल्टी फॉर दैट. So first wicket gone for Jolly Friends, and young friends Myanmar got the first breakthrough. It's 2 for 1 in the first over. और इस स्ट्रोक को आपने देखा होगा, ऑफ द टोज गेंद को उछाला था लेकिन प्लेसमेंट बिल्कुल तो और तक हो चुका है Jolly Friends. तो अगले हमारी टीम और कि दोनों और के ग्राउंड पर मैदान और फ्रेंड और fifth match of the 3 of Netravati Trophy 2022 is now दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सभी कार्पेट गेंद तो चला चाहते विकेट कीपर रन यहाँ पर नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर किस्मत के बल अनुसार
विजय दर्ज करते हैं या नहीं। तो इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को फ्लिक करना चाहा, अंतिम क्षण में वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। कुल मिलाकर पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और निस्संदेह यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बराबर का टक्कर जारी है। और फिर से एक बार गेंदबाज नासिर गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। 6 से 7 कदम उनका रन अप, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेटर लाइन, द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नासिर। और ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಓವರ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸದಸ್ಯನನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕೂಡಲೇ. तो यहाँ पर नासिर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार चिप किया लॉन्ग ऑन पर, कैच नंबर 2 इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर के लिए इस ओवर में। इस बार मच स्ट्राइटर गेंद को उछाला था, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को बखूबी लपक लिया। तो पहले ओवर समाप्त होने के बाद इस वक्त एक लड़खड़ाती हुई शुरुआत, एक गेंद बाकी है इस ओवर में, तो 5 गेंदें हो चुकी हैं और स्कोर इस वक्त है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर जॉली फ्रेंड्स नंतूर संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है। So welcome back once again, and 5 balls gone in their innings of Jolly Friends Nantur.
they managed to score 3 runs on the board, 2 wickets lost for them, 2 top enders wickets already back into the pavilion. और जहां तक सवाल है इस ओवर की अंतिम गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त नासिर गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, जबकि नए बल्लेबाज 19 का आगमन यहां पर हो चुका है। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए कप्तान यंग फ्रेंड्स में मार के और अपनी ओर के अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज 19 इस वक्त सामना करते हुए, गेंदबाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद। रिवर्स शॉट, टॉप एज, दिस कुड बी अ चांस, इन फैक्ट इट taken just outside the 20-yard circle, and one more wicket for Nantur, and now they are looking deep in trouble. इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनके टॉप एज पर टकराई और एक बेहतर किया जब और फील्डर ने लपका। पड़ेगा जॉली फ्रेंड्स नंतूर के ऊपर परेशानियों के बादल मंडराते हुए। तो पहला बेहतरीन ओवर यहां पर फेंक चुके हैं नासिर, सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए 3 विकेट इस ओवर में वो प्राप्त करने में सफल। जो 3 रन उन्होंने प्रदान किए उनमें से एक वाइड है, यानी सिर्फ 2 रन उन्होंने बल्ले के रूप में प्रदान किए हैं बल्लेबाज को। 3 ओवर और रन पर 3 ओवर they have to go for running through with the help of means runs they have to score their 18 और गेंदबाज पर शुरू करते हैं और फील्ड पर दूसरा ओवर की नंतुर पद हो या और इस वक्त शुरू करते और 1 रन स्कोर बढ़ पहुंच चुका रनों पर। और अपने आगे बढ़ाते हुए पर कुछ फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए गेंद क्या खूब और 1 रन स्कोर कर पहुंच कुल मिलाकर 5 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 5 for the loss of 3 wicket in the over number in progress. Long on deep mid wicket, deep इस वक्त है ना डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप थर्ड ना ठीक सीमा रेखा के पास मौजूद ओवर की पहली गेंद अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाजी ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिडलिंग एट द लास्ट मोमेंट, ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट और इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। दूसरा ओवर यहां पर पकड़े पर कुल मिलाकर 9 गेंदे उनकी पारी में फेंके जा चुके हैं, 6 रन अब तक जोड़ चुका, 17 रन और बनाने हैं और गेंदे बाकी हैं 15। 17 runs they have to score for victory in remaining 15 deliveries. Still the equal battle is now on. और फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त फ्लिक कर दिया, कदमों के सहारे डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद, 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर सफान क्रीज पर मौजूद सफान और आजीम दोनों बल्लेबाज साझेदारी पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश यहां पर करते हुए और समद गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट टॉप गेंद इस वक्त निकल चुकी है बैकवर्ड थर्ड मैन पर, 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 2 रन मिल चुका है बल्लेबाजों को।
गेंद के उछाल को भापते हुए विद ट्विस्टेड पैड गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था रिवर्स शॉट के तौर पर, और आखिरकार डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और इस ओवर में अंतिम बार समर्थक गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। शाम का वक्त लगभग 4 यहां पर बच चुके हैं। धूप इस वक्त धूप का अस्तित्व मैदान पर मौजूद, गर्मी की तीव्रता जरूर इस वक्त कम हो चुकी है लेकिन धूप का अस्तित्व इस मैदान पर मौजूद है, और हवा का रुख काफी तेज है। जैसे सीमा रेखा के तट पर जो रंग बिरंगे झंडे इस वक्त गाड़े गए हैं वो इस वक्त जिस तरह से लहरा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख कुछ हद तक तेज है। गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 10 रनों पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 2 overs have been bowled, 13 runs to get and 12 balls remaining in their innings. Still the match is equally balanced. और इस वक्त काफी लंबी बातचीत चलती हुई यंग फ्रेंड्स म्यांमार के खिलाड़ियों के बीच में कि अगला ओवर किसको दिया जाए। बातचीत इस वक्त जारी है और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया मैच जल्द से जल्द आगे बढ़ाए। दोनों टीमों के सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाए, क्योंकि इस मैच के बाद 4 मैचेस और खेले जा रहे बाकी हैं, और यहां पर बातचीत अभी भी जारी है। और लंबी बातचीत के बाद इस वक्त काफी लंबी बातचीत के बाद इस वक्त गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा जा रहा है। गेंदबाज नंबर येता है ना जर्सी अशरफ गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए 12 गेंदें बाकी हैं और रन से चाहिए इस वक्त 13। पहली गेंद अशरफ की ऑन साइड पर गेंद को फ्लिक कर दिया, कदमों के सहारे गेंद पहुंची शॉट्स को लेग पर जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। अब कुल मिलाकर रन से चाहिए 12 जबकि गेंदें बाकी है 11। 12 runs to get from 11 deliveries. What a match is now progressing here. और फिर से एक बार अशरफ गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ की गेंदबाज का ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्कूप किया इस वक्त। गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 12 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. 10 balls to go and 11 runs required. अशरफ अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, और इस बीच 1 रन का इजाफा लेग बाय के रूप में पॉइंट पर गेंद को फीड कर लिया गया था, और इस बीच 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 10 रन और चाहिए विजय के लिए। गेंदें बाकी हैं इस वक्त 9, और फिर से एक बार अशरफ अपनी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेला इस वक्त पॉइंट की दिशा में फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। He just wanted to play that one over the fence at deep back on the third man with a reverse shot. Not succeeded. Not quite get that one right from the mid of the bat at the last moment. और गेंद deep back on the third man पर जो फील्डर खड़े हुए थे सीधे उनके हाथों में पहुंची, और यहाँ पर ये विकेट नंबर गिर चुका है 4। तो यहाँ पर विकेट गिर चुका है सफान का, और 13 रनों के योग पर 14वां विकेट यहाँ पर खो चुका है जॉली फ्रेंड्स नंतुर पदो यानी बजाल। एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त बिद्रा मीडिया पर किया जा रहा है, जनाब इरफान इनके सारथ्य में, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला
नेत्रावती ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया फ्रेंड्स शांति नगर ने। और आज इस दिन का 5वां मैच यहाँ पर प्रगति पर। नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है, साहिल, और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद अशरफ की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई, अभी भी 4 खिलाड़ी 20 गज की दायरे के अंदर तैनात। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। अशरफ, साहिल के लिए ये गेंद इस बार बाहर, और और इस बीच यार ये रिवर्ट को इस वक्त बन के दिशा में गेंद 1 रन का इजाफा यहाँ चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर और बता 2022 अंतिम दिन के चलते हुए, और यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में और वृद्धि यहाँ पर होती जाएगी। और इस बीच अंतिम ओवर शुरू होता हुआ जॉली फ्रेंड्स बजाल की पारी में, और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए नवाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 7 रन चाहिए। तो इस वक्त कुछ बातचीत चलती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में बल्लेबाजी के रणनीति यानी टैक्टिक्स के बारे में, और अब दोनों बल्लेबाज अपने स्वस्थान पर लौटते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। नवाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट, मैच निर्धारित ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त जॉली फ्रेंड्स की बात में। राइट, द फर्स्ट बॉल ऑफ द लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इज कमिंग अप। नवाज बॉल्स पहली गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहा, और इसी के साथ विकेट यहां पर गिर चुका है, और इस बार बल्लेबाज दौड़कर इस वक्त जा रहे पेविलियन की ओर, और यहां पर विकेट उखाड़ा गया है। और इस बीच अपील करते हुए सारे खिलाड़ी यहां पर कि बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर के आउट है। तो वहां पर क्या हुआ था सही तरीके से हमें यहां पर पता नहीं लगा, लेकिन एक बल्लेबाज उनमें से पेविलियन वापस लौटता हुआ। तो विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। शाहिल आजिम की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है, और कुल मिलाकर 16 रन के ऊपर 5वां विकेट खो चुका है। अब 7 गेंदें बाकी हैं, और 7 रन बनाने हैं, और 5 गेंदें बाकी हैं। 7 runs they have to score for victory in remaining 5 balls। और इस संदिग्ध मोड़ पर इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज के रूप में, तो अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। और बल्लेबाज अजहर 11 नंबर की जर्सी पहने हुए इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए, और कल टोटपटोस खाना के खिलाफ
इन क्रिकेटर्स के अजहर ने छक्का और चौका लगाकर मैच को उनकी टीम को विजय दिलवाई थी और देखना यह है कि ये अजहर इस वक्त अपनी टीम को विजय दिला पाते हैं या नहीं। तो दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त शॉर्ट रन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स विद जस्ट 6 runs they have to score for victory in remaining 40 overs. Absolutely fantastic match is now progressing here. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए नवाज और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज साहिल। तो अगली गेंद लेकर इस वक्त नवाज इस वक्त गेंदबाजी करते हुए 6 रन चाहिए, माफ कीजिए इस वक्त 6 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं। इस बार गेंद को उछाला एक्स्ट्रा कवर पर इनटू द गैप और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ यहां पर जॉली फ्रेंड्स इस मैच को बेहतरीन तरीके से जीत चुका है। शाहिल के बल्ले से यह छक्का लग चुका है। निस्संदेह देखिए किस तरीके से इस वक्त उछाला था गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रिवर्स शॉट प्लेड एंड ही जस्ट गॉट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एंड दैट Stokes brings a 6 and with that 6 Jolly Friends registered a thrilling victory against Young Friends MMR and with that victory they are through to the next round of this competition. So what a fantastic match ended a short while ago. The next match is now going to begin between Team Matrix versus Netravati and that match starts within just short while. Team Matrix Mangalore will going to face Netravati and that match is now coming up live exclusively right in front of you within just short while. Till then we're taking a short break and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English where the next match will going to begin right after the short while. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. So the man of the match of this match goes to the man who hit a 6 and brings his team to the victory. And the man Sahil adjured the man of the match who hit a 6 and at last has got the victory for his team. I request Sahil please come on to the dais and receive the man of the match award from Mr. Ayub Shantinagara. I request Mr. Ayub Shantinagara please distribute the man of the match award for Sahil because of his great effort of winning 6.
Welcome back once again, and match will going to start here between Netravati versus Team Matrix, and after winning the toss, captain of Netravati friends elected to field first, and they're on the field. And I request opening batters, of course, they're walking towards the middle here, and for Team Matrix, and it's going to be a very good match here. So everything is ready here for the match, and Netravati captain Mansoor won the toss, selected to field first, and opening batters of Team Matrix came into middle here, and wait and see how Team Matrix will go in to get the victory here. In the previous match, Team Matrix they defeated very formidable and very strong opponent Deadly Boys Kankanadi in their first match. It's a big upset of this group when Team Matrix defeated Deadly Boys Kankanadi, and at the same time Netravati really played a very good game of cricket against the superstar Maluru, and they are into the next round of this cricket tournament. The winner of this match will going to play against Jolly Friends Nantur. Now what a match is. Previous match outstanding when it's the 6 weeks required for the victory, and the match which is finished in a style by Sahil of team Jolly Friends. First ball and nicely driven, and nicely beginned by the batter. Ismail is off the mark with a single. This one without loss of any wicket in the first over is in progress. Shanawaz, one more the big name in underarm cricket. Shanawaz bowls right arm over the wicket, and beautiful driven, absolutely fantastic cover drive. Ball running down to deep cover boundary. Excellent piece of fielding there by the fielder. It's a really great save there by the fielder. It's not so easy in this particular cricket ground to stop the ball, but it's definitely just a sliding in the direction. It's not so easy to slide, isn't it? And if you can slide in the grass ground, but in the kind of ground like this, sliding is always going to be difficult, and he almost slides that one to stop the boundary for his team. The outstanding effort that from fielder, and altogether it's a very good game of cricket in the middle, as the batsman played an exquisite extra cover drive, and at the same time the fielder chasing the ball like a cat chasing a mouse, and able to stop the boundary. And that's just a couple of runs. With that couple of runs, Coburn numbers on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Rizwan again will go into face next delivery there from Shanawaz. Shanawaz is bowled outside the line of leg stump. Wicketkeeper fails to collect the ball. At the same time, umpire not missing the opportunity. Anif to signal the wide, and one more single is added to total. With that single, Coburn numbers on to 5 on the board without loss of any wicket. Need to restrict all these extra runs of Netravati if they wanted to win the match, because they're playing against a Team Matrix, one of the favorite of coming to the finals of this prestigious cricket tournament. Right, over the wicket balls again. Balled him, clean him up. It almost looks like he drags the ball into the stump, tried to play the reverse sweep. Ball got inside edge of the bat and disappeared into the stumps, and wicket number first, which is back into pavilion of Team Matrix. Just look at that one in replay. Almost the batsman tried to play the reverse sweep, but seeing the fact that ball is on the middle end of stump, he couldn't manage to get that one right from the middle of the bat. He's got an inside edge of the bat. Just want to say once again that replay, and what really happened here. Absolutely, he drags the ball into the stumps and is back into pavilion. So good piece of bowling there by Shanawaz. Good comeback, and with that wicket, Netravati there looks like
they got one big wicket for his team. It's 5 for the loss of one wicket in the over number first in progress. New batsman in. Ramesh is a perfect cricketing body language. He's got a very good physique. He's got a very good height as well, and he will going to face Shanawaz. Right arm around the wicket to the right hand batsman Ramesh. The power play is on, and only one power play in that 4 overs format of games as he bowls right arm. This time reverse flip straight to the hands of cover point fielder. Second wicket here for Shahnawaz. Back to back 2 wickets. Ramesh playing his first delivery. Tried to play unorthodox cricketing stroke, that is a reverse stroke. One batsman already back into pavilion has tried to play the same shot, and again same thing is happened here. Ramesh tried to play the reverse sweep, not really able to keep it down, not really getting that one from middle of the bat, and a very good catch taken there by the fielder at short cover point. Riaz of Sports Spinner is taken a wonderful catch down at short cover point region, just a little bit jump to cut that catch, and wicket number 2 which is back into pavilion. One of the very good supporter of cricket and proprietor of Sports Spinner, Riaz. Yesterday is also contributed and contributed for some encouragement prizes for the cricketers, especially for Azhar when he finished the match by hitting a 6 and boundary, 2,000 rupees, which is given to Azhar by Riaz of Sports Spinner. Shanawaz, hat-trick opportunity for him. Right arm over wicket, beautifully bowled, perfect delivery to ball to the new batter, and Shanawaz is really good, looking pretty good in this particular over after he bowled some extra deliveries in this over, but he still managed to get back into this line and length very strongly. The final time in this over is bowling to the right-hander batsman, the new batter Munna. Shanawaz, round the wicket he bowls. This time tries the run like a blazer straight to the answer fielder. They're going for the run, but going against that one. Shanawaz thought that the batter's going for the single, but the batter's not really interested for that run rightly. So wickets approved it, but no damage done. Good over completed by Shanawaz. After completion of over number 1, Team Matrix lost the toss, asked by the opposition team to bat first. They managed to score 5 by losing 1 wicket. And 2 wicket in fact, and 2 wickets is back into pavilion of Team Matrix in the bowling work, Shanawaz. So next match, the winner of this match will go into play against Jolly Friends, and after that I think Red Wings Kunjat Bajal, they are entered into the semi-final in other group. They're waiting for the semi-finalist of this group, which is progressing here. This is the last free quarter-final match of Netravati Trophy 2022. So Disti Asan is a new bowler brought into attack from the commentary box end. Disti Asan bowling round the wicket to the right-hander batter Rizwan tries that one nicely down to deep cover point region. Shanawaz, the fieldsman there in the deep cover point region, fields the ball and returns the ball, and ample time for the batter to complete the single. So with that single, scoreboard moves on to 6 for the loss of 2 wickets. Team Matrix searching for some good score here, as they got lost 2 wickets in the first over of the power play. Again, right arm round the wicket, Hassan bowls. This time batsman tried to trap the ball, misses it completely. Wicket keeper completely missed out that from the hands by call by umpire. Frustration for the bowler, frustration for the captain of Netravati.
The bowler managed to defeat the bat, but wicketkeeper not anticipating right behind the stump. And one more addition to the addition of that single scorer Namozan to 7 on the board for the loss of 2 wickets. And here in number second in progress. This the balls. This time chip that one quite deliberately. Nice looking try there from the batter. Rizwan in the negation. He's looking so confident in the middle as he picks up single down to go long off revision. And with that single scorer Namozan to 8 on the board for the loss of 2 wicket here in over number second in progress. In this particular over, both the batters are rotating the strike. This time bowler's back drive, powerfully driven, off stop by bowler this stage. Hassan trying for the run out, but this time batsman is safe in the negation. Good stop actually, because the batsman Munna driven that one powerfully back to bowler and reacted very quickly there by this Hassan. It's not easy when batsman hitting pretty hard back to bowler. Need to have a quick reaction, stop the ball, and he's just bending down, stopping the power of that strokes very well. And just a single for the batter. With that single score, Namozan to 9 on the board for the loss of 2 wickets. And slowly and steadily, Rizwan and Munna, 2 batters of Team Matrix, to try to get some score in the second over. Dilti Hassan. Right, number 1 wicket he bowls. This time going for the big shot, chance of run out in non-second, and this time Mansoor, the fieldsman there in the short mid-wicket region, trying for the run out, but not really able to stop the single from these 2 batters. With that single score, Namozan to 10 on the board. Mansoor is the backbone of this cricket tournament. Of course, it's not so easy to organize a cricket tournament like Netravati Trophy 2022, with one of the most prestigious cricket tournament, and being the this time, that one absolutely ball went like it trace a bullet, and the fielder is really tried his level best again. Riaz is a fielder there in the short extra cover, is tried to dive to his right to take that catch, but ball just going away from his trying hands, and a couple of runs has been taken in between, and with that couple of runs scored Namozan to 12 on the board. 2 overs completed. After completion of over number 2, it's 12 on the board. Last 2 overs remaining in the innings of Team Matrix, and wait and see how Netravati will go into contain the runs of Team Matrix. Good comeback by Team Matrix after that shackling start. They lost 2 wickets in the first over by scoring 5 runs, and in this particular over they managed to get 7 runs, and that's why their total score is 12, and it's 6 runs per over the run rate progressing for Team Matrix. Very good crowd out here. This is a day number final of this 3 and final day of this cricket tournament, and we can see that just like the yesterday, we can see that crowds slowly gathering in this cricket ground in either side of the wickets, either side of the ground, the right and left side of ground. The spectators enjoying the game of cricket, and thanks to the organizer for providing that a wonderful opportunity for the cricket lovers of Shantinagar to watch some good players, good teams in this particular cricket ground. It's not so easy, but it's a very successful cricket tournament is in progress under the leadership of Mansoor. Now the batsman just claiming the quality about the ball there, and umpire have to see the quality of the ball and wait and see. Umpire saying there's nothing wrong with the ball, and need to continue that one. And a new bowler Aziz brought into attack. Aziz will go into ball the 3rd over of the innings of Team Matrix. Rizwan. Again Rizwan not heavy. Now asking the square leg umpire Iqbal to check the ball. And Iqbal is so experienced campaigner. Everybody knows that Iqbal, famously known as Gori Iqbal, and he's saying that yes, it's okay to continue. And if I want to remind you, the same thing has happened in the previous match when NM Cricketers Mangalore playing against Torpedoes Kano. Then Azhar is just complaining about the ball, the quality of ball after checking the ball, but he hit the 6. He hit the 6 afterwards and hit one boundary as well. After saying that ball is very soft, ball is not going very well, but he cleared the ground at the very important time. And that's what maybe the Iqbal is suggesting about that. It's carry on your game. The ball is good enough to continue as Aziz bowling from the commentary box. And long run up, bowling with the run up, right arm over the wicket. He bowls again.
Again, ball coming into the batsman in the relegation, deflected from the leg of the batsman, and I think the batsman hitting the leg from the bat, so that is just feeling pain here. It's all happening in cricket. Of course, the shoes which is protected him from the injury. Otherwise, the bare legs definitely going to be a big injury for the batter. Sometime when you are trying to hit the ball pretty hard, the misses the ball, then you are hitting your boot. And anyhow, single is taken. Scoreboard is 13 on the board for the loss of 2 wicket. Right now over the wicket, Azim balls went for the sweep shot. A very good field placement in delegation there by the captain of Netravati, keeping one fielder in the fine leg region. There is no usually there no most of the teams not keeping fielder in the fine leg, because there is probably the one run. But Netravati knows that, captain knows that the singles is also very important. To saving the single is so important. Then the one more run, which is going to be a possibility there, but because of that excellent field set, they stop that single as well. Score remains on 13 on the board. Aziz, right over the wicket. Munna drives up hastily, and fielder trying for the catch. Absolutely fantastic piece of fielding there by the fielder. It's not so easy. I want to say that the fielder just in number 33, but here is appeal for run out, but out and outstanding fielding there by the fielder. Nasir, the fieldsman there, I want to really loves this the body language way that he is charging for the catch. Once he realized that he couldn't manage to take the catch, he putting his body behind that ball, so that ball not to miss his body, and if he miss the ball, then ball definitely going to reach the boundary. Good technique which is implemented by Nasir in the delegation to save the runs for his team. Good attempt as well, just a single. Score numbers on to 14 on the board. Bowler Aziz, so far looking pretty good. Bowling right arm over the wicket to Rizwan. Rizwan is a very settled batsman in the middle, came as an opener for the side. And this time he is going for the big shot. Appeal for leg before wicket. Umpire says not out, and he's just lifting his leg, saying it's leg by. Might be that ball is a little bit touched fractionally outside the line of off stump. That's why they're not interested. Umpire is not interested, and if he's not interested to call that leg before wicket. But the bowler is so confident after seeing his body language that he is so confident. But sometime happening because the bowler is thinking about that it might be the wicket for him, but umpire in the right position to see where the ball is pitches, where the ball is going to hit. Might be ball missing the off stump. Aziz again bowling with the shot, bowling the run up from the edge of the circle with excellent action. Caught and ball opportunity, and this time Riaz misses it, and grabbing the opportunity to come back for the second. And shouting all around. Shouting all around is going on. The couple of runs is taken in the middle. With that couple of runs, Kopat Namuzan to 17 on the board. Powerfully driven. And Aziz on his follow through tried to stop that stroke, which is powerfully driven by the batter Munna, and a couple of runs which is taken in the delegation. So 17 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Azim once again back to his bowling mark. Riaz was standing at short X coverage and charging to the ball, but misses it completely, so that batsman coming grabbing the opportunity to come back for the second. Aziz again away from us. Right, above the wicket, drives and obviously, but not quite able to get the distance right as he's looking for. Placement is not good enough to get the boundary there, but just a single again. The same fieldsman there in the deep. Nasir there in the deep long on fields the ball, and over number 3 completed. After completion of over number 3, Team Matrix searching for the right track, and they managed to score 18 at the rate of exactly 6 runs per over. Last over remaining in the innings of Team Matrix. Time is exactly 4:32. Needed some quick work. After that, the 3 overs, over will be reduced after this match because of shortage of time. It's already 4:35, so quite understandable. After this, another 3 matches to be played, and in the month of December, it's early sunset.
and at least 6:15 I think it's going to be dark, and that's why we need to finish it off things very quickly before the dark taken place in the evening. So 3 matches to be played after this, and again the bowler from the commentary box, and it's Nasir will going to bowl the last over of the innings of Team Matrix. Right arm round the wicket, balls to Munna. Clever cricket there from Munna, pushing the ball in front of in front of backward point fielder Revision, and asking his partner to take the single. Responded very well by the batsman Rizwan in the other end, and with the addition of that single, scoreboard moves on to 19 on the board. Team Matrix quickly realizing that each and every run going to be very, very important, and more than anything else, Munna wanted Rizwan to take the strike as much as possible, because Rizwan is a very good striker of the ball, and he wanted to get the strike as much as possible in this final over. Nicely swept that one right in the gap. They're running hard, looking for the second. Definitely, there's a good piece of fielding there by the fielder, but the throw is not good enough. Which is not good enough to make that run out, but is a good enough running within the wicket there from Rizwan, charging for the second. Desperately wanted to be in the striker's end, and he made that couple of runs quite brilliantly. So good thinking from the point of view of the batsman is concerned, because if he's not able to get the boundaries and sixes, at least they need to look for some rotation of strike, and converting single into two is so important in this final over, and they got a valuable couple of runs. It's 20 on the board and 21 on the board in the over number last in progress. Last 4 deliveries remaining in this last over. Yesterday, what a fantastic day for cricket. Yesterday, the top seeded team, 6 teams, which really battled hard for this place in the finals, and at last NM Cricketers Bangalore, they through to the finals of this prestigious Netravat Trophy 2022. This time reverse shot comes into play. Fielder is there in the deep, and Shahnawaz, I think so, there in the deep extra cover, will go to finish the catch. The wicket number 3, which is back into pavilion. The partnership between Munna and Rizwan is a very good partnership. It comes to an end, and last over, Nasir produced that breakthrough for Netravati. And good innings there from Rizwan is comes in, and tried to play the big reverse stroke in the relegation, but not really getting the distance what he's looking for, and pays the penalty for that. The scoreboard is 21 on the board. Still 3 deliveries left in this over of the innings of Team Matrix, and wait and see. Just number 22 is walking towards the middle. Mustafa. Mustafa will be the next batter for the side of Team Matrix. He will go into face a 4th delivery of this over. Nasir, a very good fielder, bowling last over here, bowling right arm around the wicket to the right-hander batsman. This time catch it is a call, but the fielder is too far from that catch. Coming back for the second, just an suicider. Absolutely suicider. No chance at all for the second run. But the batsman have to sacrifice his wicket in the relegation. So Mustafa picked up a single. Will going to retain the strike. But the batsman is back into pavilion is Munna. So very good innings of Munna is comes to an end. He scored a valuable runs for his team. 8 runs he scored valuable. So just number 12. Shahid, the very good bowler, Shahid, has came into middle here. He can contribute from the bat as well in the lower in the order. Shahid is in non-seconds end. Mustafa. This time improvising that one by giving the direction towards a gully region for a single. With that single, scoreboard moves on to 23 on the board for the loss of 4 wickets, and last delivery remaining in their innings. Last delivery of their innings. Umpire asking for the ball.
अंपायर एक बॉल, try to remove the shining in the ball because it's a fourth over, last delivery of the innings of Team Matrix. Chip that one in the air, one bounce collected, looking for two. Here comes the throw, chance of run out in the non-striker's end. One more wicket is back into pavilion, the last delivery of the over. That's it. Team Matrix completed their 4 overs quota. After completion of over number 4, they managed to score 24 runs and they set a target of 25 to win this match. They scored the runs exactly at 6 runs per over and set a target of 25 to win the match. Just over 6 runs per over is the required run rate for team Jolly Friends. Jolly Friends, I think, a little bit correction, team Netravati done a great job to prevent their opposition by less than 25, just 24, which is total score. 25 going to be a target, and wait and see how Netravati fans will going to get this 25, and wait and see how well Team Matrix will going to prevent this 24 runs. How will they going to justify this 24 runs? Dhanyawad Satish. So 25 the target for Netravati cricketers to qualify for the quarterfinal of this competition shed by Team Matrix, and their innings now going to start. And 25 they have to score in 4 overs with the required run rate of exactly 6.25 runs per over. With the help of 10 wicket they have to score for victory if they have to through to the quarterfinal of this competition. And their innings now going to start. First ball of their innings is now coming up, and Kishore and Jafar the openers. Meantime the bowler is Nizam, and first ball outside the off stump this time, and wide declared it by umpire, and wide run brings the runs account open for Netravati cricketers. 1 without loss in first over, and now the bowler Nizam comes. निज़ाम गेंदबाजी यहाँ पर शुरू कर चुके हैं और कुल मिलाकर पहला ओवर उनकी पारी का शुरू हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाजी इस वक्त निज़ाम आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त स्ट्रोक्स को लेकर दिशा में रन के लिए दौड़ पड़े, सीधा थ्रो पहुंचा इस वक्त, और इस बार इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर। तो यहां पर देखने वाली बात है कि जब विकेट उखाड़े गए थे तब बल्लेबाज अपना बल्ला
बैट क्रीज पर लैंड कर चुके थे या नहीं. जस्ट वी आर वेट फॉर द अंपायर, थर्ड अंपायर, और देखते हैं वो इस वक्त क्या क्या निर्धार यहाँ पर लेते हैं. तो इस बार इस मैच के बाद 3 मैचेस और खेले जाएंगे, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि कृपया मैच को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं इस थर्ड अंपायर के निर्धार के बाद. He's gone. He fell just short out of his crease when the wicket was flicked by the bowler, and because of that, the first wicket loss for Netravati cricketers. And now they are one for the loss of 1 wicket, and Kishore departs for duck. तो पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बाकी के रनों का, तो देखते हैं यहाँ पर बाकी के रन से बनाने के लिए इस वक्त नेत्रावती के बल्लेबाज किस तरीके की रणनीति टैक्टिक्स बल्लेबाजी में अपनाते हैं. तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर हो चुका है. न्यू बैट्समैन, द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर नेत्रावती क्रिकेटर्स. नौशद इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करते हुए निजाम की गेंदों का. निजाम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नौशद के लिए 3 खिलाड़ी ऑफ साइड पर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, जबकि 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. पावर प्ले के अंतर्गत. और जहां तक सवाल है गेंदबाज का, ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, चूंकि गेंद इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाया, विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया और इस बीच बल्लेबाज को रन से नहीं मिला. तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार. गेंदबाज निजाम 3 बेहतर गेंदे इस ओवर में फेंक चुके हैं. एक वाइड फेंकने के बाद 2 गेंदे फेंक चुके, एक वाइड फेंकने के बाद, और अपनी तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए नौशद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और ये गेंद इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, लेकिन निशाना चूक चुका है यहाँ पर, और बल्लेबाज यहाँ पर बाल बच चुके हैं. That wasn't a certain run out if the throw was directly to the stumps at the last moment. लेकिन अंतिम क्षण में गेंद विकेट से कुछ दूरी पर निकलती हुई और बल्लेबाज यहाँ पर बाल बचते हुए, तो 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है. और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि पहला ओवर उनके पारी का यहाँ पर प्रगति पर. निस्संदेह यहाँ पर एक साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है नेत्रावती क्रिकेटर्स को, अगर उन्हें 25 रनों के मंजिल तक पहुंच रहा है तो. और इस बीच गेंदबाज निजाम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना इस वक्त करते हुए जाफर, और नौशद इस वक्त सामना करते हुए राउंड द विकेट. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्क्वायर ऑफ द विकेट, खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, एकमात्र बल्लेबाज को मिलेगा. गेंद के साथ साथ दौड़कर आ गए वो आगे की ओर, और बल्लेबाज को आखिरकार एकमात्र रन प्राप्त होता हुआ, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद निजाम की, इस बार गेंद को ड्राइव किया जगह बनाते हुए लिमिट ऑफ की दिशा में रन आउट का खतरा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही थ्रो करना चाहा उनके बाजुओं पर कुछ दर्द आई और इस वजह से वो थ्रो नहीं कर सके. आई थिंक इज गॉट अ पेन ऑन हिज शोल्डर व्हेन ही ट्राइंग टू थ्रो द बॉल ऑन टू द विकेट एट द लास्ट मोमेंट बाय द फील्डर. और जहां तक सवाल है इस वक्त अंतिम क्षण में थ्रो इस वक्त वो उन्होंने नहीं करना चाहा, बाजुओं में तो जो दर्द अचानक उठी थी जब वो थ्रो करते समय, तो यहाँ पर बल्लेबाज सुरक्षित 1 रन प्राप्त कर चुके हैं 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया स्लिमिट आउट पर, रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना एक बार फिर से झुका और बल्लेबाज एक बार फिर से बाल बच चुके हैं. तो भाग्य यहां पर साथ देता हुआ बल्लेबाज का, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 25 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस वक्त जोड़ चुका है नेत्रावती क्रिकेटर्स. 20 रन चाहिए बचे हुए 3 ओवर में, यानी 18 गेंदों में. और निस्संदेह यहाँ पर एक
बराबर का संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है। शाम का वक्त, धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है। शाम के 4:45 यहाँ पर बजते हुए, इट्स ऑलरेडी 4 इन द इवनिंग। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वो खेल को यहाँ पर आगे बढ़ाएं, क्योंकि लगभग 1 घंटे के बाद, सवा एक घंटे के बाद 6 बजे अंधेरा हो जाएगा। तो इससे पहले हमें 3 मैचेस खेलने हैं। तो इसलिए मैं एक बार फिर से दोनों टीमों के खिलाड़ियों से निवेदन करता हूं कि कृपया वो जल्द से जल्द मैच को आगे बढ़ाएं। तो इस बार गेंदबाजी शुरू करते हुए हकीम, और सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज नौशद, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त हकीम तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त। ये गेंद, इस बार गेंद को हल्के से मोड़ दिया, पॉइंट पर के लिए निशाना इस वक्त लग चुका है। पावर एक बार फिर से एज घंटी पे थर्ड अंपायर। तो स्ट्रेट क्रॉस एंगल से जो थ्रो फेंका गया था, स्टंप्सों को टकरा चुका है, बेल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। और देखने वाली बात यह है कि तब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या नहीं। तो तृतीय अंपायर यहां पर उस रनआउट का परिशीलन करते हुए, और देखते हैं यहां पर वो क्या निर्धार देते हैं। He's gone. He fell just short out of his crease when throw hit to the stumps, and bells are disturbed. Bells are disturbed at the last moment. He fell just short out of his crease. So second wicket gone. Jafar Dhawan dismissed, and now Netravati cricketers are now looking in trouble. It's 5 for 2 in the over number 2 in progress. So still in overall calculation, it's going to be 17 balls left in their innings, and in remaining 70 balls, still they have to score 20 runs more, score for victory. Still they have to score 20 runs more for victory. So the new batsman, number 4 batsman, is now coming out to the middle for नेत्रावती cricketers, और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए उन्हें कुछ समझाते हुए, अन्य खिलाड़ी नौशद इस वक्त की किस तरीके की बल्लेबाजी इस वक्त उन्हें अपनानी चाहिए। नासिर नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और 2 विकेट गिर जाने के बाद एक दबाव इस वक्त नजर आता हुआ नेत्रावती क्रिकेटर्स के ऊपर, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है उन्हें। एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप इस वक्त उन्हें सही मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए हकीम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डर्स इस वक्त मैदान पर छाते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर हकीम गेंदबाजी करने के लिए तैयार। तो डीप मिड विकेट इस वक्त तैनात ठीक सीमा रेखा के पास, और लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ इस वक्त मौजूद, जबकि कोई डीप बैकवर्ड थर्ड मैन पर एक फील्डर इस वक्त मौजूद है ठीक सीमा रेखा के पास। और ओवर की अगली गेंद लेकर हकीम तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस बार शॉट स्वीप किया है, फुल किया है, कहना पड़ेगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, लेकिन गेंद गई 2 स्क्वायर। अगर थोड़ा सा सीधा जाता स्ट्रोक तो गेंद सीमा रेखा को पार कर सकती थी छक्के के रूप में। खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त स्विंग किया था अंतिम क्षण में, और आखिरकार गेंद सिर्फ 1 रन बल्लेबाज को मिल पाया, क्योंकि गेंद काफी स्क्वायर इस वक्त गई थी। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। और एक बार फिर से गेंदबाज हकीम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, तो रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ खेला था पिछले गेंद पर, और दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। और एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त गेंद को हल्के से पुश कर दिया, खूबसूरती के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ 1 रन मिलेगा इस बीच। इससे पहले कि स्वयं गेंदबाज गेंद को फील्ड करने के बाद नॉन स्ट्राइक रन की ओर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर
7 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। It's 7 for the loss of 2 wickets in the open number, second in progress. Still the equal battle is now on और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट हकीम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार। हर गेंद पर इस वक्त संघर्ष जारी है और हकीम की यह गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद पहुंची शॉट को लेग पर और इस बीच एक रन बल्लेबाज को मिला और इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर, जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर पकड़ते पर तो अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर शॉर्ट फाइन लेग फीडर के हाथों में, विकेट कीपर को बीट करने के बाद एक रन फिर से मिलेगा। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और निस्संदेह यहाँ पर चौके और छक्के लगाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं नेत्रावती के बल्लेबाज, लेकिन उसका कोई मौका इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे हैं गेंदबाज टीम मैट्रिक्स के। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाज हकीम गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट माफ कीजिए, इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। Swept straight to fielder. This could be in trouble. In fact, just we have to wait. Just we have to wait for the third umpire. Once again, a work for the third umpire. Just we have to look at it. Not out. He survived in this delivery. और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, काफी नजदीकी मामला था, लेकिन अंतिम क्षण में बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे, उनका बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था जब तक विकेट यहां पर उखाड़े गए थे और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन और अब चाहिए 15 रन, गेंदें बाकी हैं 12, 15 to get from 12 deliveries, exactly 7.5 runs per over they have to score for victory। और गेंद की परीक्षा यहां पर करते हुए अंपायर और एक बार फिर से गेंदबाज को गेंद लौटा दिया गया है। तीसरा ओवर शुरू करते हुए गेंदबाज और बल्लेबाज दाहिने हाथ के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त चलती हुई, धूप कुछ हद तक धूप का अस्तित्व मैदान पर मौजूद, सूरज दाएं अपने मैदान की दाईं और अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है और धीरे धीरे इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ इस मैदान पर रोशनी भी कम होती नजर आती हुई। और एक बार गेंदबाज इस बार रियाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो कोई भी बल्लेबाज अगर नेत्रावती क्रिकेटर्स के छक्का लगाता है तो उसे 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर घोषित किया है। रियाज जनाब रियाज ने 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर घोषित किया है। नेत्रावती के किसी भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो 500 रुपए का नकद पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। देखते हैं इस 500 रुपए का नकद पुरस्कार कौन प्राप्त करता है छक्का लगाने के बाद। तो 15 रन चाहिए इस वक्त और 12 गेंदें बाकी। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट ये गेंद इस वक्त स्वीप किया, इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा और हर छक्के के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार जनाब अयूब केबी ने घोषित किया है। नेत्रावती क्रिकेटर्स के किसी भी बल्लेबाज के लिए हर छक्के के लिए 1000 रुपए का नगद पुरस्कार, हर छक्के के लिए 1000 रुपए, हर चौके के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार इस वक्त घोषित कर चुके हैं। और इस बीच और अजहर फैसल नगर जनाब अजहर फैसल नगर ने भी 1000 रुपए नकद पुरस्कार घोषित किया हर छक्के के लिए। तो
तो इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, चूंकि लगभग अपील, लेकिन अपील को नकार दिया अंपायर ने क्योंकि गेंद कुछ हद तक लक्ष्य से बाहर की ओर निकल रही थी। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 13 रन चाहिए विजय के लिए, गेंदे बाकी हैं 10। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर। और फिर से एक बार गेंदबाज रियाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, स्क्वायर की दिशा में गेंद जाती भी, क्लीन कलेक्शन, एक मात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। इस बीच थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। 12 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी। हर छक्के के लिए 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार रियाज और अयूब केवी के ओर से घोषित किया गया है नेत्रावती के बल्लेबाजों के लिए, और हर चौके के लिए 500 रुपए का नकद पुरस्कार रियाज इनकी ओर से घोषित किया गया है नेत्रावती के बल्लेबाजों के लिए। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर क्लीन कलेक्शन, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है स्ट्रेट ऑफ द स्टंप्स। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका एकमात्र रन प्राप्त करने का, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा था लेकिन उतना कुछ प्लेसमेंट खास सही नहीं, और इस वजह से बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन प्राप्त हुए। 14 11 to get from 8 deliveries. What a fantastic match is now progressing here. दर्शक खामोशी के साथ मैच का मुआयना यहाँ पर करते हुए, और फिर से एक बार रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर की और गेंद फेंकी, 9 सेकंड के बल्लेबाज काफी आगे निकल आए लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए वाइड का इशारा। अब रन चाहिए 10, गेंदे बाकी हैं 8 गेंदे 10 रन। निस्संदेह बेहतरीन प्री क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर खेला जाता हुआ नेत्रावती और टीम मैट्रिक्स के बीच में। और फिर से एक बार इस वक्त गेंदबाज को कुछ समझाते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी, और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तो सामना इस वक्त करने के लिए तैयार नौशद, और इस बीच अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। रियाज नौशद के लिए, इस बीच 5 बार जमीन पर गेंद टिप्पा खिलाने के बाद यह गेंद स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रन। रन अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और कुल मिलाकर इस ओवर में गेंदे बाकी है 1, अब कुल मिलाकर गेंदे बाकी है 7 उनकी पारी में, और रन चाहिए 9 रन टू गेट फ्रॉम 7 डिलीवरीज। दर्शकों से लगभग इस वक्त ये मैदान जो कि भर चुका है, शाम का वक्त, धूप अब प्रकट हो चुकी है, सूरज जब बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को यहाँ पर फैलाता हुआ, और यहाँ पर मुकाबला जारी है इस प्रखर धूप तले। और इस बीच गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, सही निर्णय अंपायर का, गेंद तक पहुंचते हुए इस वक्त फील्डर रहा। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, तो 1 रन इस वक्त मिल चुका है। स्कोर है इस वक्त 17, तीसरा ओवर पूर्ण हो चुका है। 8 रन चाहिए 6 गेंदों पर, 8 to get from 6 deliveries, 7 for tie, 8 for win, and they got 8 wickets kept intact, 8 wickets they got in their hand. तो विकेट्स इस वक्त कुछ मायने नहीं रखते, इस वक्त मायने रखता है गेंद और रन। तो यहाँ पर काफी बातचीत इस वक्त चलती हुई, और 8 रन इस वक्त चाहिए 6 गेंदों पर, और देखते हैं अंतिम ओवर के रूप में कौन सा गेंदबाज को इस वक्त गेंदबाजी पर टीम मैट्रिक्स के कप्तान उतारते हैं। ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. So last over starts and the bowler brought into the attack is शाहिद गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर को शुरू होता हुआ नेत्रावती की पारी में। और इस बीच ओवर की पहली गेंद लेकर शाहिद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए 8 रन चाहिए 6 गेंदें बाकी। और मैच का जहां तक विजय का सवाल है, अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। 7 रन बनाते हैं तो मैच टाई होगा, 8 रन बनाते हैं तो मैच पर विजय दर्ज करेंगे। और यहाँ पर शाहिद गेंदबाजी शुरू करते हुए,
सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज नासिर, जबकि नौशद नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद। पहली गेंद इस वक्त शाहिद की नासिर के लिए, और दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और मैच निर्धारित ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। So the last over of the match is now coming up. इस वक्त फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए फील्डर्स, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। 8 रन चाहिए 6 गेंदों पर, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त शाहिद गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए। अली दयविಟ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು। 8 runs to get from 60 deliveries. So first ball, here he comes. Shahid. Over की पहली गेंद लेकर तैयार। 8 runs to get from 60 deliveries. Right arm round the wicket in fact. First ball outside the off stump, and no signal came from a bat. Right delivery. 8 to get from 5 deliveries. And now the equation seems to be a stiffer a little bit for Netravati cricketers. 8 to get from 5 deliveries. और इस बीच हर गेंद पर रन बनाना इस वक्त जरूरी बन चुका है नेत्रावती क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के लिए, और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका है मैट्रिक्स के गेंदबाजों के लिए। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद और रन के बीच में कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए शाहिद, तो अगली गेंद लेकर इस वक्त शाहिद तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद इस वक्त वो बेहतर फेंक चुके हैं, ऑफ से कुछ ज्यादा बाहर की ओर गेंद नहीं निकल रहे थे, और सही गेंद घोषित की गई थी। और इस बार फिर से अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाह चुके, संपूर्ण का मौका गवाते हुए, और इस बीच बेहतरीन तरीके से कैच गेंद को वहां पर लपक लिया है। और देखना यह है कि वहां पर बल्ला और गेंद का संपर्क हुआ था या नहीं, और वहां पर बल्ले का बाहरी किनारा लग चुका था। It's gone outside edge on that when he trying to hit the ball after being comes down the track, और brilliantly, absolutely fantastic catch taken by the short third man fielder, just diving towards to his right side to grab the ball just over the ground। और न सिर्फ उन्होंने विकेट गिराया बल्कि एक रन भी अपनी टीम के लिए बचाया। हर रन बेशकीमती, और इस बेहतरीन कैच की बदौलत यहाँ पर विकेट गिर चुका है नेत्रावती क्रिकेटर्स का। 4 गेंदें बाकी, 8 रन चाहिए। 8 runs to get from 4 deliveries। अब कुछ हद तक लक्ष्य समीकरण कठिन होता हुआ, और कम से कम एक करारे स्ट्रोक्स की जरूरत है, कम से कम एक चौके की जरूरत है इस मैच में कमबैक करने के लिए नेत्रावती क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों को। और 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज शाहिद इस वक्त फेंक चुके हैं। नए बल्लेबाज मशहूर का आगमन हो चुका है, और मशहूर को इस वक्त मशहूर होना है तो इस ओवर में उन्हें 8 रन बनाने होंगे और अपनी टीम को विजय दिलानी होगी। तो इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शाहिद, मशहूर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शाहिद दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश किया, स्ट्राइक रोटेट करते हुए शाहिद पहुंचे, लेकिन गेंद उनके हाथों से छिटकी। स्वयं अपने आप से नाखुश, लेकिन एक रन इस बीच जरूर बल्लेबाज को मिला। अब गेंदें बाकी हैं 3, रन से चाहिए 7। 2 ओवर में 14 रन बनाने थे। उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए इस वक्त टीम मैट्रिक्स के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। अब 3 गेंदों में 7 रन चाहिए, लेकिन मैच में वापसी करने का मौका, कमबैक करने का मौका अभी भी है बल्लेबाजों को नेत्रावती क्रिकेटर्स के। हर छक्के के लिए 2500 रुपए का नकद पुरस्कार इस वक्त घोषित किया गया है नेत्रावती क्रिकेटर्स के बल्लेबाजों के लिए। और यहां पर देखते हैं अंतिम 3 गेंदों में क्या होता है। तो 3 बेहतर गेंदें यहां पर शाहिद फेंक चुके हैं। अपनी ओवर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं नौशद, जो कि कुल मिलाकर 6 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए। और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौशद सामना करने के लिए तैयार। यह क्या, ओ इस बार गेंद पहुंची लेग स्टंप से बाहर की ओर, और इस बीच रनआउट हो चुका है और वाइड का भी इशारा हो चुका है। 1 wicket loss and 1 run added to the total, and now 6 of 3। दर्शकों की दिल की धड़कनें यहां पर तेज होते हुए
एक गेंद सही, एक गेंद पर विकेट गिरता है और अगली गेंद गेंदबाज वाइड फेंकते हैं, तो बराबर का संघर्ष यहां पर जारी है और मैच में कशिश अभी भी बरकरार. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಒಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಾಗಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो इस वक्त 3 गेंदे बाकी, 6 रन चाहिए और इस बीच स्ट्राइक इस वक्त नौशद के पास. गेंदबाज इस वक्त तैयार, शाहिद माफ कीजिए गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार उछालना चाहा, पैरों पर टकरा, इसको लेग पर फील्डर पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. अब लेग बाय का इशारा. 5 रन चाहिए, 2 गेंदे बाकी. 4 for tie, 5 for win and 2 balls remaining. What a fantastic match is now progressing here. The pressure is now building up on both sides. विजय के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर जारी है और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए नए बल्लेबाज दिस्टी हसन इस वक्त उनका आगमन हो चुका है. 2 गेंदों में 5 रन चाहिए, 4 विकेट गिर चुके हैं, 6 विकेट सुरक्षित है और इस बीच गेंदबाज शाहिद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. 4 for tie, 5 for win, 2 balls remaining और शाहिद गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस वक्त गेंद को उछालना चाहा, चूके गेंद के पैरों पर टकराई. 1 रन मिलेगा इस बीच और 1 रन के साथ अब अंतिम गेंद पर चाहिए चौका. 4 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट डिलीवरी. अब ऐसा कहना पड़ेगा नेत्रावती क्रिकेटर्स को चौके या छक्के ही अब विजय दिला सकते हैं. अंतिम गेंद पर चौके की जरूरत और 5 गेंदों में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है इस ओवर में शाहिद ने और अंतिम गेंद अब फेंकने के लिए तैयार. अब ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम गेंद पर टीम मैट्रिक्स का भविष्य शाहिद के हाथों में, जबकि नेत्रावती क्रिकेटर्स का भविष्य नौशद के हाथों में. चौके की जरूरत अंतिम गेंद पर. 4 रिक्वायर्ड, 3 for tie, 4 for win and 1 ball remaining. The match deciding ball comes. फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए और तैयार इस वक्त. Here we go. Last ball of the match is now coming up. 4 required, 3 for tie, 4 for win. Last ball remaining and the last ball is now coming up. Here we go. इस बार चूके और इसी के साथ ये मैच 3 रनों से टीम मैट्रिक्स जीत चुका. काफी ढीली गेंद थी लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज पहले बल्ला लगाए, गेंद बाद में आई, फलस्वरूप गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और यहां पर ये मैच रोमांचक तरीके से 3 रनों से टीम मैट्रिक्स जीत चुका है नेत्रावती क्रिकेटर्स के खिलाफ. अगला मैच नेक्स्ट मैच टीम मैट्रिक्स विल गोइंग टू प्ले जॉली क्रिकेटर्स बजाल एंड आई रिक्वेस्ट the captains of these two teams to please report to the stage immediately for toss. And for the next further comments, in fact, the man of the match of this match award goes to man of the match of this match goes to Shahid of Team Matrix, who bowled superbly in the last over and he bagged the man of the match award. I request Shahid of Team Matrix, please come on to the dais and receive the man of the match award from organizer. And the next match starts within just a short while. So Jolly friends are on the toss and what the decision they are taking, just we have to wait and see. And for the next further comments, I would like to invite my friend Satish in English. Thank you. Dhanyavad. Winning the toss to field first and so I request to go for field immediately. The team Matrix, they won the match. What a fantastic match. They've
played against Netravati, but Netravati couldn't manage to complete the match as they were required of the boundary in the last ball. They misses it completely. Then Jolly Friends won the match, and I request all the players, please make after the 2 minutes we played, and the time is exactly 5:15, and within 1 hour we need to complete 3 matches. 3 overs, please note the 3 overs match. 3 overs. No power play in that 3 overs. Please note that there is no power play. ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಕೂಡಲೇ. The semi-final will be played between the winners of this match and against Kunjat Bail. So I request all the players of Red Wings Kunjat Bail, without wasting a time, please complete the formalities of signatures as soon as possible. Opening batters of Team Matrix, please go for bat immediately. ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ರೌಂಡಿನ ಒಳಗಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೈದಾನದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಸೊ Isam to ball the first over, and Ramiz and Ismail are the two batters out there in the middle. So wait and see how Ramiz and Ismail will going to give the start here, as Isam will going to bowl that first over. There is no power play in the 3 overs match, as Isam bowling right arm over the wicket. Start of the last quarter final of this Netravati Trophy 2022. Right arm over the wicket. First ball wanted to sweep that one on the onside region, misses it completely. Wicket keeper also fails to collect the ball, and batsman completed a single in the form of bat. It has come from the bat of batsman Ramiz is off the mark, and Team Matrix they off the mark with a single, one without loss of any wicket. Jolly Friends won the toss, selected to field first. This time tries to run up easily, but quite safely down to deep long on region before the fielder to run towards his left to field the ball. Ample time for the batter Ismail to complete the single. With that single, scoreboard numbers on to 2 without loss of any wicket in the over number first in progress. Short fine leg. Of course, one fielder is in short mid wicket region, one at the deep backward square leg, one at the deep mid wicket and long on, and one deep fielder in the deep cow point region. Now this time batsman is not ready to play the ball, so that dead ball called by umpire, and Isam once again back to his bowling mark. Isham bowled very well in the previous match when he's picked up wickets in the first over, 2 wickets, and now he's bowling with a short run up. Right arm over the wicket, bowls to Ramiz. Ramiz is going for the drive, a slower one, change of pace. The wicket keeper behind the stump in a fraction complete the job, just asking for the umpire for the stump out, but umpire says it's okay. Nothing has happened in this particular delivery. The batsman is safe, and bowler back to his bowling mark. And first over is in progress. Team Matrix tried to get the start here. They defeated Netravati in the previous match. It's a very good match, high voltage match, as Netravati couldn't manage to complete the winning runs what they really wanted. Reverse sweep comes into play, but not more than a single. Harris, the fieldsman there in the short cow point region, fields the ball and completed a single. With that single, scoreboard numbers on to 3 on the board in the over number first in progress. Jolly Friends versus Team Matrix. Winner of this match will go into face
Red Wings Kujat Bajal in the semi-final. Yesterday's the first day match. They qualify for the semi-final. Isam, right arm over the wicket bounce. Beautifully driven, but off stop by the fielder at short mid wicket. They're looking for the second. Again, the fumble from the fielder. It's not a good piece of fielding there by the fieldsmen of Jolly Friends. What could be a certain single because of that misfield by the both short mid wicket and deep mid wicket fielder. The batsman charging for the second. Farooq from the deep mid wicket, little bit fumble, and batsman grabbing the opportunity to come back for the second. With that, couple of runs scored, numbers on to 5 on the board for the loss of without loss of any wicket in the over number first in progress. Isham. So here is announcement for the bowlers. The bowler who picked a hat-trick, they're going to get 1,000 rupees, which is announced by one of the greatest supporter of cricket, Riaz. And wait and see which bowler will go to get the hat-trick here. But here is the first over is completed there by Jolly Friends through Isam. Isam bowled good over, just 6 runs coming from that over. And Team Matrix lost the toss in the quarterfinal, asked by the opposition to bat first. They managed to get 6 runs in the first over. Second over, it looks like Harris will go into ball or anyone. I want to see which bowler will go into ball the second over. And it looks like it's bowler just number 12 is asked to bowl that second over of the innings of Team Matrix. Sahil, I think so, is a bowler. He's been asked to bowl that important second over of the innings of Team Matrix. Both opening batsmen having some conversation about the strategy and game plan about the getting the acceleration of the run rate in this second over. As bowler again back to his bowling mark. Sahil. Right arm over the wicket, went for the reverse sweep, but not really getting that much of enough pat onto that, but managed to complete the single there by the batsman Iqbal, and one more addition to total addition of that single. 7 on the board for the loss of without loss of any wicket. Team Matrix. At least 18 to 20 runs is definitely is going to be a good score to demand, because Team Matrix defended 20 plus runs in the first match. The previous match, wide outside the line of off stump. It's going to be a bonus run here for Team Matrix. It need not do that mistakes in the big matches like this, as Jolly Friends won the toss to field first, and altogether the 8 runs on the board. This time must nicely place it down to deep third man region for a single by Ramiz. With that single scoreboard numbers on to 9 on the board. Without loss of any wicket, over number second in progress. Sahil. Away from us, right arm over the wicket balls. Once again, reverse sweep comes into play. Good piece of fielding there with the fielder, directed from the fielder, but umpire just asking for the third umpire again. The third umpire which is given by this Kuala umpire, Anif, the directed which is taken place, and wait and see will it going to be out or not out. Because in this particular small format of a game like 3 overs match, each and every run going to be very crucial. The good piece of fielding and return from the fielder, directed comes into play, and wait and see whether the batsman Iqbal is safe or not. It's going to be very interesting there. It's always going to be very difficult sometime when the dust is coming out of the ground, when the batsman trying to drag his bat. Is always going to be challenging for the third umpire and even for the technicians of Vedra Media, when you are having a lot of dust coming out while trying for dragging the bat. It is difficult to see the line of popping crease. It's not out called by umpire. Batsman is safe. He drags his bat. That's a very important cricket. I already mentioned in the previous 2-3 runouts, because the runout which is taken place because they try to put the bat into the crease, but when you're trying to drag the bat into the crease, then you're always going to be a safe. The batsman safe in that occasion because he drags his bat in the right time, and scoreboard is 10 on the board. At the same time, the bails which is off little bit late, so that and that's where the batsman is safe. Again, right arm over the wicket, he bowls nicely bowled, ball just going down the leg stump, and umpire suddenly called it's a leg by. One more addition to the addition of that single scoreboard Namuzan to 11 on the board for the loss of without loss of any wicket in the over number second in progress.
Sahil again bowling with a short on right arm over the wicket balls. This time went for the sweep shot, sweep shot down to fine leg division for a single. With that single, scoreboard numbers on to 12 on the board. The over number second in progress. Runs are coming with the singles. Rightly so, team Matrix know exactly the condition. They're reading the condition very well. It's not so easy to get the big shots like bounties and sixes, so that's some dealing with the singles. Again, reverse sweeps comes into play. Again, fumble from the fielder there in that short gully region. But meantime, the batsman Ramiz completed a single. So with the single, scoreboard numbers on to 13 on the board. After completion of over number, it's 13. Without loss of any wicket, team Matrix last over remaining in their innings, and wait and see how many runs team Matrix will going to get. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜೇತರು ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಡೆದಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 6 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೂಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್. Last over will going to start from the commentary box, and the captain of the side, Jolly Friends, Farooq will going to start the proceedings. Went for the reverse sweep, going for the run. Ramesh try to get his run. Umpire says not out. Even this direct hit, I think the batsman is safe. The batsman is safe, and rightly so. Just seeing the body language, because Ramesh is so quick in the negation, so that he doesn't want to take any risk to ask for the third umpire. Rightly so. Naked eye, you can give the decision, and the scoreboard is 14 on the board. Hero of the yesterday match's semi-final, Azhar, is watching here very interestingly. Azhar Malur, again a third man revision, wide call by umpire, a costly one in this situation. If you gives the runs in the form of extra, they need to pay the penalty. When you are going for chasing runs which is over 18 or 20 plus runs, is going to be a difficult one. So a couple of runs which is added to team Matrix, total score is moves on to 16, is all the runs are as a bonus run, as Farooq once again back to his bowling mark. Ramesh facing Farooq. Swept the run, wicket keeper behind the stump gathers the ball quite beautifully, and the wicket keeper completed the job by giving returning the ball to the hands of the bowler, and bowler Farooq complete the formalities of making a run out. A very important dotted delivery there from Farooq. He just made an adjustment because of that previous delivery, which is he bowled a wide +1, and now he's bowled a dotted delivery, and the team Matrix lost their wicket number first, and Iqbal is the man, is back into pavilion replacing him. One more the batters coming to the middle with the jersey number 22, Mustafa is the batsman, will go into face. 4 deliveries remaining. Alright, I'm over the wicket balls to Ramesh. This again good ball, but ball just going down the leg stump because of the extra turn in the ball. At the same time, it's inside edge of the bat, saving the batsman from leg before wicket. With the addition of that single, scoreboard numbers on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. The last over is in progress, and team Matrix tried to get as much as run as possible in this final over. Mustafa is on strike. Bowler Farooq is on a deck. Right arm over the wicket balls. Drives outside edge of the bat. Just a single here for the Mustafa. One more addition to roll addition of that single, scoreboard numbers on to 18 on the board. Last 2 deliveries left in their innings. Ramesh came as the opener for the side. Batting on 8. Reverse sweep comes into play. Completes a single. Trying for the run out. Wide throw coming from the fielder. Isam, the fieldsman, there in the back point region. One more addition to total, and scoreboard moves on to 19 on the board. Last delivery of their innings is coming up.
So last delivery, 19 on the board for Team Matrix. Drives, bowler's back drive. Farooq tried his level best to stop that run, but this time chance of run out. Umpire says it's the third umpire will going to give the decision. Charging for the second, last ball, and if the run out which is taken place, then it's going to be a single run. If not out, which is a call from third umpire, then it's going to be a 2 runs for Team Matrix. And wait and see. I request the fielding team, please come here, jolly friends, because the last delivery, which is last delivery. Last delivery. No ಕೇಳು. Last delivery. So decision will come automatically. So I request the out, which is a call from umpire, third umpire. Just a single run here in the last delivery. Good effort there from the fielder. After completion of over number 3, Team Matrix managed to score exactly 20 on the board, and they set a target of 21 to win the match for Jolly Friends to qualify for the semi-final. So before the innings of Jolly Friends will go into start, it's a time for Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. What happened? What will happen? I doubt so. No, it's impossible. 2 matches of 3 overs will play. It's going to be no. Unless this match should be one-sided. This match should be one-sided. 6:30 ball ko boda. 6 ಕಾಲ್ ಫುಟ ಬಾಲ್ ko boda. Okay, अब ball तो बंदाई को नीचे रहा. For the first ball of the match is knocked up, and the bowler brought into the is and the batsman is for and we are waiting for the first ball of the inning. 21 targets, 7 runs they have to score for victory. And the in right arm going for not connected that one, but single for that और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला पर शुरू हो चुका है. एक रन बिना का टीम मैट्रिक्स को 3 रन प्रति 21 रन पर आने देता 3 ओवर में पर खुल चुका है. फील्ड विकेट बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करेगा. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. और जहां तक सवाल है गेंदों का, तो 2 गेंदें इस ओवर में फेंकी जा चुकी है. तीसरी गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ताजुद्दीन एक बार फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं.
और अपनी अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, गेंदबाज की गेंद ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर रन आउट का खतरा, नॉन स्ट्राइक रन बैट्समैन, इस बार विकेट गिर चुका है, अपना बल्ला बैट यहां पर खो चुके हैं वापस लौटने के चक्कर में, और आखिरकार वापस अपने क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और सीधा थ्रो एक्स्ट्रा कवर फील्डर का पहुंचता हुआ गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने अपना काम तमाम किया विकेटों को चटकाने के बाद। पहला विकेट गिर चुका टीम मैट्रिक्स का आजिम के रूप में, और इस वक्त 2 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है जॉली फ्रेंड्स। तो 2 for the loss of 1 wicket for Jolly Friends in the over number first in progress. Disaster happened for the batsman Azim, unable to return to his crease at the last moment after being lost his bat. और नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एज अ नंबर 3 बैट्समैन। So next batsman is now going to did not strike a run. In fact, he this time swept it away down to a backward square. In fact, they're looking for the second and they come back for the second run this time. One more run out, consecutive run out in the consecutive deliveries for Jolly Friends, and now they are looking deep in trouble. It's 2 for 2 now. तो जोखिम भरा रन, वहां पर दूसरे रन लेना चाहते थे स्ट्राइकर के बल्लेबाज, और अंतिम तौर पर दोनों बल्लेबाज एक क्रीज पर पहुंच चुके थे स्ट्राइकर एंड पर, और आखिरकार सीधा थ्रो पहुंचता हुआ विकेट कीपर के हाथों में, विकेट कीपर ने थ्रो को रिसीव करने के बाद सीधे उन्होंने गेंद को लौटाया यहां पर गेंदबाज के हाथों में, और गेंदबाज ने विकेट उखाड़ दिए। तो दबाव प्रेशर इस वक्त बल्लेबाजों के ऊपर साफ नजर आता हुआ। 3 रनों के योग पर दूसरा विकेट गिर चुका है जॉली फ्रेंड्स का। इट्स 3 for the loss of 2 wickets. तो इस वक्त 2 विकेटों को खोने के बाद कुछ हद तक दबाव जॉली फ्रेंड्स के ऊपर नजर आता हुआ। इस वक्त हर गेंद पर रन बनाना उनके लिए जरूरी बन चुका है, और यहाँ पर गेंदबाज निजाम एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को चिप कर दिया खूबसूरती के साथ, ऑफ द टोस्ट गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दर्शकों से इस वक्त मैदान भर चुका है, देखिए किस तरीके से मैदान के चारों ओर अगर नजर फिराए तो दर्शक ही दर्शक इस वक्त नजर आते हुए, और इस रंगीन इस शाम को और भी रंगीन यहाँ पर करते हुए दर्शक, रंगीन बनाते हुए दर्शक इस शाम को। और जहां तक सवाल है, इस रंगीन शाम में एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला यहां पर प्रगति पर नेत्रावती ट्रॉफी 2022 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है फ्रेंड्स शांतिनगर ने, और इस श्रृंखला का अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता है। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, गेंद पहुंची शॉट स्कोर की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान में। 5 for the loss of 1 wicket and first over completed. And now 16 to get from 2 overs, 12 balls and 16 runs, the present run rate, the required run rate for them at this situation. మ్యాచ్ కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పడతాను వాయిస్ పోకుండా నన్న పంట తొందర ఇచ్చి నడితే ఇంట్రెస్ట్ ನಾಳೆ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ 2 ದಿನ ಕಾರ್ಕಲ್ಲ ಡೇ ನೈಟ್. So 16 runs required in remaining 12 deliveries, and now the bowler brought into the attack Hakeem. First over, second over starts in their innings, in the innings of Jolly Friends. First ball again check kiya, long on par into the gap as well. और गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त उछाला, लॉन्ग ऑन सी मारेगा जब बाहर 4 रनों के लिए। ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ತೆಕ್ಕೋಚಿ ಇಂಚನೆ ಪತ್ತು ಇಂಚಪ್ಪ ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್. तो इस वक्त स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और यहाँ पर
और दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो जहां तक सवाल है इस वक्त 12 रन चाहिए विजय के लिए और गेंदे बाकी है इस वक्त कितने बाकी है 11। सो इट्स गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग दैट एंड 12 रन्स टू गेट फ्रॉम 11 डिलीवरीज। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और एक बार फिर से तैयार बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहा, फॉरवर्ड शॉट की दिशा में गेंद पहुंची। इस वक्त रन से बल्लेबाज को मिलेंगे इस वक्त दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन एन मौके पर यहाँ पर रन मिलेंगे सिर्फ एक और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और कुल मिलाकर 11 रन अब चाहिए, 10 गेंदे बाकी। द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स एंड नाउ वंस अगेन इस बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया, इस वक्त शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद पहुंची है और अंतिम क्षण में गेंद इस वक्त पूर्ण करने में सफल। 1 रन बल्लेबाज। तो हर गेंद पर इस वक्त रन बनाना जरूरी बन चुका है जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को और हर गेंद पर रन रोकना जरूरी बन चुका टीम मैट्रिक्स के बल्लेबाजों के लिए। तो यहाँ पर जो चौका सफवान ने लगाया था निस्संदेह काबिल तारीफ, अंडर प्रेशर इन्होंने गेंद को उछाला था इस वक्त खूबसूरती के साथ लंग ऑन सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए और स्कोर इसे कुल मिलाकर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर। 10 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी, 9 balls to go and 10 more runs now they have to score for victory. What a fantastic match is now progressing here. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्कूप कर दिया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा। इस वक्त थ्रो पहुंच चुका है स्ट्राइकर एंड पर द बैट्समैन आर फाइनली सेटल्ड विद अ सिंगल एंड विद अ सिंगल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 9 they have to score for victory and 8 balls to go in their innings, 8 for tie, 9 for win and this is going to be an absolutely fantastic match is now progressing here. अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए और इस बीच दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्वीप करना चाहा, इस बीच टॉप एज पर गेंद टकराई, स्लिप डाउन पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तो यहाँ पर अब चाहिए रन 8, गेंदे बाकी है 7। तो रन और गेंद के बीच में 1 का फासला इस वक्त बरकरार और अगर जॉली फ्रेंड्स को विजय दर्ज करना है तो इस 1 के फासले को उन्हें मिटाना होगा। और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट हल्के से गेंद को चिप किया, इस बार एक्स्ट्रा कवर पर निशाना इस वक्त चूक चुका है। 1 more run added to the total and now it's going to be 14 for the loss of 2 wicket. 2 overs had been bowled, 7 to get from last over. अंतिम ओवर का खेल बाकी, 7 रन चाहिए विजय के लिए और देखते हैं कि मैच निर्धारित ओवर कौन से गेंदबाज यहाँ पर फेंकते हैं। तो काफी लंबी बातचीत है यहाँ पर चलते हुए और देखते हैं अंतिम ओवर किसको इस वक्त दिया जाता है। तो धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है इस वक्त और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पर खेला जाता होगा। 5:41 यहाँ पर बच चुके हैं और कुल मिलाकर 2 मैचेस इस मैच के बाद और खेले जाने यहाँ पर बाकी और अपनी अगली गेंद के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ की गेंदबाज या बाएं हाथ की गेंदबाज अंतिम ओवर में देखना पड़ेगा। तो बातचीत अभी भी जारी है। नंबर 12 की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी शाहिद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और अपनी ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, दर्शक देखिए किस तरह दर्शक मैदान पर इस वक्त भर चुके हैं। तो ಅಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಇನ್ನೆರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, 7 to get from 6 deliveries in fact। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिना तो बढ़ता विकेट, पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, शॉर्ट विकेट की दिशा में, रन 6 पिच मिलेंगे 1, 6 to get from 5 deliveries। अगर मैच टाई होता है तो टॉस के जरिए विजेता को निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए शाहिद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निसंदेह दबाव इस वक्त दोनों टीमों के ऊपर साफ
बढ़ता दिखाई देता हुआ। और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त शाहिद तैयार। 6 रन चाहिए 5 गेंदों में और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। Here we go. Next one. Outside the off stump. Just play that one. Down to a short third man. In fact, he gets in a single for that stroke. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 16 रनों पर 5 रन चाहिए, 4 गेंदें बाकी। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಇಕೆ ರಫೀಕ್ ಇಕೆ ಟಿಂಬರ್ಸ್ ಕಣ್ಣೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Heartily welcome to Mr. E.K. Rafiq and Mr. Ashraf Corporator Bajal. So back to this game. Interesting stage is now going on here. Next one. इस बार गेंद को पुश किया. Back to the bowler की दिशा में. रन इस वक्त मिलेगा जरूर और रन मिला. यहाँ पर निशाना चूक चुका है और इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर. 4 रन इस वक्त चाहिए, 3 गेंदें बाकी. 4 runs they have to score for victory in remaining 3 deliveries and still the match is now in balance. The pressure is now building up on both sides. और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. तो एक्स्ट्रा कवर गली इस वक्त मौजूद. स्क्वायर लेग इस वक्त यहाँ पर कहना पड़ेगा स्क्वायर लेग नहीं शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर जाते हैं. मिड विकेट पर एक फील्डर मौजूद है और दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. इस बीच शाहिद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद और इस बीच अगली गेंद इस बार नेक्स्ट टाइम से बाहर. गेंद को उछालना चाह, रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, रन आउट हो सकता है. यहाँ पर रन आउट हो चुका है लेकिन वाइड यहाँ पर जुड़ चुका है. 3 balls now remaining, 3 runs to get. So what a fantastic match is now going on here. Still the match is now balancing. The last quarter final of Netravati Trophy 2022, which proudly organized by Friends Shanti Nagara, and the climax of this tournament is now progressing here. तो इस वक्त भी कहना मुश्किल है कि इस मैच में कौन सी टीम विजय रहेगी. और यहाँ पर जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतरते हुए उनको कुछ समझाते हुए इस वक्त नॉन स्ट्राइकर इनके बल्लेबाज. और यहाँ पर देखते हैं गेंदबाज शाहिद अपने इन 3 गेंदों में किस तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. 3 गेंदें 3 रन, 3 balls and 3 runs. The bowler comes, Shahid. दाहिने हाथ over the wicket. Here we go. Next one. Right arm over the wicket. Bowls. This time, beaten. This could be in trouble. In fact, he missed it. He missed it. Single run added. 2 of 2 now. 2 of 2. Required for Jolly Friends. और इस बार बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी लेकिन विकेट कीपर की चूक की वजह से बल्लेबाज को नहीं, टीम को रन मिला यहाँ पर 1. और अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए और देखते हैं इन 2 गेंदों में 2 रन जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं. और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. डीप मिड विकेट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग इस वक्त तैनात, जबकि लॉन्ग ऑन इस वक्त मौजूद. डीप बैकवर्ड थर्ड मैन ठीक सीमा रेखा के पास तैनात. और तो 2 गेंदें इस वक्त बाकी है और रन इस वक्त चाहिए 2. तो गेंदबाज इस वक्त डॉट गेंदों की उन्हें सख्त दरकार. अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद चिप गया इस वक्त. गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में. 1 रन मिलेगा. 1 रन से बल्लेबाज को संतुष्ट और इस 1 रन के साथ नाउ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड. जस्ट अ सिंगल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री. तो अब टीम मैट्रिक्स के गेंदबाज शाहिद को इस गेंद को डॉट करना होगा अगर मैच को उन्हें टाई करना है तो. और जहां तक जॉली फ्रेंड्स का सवाल है, अंतिम गेंद पर सिर्फ 1 रन की दरकार इस वक्त विजय के लिए. और ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ 1 ball 1 required and the last ball, the match deciding ball comes. Here we go. Surrounding fielding for the right-handed batsman. और शाहिद दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, टॉप एज, and that's it. Last ball thrilling victory
for Jolly Friends Bajal against Team Matrix, and with that last ball thrilling victory, they are through to the semi-final of this competition. Absolutely fantastic match has been came to an end. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಇಕೆ ರಫೀಕ್ ಇಕೆ ಟಿಂಬರ್ ಕಣ್ಣೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Heartily welcome to you both, Mr. Ashraf Corporator Bajal and Mr. E.K. Rafiq, E.K. Timber, Kannur. So that's it, and we moving out to the second semi-final. ಸಫಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ಹಾಗೂ जॉली फ्रेंड्स बजाल ಈ ತಂಡಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तो यहाँ पर दूसरा सेमीफाइनल मैच शुरू होता हुआ और देखते हैं इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच में कौन सी टीम प्रवेश करेगी एनएम मैंगलोर का सामना करने के लिए. तो इस वक्त दूसरा सेमीफाइनल मैच का इंतजार है और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे सतीश के साथ जब द्वितीय सेमीफाइनल मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी. धन्यवाद. थैंक यू. So here is a presentation of man of the match and the outstanding performance there from Jolly Friends Bajal to win the match. Safwan of Jolly Friends is registered as declared as a man of the match for his outstanding performance. Very cool and calm in the middle and takes his team into victory. And outstanding performance from a local team, Jolly Friends, and enter into the semi-final. They will go into play against Red Wings Kunjat Bail in the day number first. They are enter into the semi-final and they will go into play semi-final in the last session of final day of this cricket tournament. Winner of this match will go into play against NM Cricketers Bangalore for the prestigious Netravati Trophy 2022, which is proudly organized by Friends Shantinagar. We have a chief guest already in the main stage enjoying this game of cricket, respected Ashraf, member of Mangalore City Corporation from Bajal, and we have E.K. Rafiq and proprietor of E.K. Timber Kannuru, and they are all the dignitaries. They are just enjoying this game of cricket in this prestigious Netravati Trophy 2022. We have one more dignitary in Mr. Mel Rigo, General Secretary of Youth Congress, and we have Anil Pujari, President of Youth Congress, and we have Asif Bajal, Chief Secretary of Youth Congress. And on behalf of organizers, on behalf of all cricket lovers, we'd like to welcome all these dignitaries for this prestigious ನೇತ್ರಾವತಿ ಟ್ರೋಫಿ 2022. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So after winning the toss, captain of Jolly Friends elected to field first, and so that opening batters of Red Wings walking towards the middle with jersey number 5 and 7. The opening batters are slowly walking towards the middle, and what a fantastic cricket tournament. Almost we are into the last stage of this tournament, in the second semi-final, last semi-final of this tournament. And look at the crowd here, absolutely fantastic. The jam-packed stadium out here in the middle.
jam-packed stadium here in this most beautiful Shantinagara cricket ground. ಹಾಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಒಂದು 2-3 ಫೀಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ದಯಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 1-2 ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ದಯಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ದಯಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, so first ball, and first ball, it's a first run for captain of the side, Ashok, who picked up a single and he's off the mark with a single. Outstanding performer Ashok, and Tanzim is the batsman will go into face. Once again I welcome Meryl Rego, General Secretary of Youth Congress, and for this wonderful cricket tournament, prestigious Netravati Trophy 2022, and we'd like to welcome him on behalf of organizer Friends Shantinagar. And first ball, next ball, nicely turns that one down to mid-wicket region. They're looking for the second, little bit fumble, less and no chance of run out, but umpire now asking for the third umpire. Now looks like the batsman little bit struggling to reach his home, tried to take the second run. Ashok Vijay is not responding for that second run, but Tanzim very much wanted the second run. Throw coming from the deep, and bowler completes the formalities of making a run out, but we wait to need to see the third umpire decision. Will it going to be out or not out? It's going to be very, very interesting here. And if it is a run out, Jolly Friends will go into celebrate. The supporters of Jolly Friends, of course, being the local team, they got a number of the supporters for Jolly Friends. At the same time, Red Wings Kunjat Bail, they're also having some number of supporters for this particular semi-final match. It's going to be more interesting. The more interesting and very close one is to see that whether the batsman is safe or not. And definitely the umpires will going to see that. If it is on the line, it's going to be out. There need to be a little bit part of his bat to cross that line, which is where seems to be a little bit difficult one for the third umpire to judge. But because of the dust which is really coming out of the pitch when the batsman try to drag the bat, it's definitely very difficult to see that line. And simultaneously we need to see that line, and at the same time need to see the when the bails are off. But the technicians of Bidra Media already, they're too good in it, and they're definitely going to provide the perfect angle to get this best result. Not out, which is a call from third umpire. The batsman is safe, Tanzim, and nothing has happened here. But we are back to this match semi-final. Isam bowling with a short run up with the jersey number 33, right arm over the wicket to the right-hander batsman Ashok will go into face next delivery of Isam. It's a very good contest between two very good players. Went for the reverse sweep, picked up a single, no problem whatsoever as far as rotation of strike is concerned. Both the batsmen rotating the strike. Each and every run going to be very important for both the teams, for Red Wings. And again, that because of that single scored Namuzan to 3 on the board for the without loss of any wicket in the over number first in progress in the second semi-final of this prestigious Netravati Trophy 2022. Absolutely, it was a festival atmosphere in this most beautiful cricket ground here in Shantinagar, and we are watching this second semi-final of this prestigious cricket tournament. Again, peddling that one down to short square region for a single. So with that single score, Namuzan to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. Again, the bowler back to bowling mark. Isam is a very experienced campaigner. You know exactly the kind of bowling which is required in this. This time Ashok drives it on upishly but quite safely without a deep long of turning out for the second. In comes a throw from the fielder, trying for the run out in the strikers, and batsman diving effort. Ashok in dedication, diving and completing that couple of runs. Outstanding cricket is going on here.
It's a very good stroke there from Ashok. Drives it on extra cover region. The fielder in the deep cover point region charging for the ball. Returns the ball into the hands of the bowler. And bowler tried to make the run out in the strikers end. Wicketkeeper uprooted the stumps. But Ashok is desperately diving to his crease and completed a couple of runs. With that couple of runs, Coburn moves on to 6 on the board. Arif Behrin announced rupees 2,500 if the Jolly Friends will going to enter into the final, and the Jolly Friends will going to get 2,500 rupees, which is announced by Arif from Behrin. And wait and see. Again Isam balls swept that on one, appeal for leg before wicket. It's from the bat, what umpire saying here, and no damage done. One more addition. With the addition of that singles, Coburn moves on to 7 on the board. First over completed, and Gopi 7 runs in first over. I think it's a good start for Red Wings, but I think it's the Jolly Friends so far in this particular tournament and in this particular day. They played very good game of cricket. They came into this tournament with the underdogs, but their performance is so good. That means the Red Wings cannot underestimate the potential of Jolly Friends, particularly in the semi-final. बिल्कुल आज जॉली फ्रेंड्स के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है सतीश, और निस्संदेह उस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वो यहाँ पर सेमीफाइनल पर पहुंचे। लेकिन रेड विंग्स एक बेहतर टीम है, और यहाँ पर जॉली फ्रेंड्स को अगर फाइनल इस श्रृंखला के फाइनल में प्रवेश करना है तो निस्संदेह रेड विंग्स के सामने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा। और जहाँ तक रेड विंग्स का सवाल है, रेड विंग्स 2 दिन पहले फाइनल पहुंच चुके हैं, और इस मैच में भी उस सफलता के सिलसिले को 2 दिन पहले के सफलता के सिलसिले को फाइनल में इस सेमीफाइनल मैच में बरकरार रखना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा, 2 संतुलित टीमों के बीच में एक बेहतर मुकाबला यहाँ पर जारी है। Exactly, Gopi, and second over will going to start from the commentary box pen, and bowler bowls that delivery a little bit outside the run of leg stamp, and Ashok tried to flick that one off his legs and couldn't manage to make any contact with the bat, but it's a contact with his leg, so that one more run which is added total. Ashok looking like not really feeling the fit here. After that, he is trying to save his wicket from the run out. He looks like has got a little bit injury. And again, next ball, nicely swept that one down to short fine leg region by Tanzim. And Tanzim is a clever cricket in the region there from Tanzim. You know exactly the condition which is not that much of suitable for the big shot like boundaries and six. And just seeing that rotation of strike is so important. I think Ashok is feeling a hamstring injury. That is definitely going to be not a good sign for Red Wings, because he's a very good runner between the wicket. If you have a hamstring injury, it's very difficult to run between the wicket. Wait and see. Sahil bowling right arm over the wicket, balls this time. Again, ball is in the air for a while, but the bowler couldn't manage to reach the catch. Coming back for the second. Ashok trying hard for the second and made it quite beautifully. What a running between the wicket. Outstanding. Especially the Tanzim is the one. He's charging for the second, and Ashok is not really even thinking about the second run, but seeing that his partner is coming to the non-strikers end, then Ashok is responded for that second and he might it cut easily in the couple of runs. With that couple of runs, scoreboard numbers on to 11 on the board. It's a really outstanding running between the wicket, especially the Tanzim. I think is running towards a danger end, and the fielder little bit slow in the negation. Farooq from the deep long on region, so just grabbing that opportunity of the slowness of that fielder in the deep long, they completed couple of runs. 11 on the board. Again, one more 2,000 rupees, which is announced by Mansoor Zubair. This time, chance of run out in the non-strikers end, and this look like umpire will going to ask for the third umpire. And Ashok looks like he's so tired, but at the same time, we need to see that whether the weather is going to complete that run or not. But it's all up to the third umpire to decide whether he's out or he completed single or not. But it's very interesting to see. The third umpire will going to give the decision, and it definitely is going to be electrifying atmosphere out here in this cricket ground. Look at the crowd here, absolutely jam-packed stadium. And along with the spectators, some cows is more excited. 3 cows which is just entering into the ground. That shows the excitement of this game. Out, which is a call from third umpire, and that means Ashok is back into pavilion. But he's done a great job, because it's a small format of games. There is no excuse at all. They need to look for each and every run. And one more cow is enter into the ground here as the 4 extra fielders for Jolly Friends. But umpire have to say that need to send that 4 extra fielders out of the ground here. And first wicket is back into pavilion at a score of 11.
over number second in progress, and Ashok is run very well in this particular innings, and Ashit is a new batsman in. He definitely going to be in the non-striker's end. He's a very good striker of the ball, Ashit. But Tanzim is back on strike. Sahil back on nice bowling mark. Bowling is second over. Again now from the commentary box, and right arm over the wicket bowls to Tanzim. Tanzim this time cricket, intelligent cricket. He's not to deliver, to rotate each and every ball, and with over number 1 to 12 for the loss of 1 wicket. Bajal is playing the final. Again, friends, winner of this match will going to qualify for the final. The battle is on for the big title, Netravati Trophy 2022, which is proudly organized by friends Shantinagar, and it's red ground here in Shantinagar. Again, now bowler back to his bowling mark. Right arm over the wicket to Ashit. The new batsman just came into middle. Will go into face delivery. In that again, and for the because you know batsman and one more run which is added to total. Cover number 13 on the board, 13 for the loss of 1 wicket. Look at the crowd. Everywhere we are seeing the crowd. Inspector Bajantri, sir. Bajantri? Bajantri. Bajantri, sir. Circle Inspector Bajantri, sir. Shriyuta Bajantri, sir. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಭಜಂತ್ರಿ ಸರ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ and for this wonderful cricket tournament, Netravati Trophy 2022. And I request that chief guest please come and have the seat in our main stage and enjoy the game of cricket. And I request NM Cricketers Mangalore, ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಲಾಗೋದು. Again Ashit just giving the direction of the third man region, picked up a single here. With that single, scoreboard moves on to 14 on the board. Again, the bowler bowling from the commentary box, and right arm over the wicket bounce. Just time I wanted to save that one, and the wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. By call by umpire. With that extra, scoreboard moves on to 15 on the board. 15 for the loss of 1 wicket. What a fantastic game is progressing here. Farooq, the captain of Jolly Friends, so far he's leaded his team very well to take his team into the semi-final, and is contributed very well from his bowling throughout the tournament. As Farooq once again bowling right arm over the wicket, third arm in this over to Ashit. Ashit this time again swapped that one, refined down to fine leg region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 16 on the board. 16 for the loss of 1 wicket in the over number last in progress. Last 3 deliveries remaining, and just suddenly the Red Wings is looking for the run at least 18 runs in 18 balls, so that they can defend this total very well in this condition against Jolly Friends. But Jolly Friends wanted to restrict them less than 18 so that they can chase that run. Driven, bowler's back drive, off, stopped by the fielder, chance of run out, wicketkeeper behind the stump, uprooted the stump, but umpire will go in to ask for a third umpire again. Oh my goodness. We're always looking for, always praising for there will be no run out, always praising for that there will be no third umpire because we need to save the time. But every time we can say that there is a close call, that's why umpire doesn't want to take any risk to ask, risk for ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಂಗಳೂರು
So third umpire decision not out. I think the bails is uprooted by first it was the face of the batsman wicket keeper, which is uprooted the stump. That's why umpire rightly so third umpire says not out. So one more run as Ashit once again now going to face next delivery of Farooq. Right arm over the wicket, going for the cut shot. Wicket keeper behind the stump again missed it. It's a bad miss, I want to say, and by call by umpire is which is definitely going to create the problem for Jolly Friends. The wicket keeper behind the stump fails to collect the ball, and batsman completed that single. With that single, scoreboard numbers on to 18 on the board. Last ball remaining of the innings of Red Wings. Tanzim will going to face the last delivery of the final over. It's a battle for the place for the final. NM Cricketers Mangalore, they are in the final, waiting for the winner of this. Again, swap that one in the gap, running hard, looking for the second, running hard and misfield there for the fielder. They're looking for the third run as well, but this time I think it's definitely going to be a run out. So that's it. 3 overs completed. After completion of over number 3, Red Wings managed to score 20 runs and set a target of 21 to win the match for Jolly Friends to qualify for the finals of this prestigious Netravati Trophy 2022. And I think it's 7 runs per over is a required run rate for Jolly Friends to win this match, and wait to see how well they were going to handle the pressure of getting 21 runs in stipulated 18 deliveries excluding wides and no balls. And Gopi stayed away. Coming back to this semi-final, the 21 I think is a good run under this condition. Red Wings, because Red Wings they got some very good bowling department as well. That's why they played as per the game plan. They know exactly in this condition just a rotation of strike which is required, and they rotate the strike very well. All 3 batsmen played very well, contributed little bit in this small format of games. What do you think? It's a 21. Will it going to be enough for Red Wings to depend the total? Will it going to be difficult for Jolly Friends to get that 21 and 3 overs in this condition where it looks a little bit dark and very difficult to get the big shots in the evening? जैसा कि आपने कहा सतीश, इस वक्त इन हालातों में 21 रनों का लक्ष्य पीछा करना कुछ हद तक मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि रोशनी मैदान पर कम हो चुकी है और रेड विंग्स के पास अच्छा खासा गेंदबाजी का लाइनअप भी है, लेकिन 21 रनों का लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। और एक दिलेर भरी बल्लेबाजी, गट्सी बैटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जॉली फ्रेंड्स के सलामी बल्लेबाज करते हैं पहले ही ओवर से, तो निस्संदेह जॉली फ्रेंड्स इस वक्त इस लक्ष्य तक पहुंच सकती है 21 रनों के लक्ष्य तक। लेकिन 21 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें जीतोड़ मेहनत मुशक्कत यहाँ पर करनी होगी। और जॉली फ्रेंड्स के पास भी सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है। कुछ ऐसे बल्लेबाज मौजूद है जो कि एक बार अपना लय रिदम प्राप्त कर ले तो गेंदबाजों के ऊपर भारी पड़ने की क्षमता रखते हैं, और पहले ही ओवर से अगर वो आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते हैं तो निस्संदेह जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और यहाँ पर रेड विंग्स की ओर से गेंदबाजी यहाँ पर प्रारंभ करते हुए गेंदबाज है, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तैयार, और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। और जहां तक सवाल है, फील्डिंग में इस वक्त जमावट हो चुकी है। नेत्रावती ट्रॉफी 2022 फ्रेंड्स शांतिनगर की पेशकश है, और यहाँ पर इस श्रृंखला का, इस मेगा श्रृंखला का द्वितीय सेमीफाइनल मैच, दूसरा सेमीफाइनल मैच का उत्तरार्ध यहाँ पर शुरू होता हुआ। पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, उस फ्लिक कर दिया, आफ्टर टॉस गेंद जाती हुई बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल के लिए 20 रन और चाहिए, जबकि 17 गेंदें उनकी पारी में अब और फेंके जाने बाकी। दर्शकों से खचाखच मैदान इस वक्त भर चुका है, एब्सोल्युटली जम पैक स्टेडियम। और यह बात ये दर्शाता है कि मंगलूर में अंडरआर्म क्रिकेट कितनी जनप्रियता रखता है हर कोने में। और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रंजीत, जबकि सामना करने के लिए तैयार आजिम। ताजुद्दीन पिछले गेंद पर अपना खाता खोल चुके हैं। 20 रन चाहिए 17 गेंदों पर, 17 बॉल्स रिमेनिंग, 20 रन्स मोर, नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहा, अंतिम क्षण में गेंद पहुंची शॉर्ट फाइनल की दिशा में, विकेट कीपर के हाथों में कहना पड़ेगा गेंद पहुंचे थे। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है। इस वक्त 1 रनों पर रुक चुका है। ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ JR ಲೋಬೋ
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಇವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು सर, थैंक यू. और इस बीच अगली गेंद, ये गेंद स्वीप किया, इस वक्त गेंद जाती हुई शॉट्स कॉर्नर की दिशा में, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए बिना किसी विकेट को 2 रन बन चुके हैं इस वक्त पहला ओवर यहाँ पर प्रगति पर. और इस बीच रंजीत गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ताजुद्दीन वापिस स्ट्राइक पर आ चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. जमीन पर गेंद को 3 से 4 बार टिप्पा खिलाने के बाद दाहिने हाथों पर विकेट. ये गेंद इस वक्त रंजीत के ताजुद्दीन के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा खूबसूरती के साथ, गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. थोड़ी सी मिसफील्ड इस वक्त बल्लेबाज के बाद दूसरा रन पूर्ण कर चुके, तीसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा इस बीच. और 2 रनों के साथ बल्लेबाज यहां पर संतुष्ट, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 2 रन इस गेंद पर बल्लेबाज को प्राप्त हुए. 4 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, एंड वंस अगेन द बॉलर इज नाउ बैकिंग इनटू हिज बॉलिंग मार्क रंजीत. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइक का, तो ताजुद्दीन एक बार फिर से स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की इस वक्त जरूरत है जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाजों को. और यहां पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए गेंदबाज रंजीत अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए लेकर तैयार. गेंद को एक बार फिर से 5-6 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट. यह गेंद करते हुए इस वक्त गेंद को चिप कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल. 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थोड़ी सी मिसफील्ड, यहां पर रन मिल चुका है. तो बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट. ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त स्कूप किया था खूबसूरती के साथ. वहां पर दबाव स्ट्रेट अवे प्रेशर फील्डर के ऊपर दिखाई देता हुआ गेंद उनके हाथों से छूटी और इस चूक का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया. आते आता है तो ये लोग इतना पर बन रहे हैं जो फॉर्मेट है कौन है मतलब प्लेयर बन What will happen? 13 balls, 13 runs, 11 balls. Gas मुझे 13 रन और बॉल
So back to cricket. So interesting stage is now going on here. 13 required of 9 deliveries. और यहाँ पर पिछले गेंद पर विकेट गिर चुका है और लक्ष्य कुछ हद तक कठिन हो चुका है, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है जॉली फ्रेंड्स को इस वक्त। तो यहाँ पर हर गेंद पर रन बनाना जरूरी बन चुका है, खासकर सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत है इस वक्त बल्लेबाजों को। और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ साहिल इस वक्त तैयार, जबकि गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए यज्ञेश। 13 to get from 9 deliveries. What a fantastic match. Second semi-final match of Netravati Trophy 2022 is now progressing here with proudly organized by Friends Shantinagar. अगली गेंद के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, गेंद इस वक्त पैरों पर टकरा चुकी है, अपील को नकार दिया अंपायर ने। एक रन इस बीच मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 10 रनों पर, 9 रनों पर, माफ कीजिए, एक विकेट के नुकसान पर। It's 9 for the loss of 1 wicket. 20 in fact it's a 12 runs required and 8 balls to go in their innings. तो अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। यह गेंद उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर चूके और यहाँ पर विकेट कीपर की चूक की वजह से एक रन यहाँ पर मिला है बाई के रूप में। और इस बार इस रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। 11 रन चाहिए, 7 गेंदें बाकी। तो पहले ओवर में 7 रन बने थे, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में यज्ञेश ने किया, सिर्फ 3 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं। अब अंतिम 7 गेंदों में चाहिए 11 रन, 10 फॉर टाई, 11 फॉर विन। और इस बीच यज्ञेश इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दोनों टीमों पर दबाव, प्रेशर इज नॉट बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स। इस बीच बाएं हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद को इस वक्त उछाल दिया, इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाती हुई, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। एक बेहतर ओवर रहा था इस वक्त यज्ञेश का, सिर्फ 3 रन उन्होंने इस ओवर में प्रदान किए। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 10 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर जजमेंट के साथ डीप मिड विकेट पर इस कैच को फील्डर ने लपका। अब सतीश अंतिम ओवर में 11 रन चाहिए और कुल मिलाकर एक बेहतरीन ओवर यज्ञेश ने फेंका, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए और 2 विकेट इस ओवर में गिरे। और आखिरकार अब इस ओवर की बदौलत मैं कहता हूं रेड विंग्स का तख्ता यहां पर भारी हो चुका है इस मैच में, इस अंतिम ओवर में। लेकिन इस अंतिम ओवर में इस वक्त कमबैक करने का मौका जरूर है जॉली फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को। कम से कम एक का चौका या छक्का यहां पर लगाना होगा कमबैक करने के लिए। 11 रन चाहिए अंतिम ओवर में। Absolutely, Gopi. It's outstanding comeback here by Yajnesh because they started very well in the first over. They got 7 runs in the first over. They're going exactly what the required run did. But all in sudden, when Yajnesh came into ball and he's just changing the complexion of this match. But just right, Gopi, still the opportunity there for Jolly Friends to get that 11 runs. If able to get that 11 runs in the final over, they will go through to the final. And Arif and Mansoor already announced the 5,000 rupees for Jolly Friends if they manage to win this semi-final and if they manage to enter into the final of this cricket tournament. But this is a decider over and we didn't see which team will going to handle the pressure and which team will going to enter into the finals. Exactly सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, दबाव को जो झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा। 11 रन चाहिए, 11 required of last over. Here we go. First ball of a fresh over coming up from Kiran. Right arm over the wicket. दर्शक खामोशी के साथ इस वक्त मैच का मुआयना करते हुए ये गेंद इस बार पहले गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त स्क्वायर लेग पर, 1 रन मिलेगा। अब स्कोर रन से चाहिए 10, गेंदें बाकी हैं 5। 10 to get from 5 deliveries। और यहाँ पर अगली गेंद के लिए किरण इस वक्त गेंदबाजी पर आते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और अपनी अगली गेंद फेंकने को इस वक्त किरण तैयार। फील्डिंग का मुआयना एक बार करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और यहाँ पर विकेट कीपर ने कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट की और किरण इस बार एक बार पूरी तरह उन्होंने चारों ओवर फील्डिंग का मुआयना करने के बाद अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। यह गेंद इस बार बाउंड ऑफ हिज लेग्स, एक विकेट यहां पर गिर चुका है, बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी अलोंग द कार्पेट और थोड़े से सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछलना चाहता, ऐसा कहना पड़ेगा, बाउंड ऑफ हिज लेग्स। गेंद सीधे पहुंची, उनके बल्ले को वंचित करने के बाद मिडल ऑफ स्टंप पर बिखर कर गिरते हुए मिडल ऑफ स्टंप पर गिल्लियां बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ यहां पर विकेट नंबर 3 गिर चुका है। सफान की पारी समाप्त 0 पर। अब ऐसा कहना पड़ेगा यहां पर जॉली फ्रेंड्स बजाल संकट की स्थिति में नजर आता हुआ। 4 गेंदें बाकी हैं, 10 रन चाहिए और देखते हैं इन 4 गेंदों में क्या जॉली फ्रेंड्स बजाल के बल्लेबाज 10 रन बना पाते हैं या नहीं। फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए किरण अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, इस वक्त विकेटों को सही करते हुए
And और Kiran Gopi, Kiran is one who picked up a double hat trick in this tournament. 4 wickets in 4 deliveries, day number 1, and definitely against his bowling, I think a lot of hard work which is required from the batsmen of Jolly Friends to get that 11 runs. बिल्कुल 10 रन इस वक्त बनाने हैं यहाँ पर विजय के लिए, और इस बार फिर से तैयार ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाह चुके हैं, रन के लिए दौड़ पड़े, सीलिंग मिडाउन पर गेंद पहुंची, निशाना चूका, और इस बीच 1 रन मिलेगा, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर। 9 रन चाहिए जबकि गेंदें बाकी हैं 3, 9 to get from 3 deliveries. They badly required 1 boundary or 6s at this stage to get back into this match. और इस बार गेंद को उछालना चाहा, और 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार यहाँ पर घोषित किया गया है। जुनैद अगर मैच को जिताते हैं तो 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ पर जुनैद के लिए घोषित किए गए, अगर वो टीम को जिताते हैं तो जॉली टीम अगर जीतती है तो जुनैद की ओर से 10,000 दिया जाएगा और पूरी टीम को 10,000 मिलेगा। और यहाँ पर गेंदे बाकी हैं 2 और रन्स बनाने हैं 8 to get from 2 deliveries. And now the second deciding ball comes. किरण गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को छालना चाहा, चूके रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा और 1 रन मिल चुका है। So 9 runs have to score in last ball. So terrific bowling performance shown by Kiran in the last over. Under pressure, he bowled superbly. 1 ball, 7 runs required. 6 for tie, 7 for win. And the last ball of the match is now coming up. छक्का लगाते हैं तो मैच यहाँ पर टाई होगा, और देखते हैं यहाँ पर अंतिम गेंद पर बल्लेबाज छक्का लगा पाते हैं या नहीं। तो इस वक्त किरण अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और यहाँ पर काफी दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण यहाँ पर फैलाया गया है, और इस बीच अंतिम गेंद लेकर तैयार। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। हियर वी गो, ये गेंद उछालना चाहा, उछाल चुके हैं, गेंद लोगों पर 6 रन के लिए। Absolutely fantastic sack this time. ताजुद्दीन बल्लेबाज थे जिन्होंने छक्का जड़ा अंतिम गेंद पर, और इस छक्के के साथ the match now ended in a tie. So what a fantastic match has been came to an end. Kyo Satish? What a fantastic finish, Gopi. Outstanding and unbelievable striker under this condition, hitting a 6 against one of the best bowler of the tournament, Kiran. It's unbelievable, incredible performance here from outstanding performance here from the batter Tajuddin. What a fantastic finish for this semi-final. Unbelievable. Look at the crowd. Look at the fans of Jolly Boy Friends. They are into the ground, charging into the ground, lifting their hero and Tajuddin for finishing the match, but of course not finish the match, but at least he managed to tie the match and takes the match into toss, and wait and see which team will go, which captain will go into the luckiest captain for this semi-final, and winning captain will go into enter into the finals of this prestigious Netravati Trophy 2022. I request ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೇವಲ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಅಂಪೈರ್ ಒಂದಿಗೆ, ದಯಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗ್ರೌಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. Absolutely it's an entertainment match and it was a thriller and unbelievable semi-final. We can see one of the best match of this tournament, the last ball finish, but which is not finished, but his ball match is tied. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಾಳೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಘಟಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ the cricket is all about a gentleman game. There need to be a fair game under this bad light, playing
finals playing super over. I don't think it's going to be a smart thinking, but it's a very good thinking point of view of keeping in the point that you need to get a very good result in this particular tournament. Netravati Trophy 2022. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ 3 ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಡುವಂತ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 o'clock. ಹಾಗೆ NM ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕೂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇರಬೇಕು. 3 ತಂಡ ಕೂಡ